My sincere apologies to the organizers and the senior officials from Uttar Pradesh government, because I need to attend to another international conference executive body called PATA. All of you must be knowing about PATA. So that executive committee meeting was supposed to be chaired by my secretary, Sri Mr. Arvind Singh, but he has got a call from another cabinet minister. So I am deputed there. I need to be there before 12 o'clock. So breaking the protocol, sir, I'm really sorry for breaking this protocol, and thank you very much for giving me this opportunity to share few of my ideas and also convey the message from the Ministry of Tourism as well as the Government of India on forest issues, forest-related issues, particularly in the context of tourism. Right. So now you have all of you have seen how tourism is bouncing back to normalcy. In fact, it is more than normalcy. Where we were really afraid. Tourism was the first hit and the longest hit, and maybe perhaps which will be lasting for the maximum time of this turmoil. Entire hotels industry, all the tour operator sectors, and the stakeholders in tourism department seriously felt that to bounce back to pre-2019, it will take minimum 3 to 4 years. UNWTO statistics and their research, and WTTC statistics and their research, they also mention that to bounce back to the pre-normalcy of 2019, it will take minimum 4 years. That is only 2025. But very fortunately, thanks to the medical fraternity, globally, and also the kind of medical effort that have gone in this country, 1 crore 90 lakh vaccinations have already happened thanks to the dynamic leadership of Honorable Prime Minister of this country. So we have done 190 crore vaccination. This is not a simple number to mention. It is a massive number where entire globe is watching us. So what happened? What is the result of this entire vaccination? One is safety and the security. Safety is the new coin now, the new currency now. So everybody is talking about the safety when you travel, and we have lived up to the expectations of UN WHO norms and WHO health protocols. So because of that, what happened? Tourism is bouncing back. What they call as earlier was staycations were getting promoted. Now we are bouncing back to what do you call that? Revenge tourism. So you go to Kashmir. We have organized some events in Kashmir. We have organized an event, Ministers' Conference in Northeast, Ministers' Conference in Bengaluru. So wherever we go there, the inputs, our research, the markets, they say that the number of hotels are completely full. In Jammu Kashmir, next 3 to 4 months, you don't get any rooms in Jammu Kashmir. You don't get rooms in Ladakh. In Ladakh, almost 17 flights are landing every day. More than 70 flights are landing in Srinagar. So people go to Pahalgam, people go to mountaineering. So this, if you go to Jaipur and Udaipur, you don't get any room, single room. There are some rooms in Udaipur where they are selling it for 80,000 rupees and 90,000 rupees per day. So this is all, why this is happening? Because as we said, that it's a revenge tourism. People want to get back to that normal life. And in this, what is happening is they want to identify the places where there is no crowd. There comes the forest thing. There comes the importance of forest. So I always feel, so you see the numbers, how many foreign internationals are coming to this country. It is only 12 million per annum. 12 million per annum compared to 80 million. Paris is number one, of course, and you have Spain, you have Germany, and Turkey, a small country which doesn't have the kind of products that we have. Our products are our Himalayas, our forest, our deserts, the beaches and the backwaters, or the cultural heritage of 5,000-year-old cultural heritage that we have. But what is Turkey having? But they get more than 22 million per year. So they have marketed it so well. People want to go to forest, they think about Masai Mara. Why should they think about Masai Mara? Why they don't talk about more than 500 national parks that you have, more than 100 sanctuaries that you have, whether it is Kandha, whether it is Bandhavgarh, whether it is Jim Corbett, whether it is Gir Forest. Honorable Prime Minister keeps telling about Gir Forest, promote wildlife.
So why are we not able to promote the wildlife as big as Masai Mara? Other day, I have taken 20 ambassadors to Pahalgam for some conference. Their ambassadors from three African countries were also there. So the Kenyan ambassador was also there. So I asked Kenyan ambassador, what is that you are doing in Masai Mara? He says, Mr. Rao, you should do something in India. The kind of species that you have, the kind of variety of the Asiatic, whether it is Asiatic lions or the Royal Bengal tigers, you name the animal that you have here in great numbers, why are you not able to market? See, tourism is nothing but only marketing. So you have Ranthambore, I have not marketed. Kaziranga, I have not marketed. So Kanha National Park, we are not marketing. Why are we not marketing it? Every state, Spardhaya Vardhate Vidya, as Honorable Prime Minister says, that Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Prayas. So every state is competing with each other state in promoting their own products. So whether it is in forest, Bandipur Sanctuary, Karnataka is having its own marketing strategies. UP is having its own marketing strategies. Madhya Pradesh is having its own marketing strategies, and they're competing with each other state in promoting their own destinations and their own products in their own way. So, and we are, as Government of India, as a tourism ministry, we are also trying to take everybody together and try to participate in all international events and international workshops and through our websites, and along to talk to and to speak to the Indian missions, Indian high commissions. We have taken the support of Indian missions. Honorable Prime Minister has given us direction that Indian missions abroad, they should be utilized in a big way, and we are interacting with them on a day-to-day basis. On day-to-day basis, we are trying to have interaction and trying to prepare strategy papers. And with these strategy papers, we are trying to tell them that these are the products and let us have, whether it is festivals, which are, having the number of festivals that we have with us is plenty of festivals, right? And the cultural heritage, as I mentioned to you, and the coastal areas that we have, 7,500 kilometers of coastal area, we have not explored yet. That also we are trying to market in a big way. Himalayas, for example. See, Alps has been promoted in a very big way globally, and now it is saturated. The 2,500 kilometers of Himalayan ranges from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, many areas are there which are unexplored. So Indian Mountaineering Association, these people came there and they say, all the mountaineers who are there in Alps, they want to come and they want to explore here. The flora and the fauna that India offers in a big way is what we need to market, and for that, all the state governments have to come together, and that Sabka Saath and the Sabka Prayas is there. We are sure that we are going to increase our number. So recently, the World Economic Forum has published, WTTC, World Economic Forum has published this, the competitive index. The state competitive index has been published, where our number little bit has gone down, but in various indicators, various pillars which they have given as indicators, we have increased a lot. Our number has gone up in a very big way, and forest is one area where we have done a great job, which puts our number 8 in the world. Entire world, it is our 8th position as far as forest, the preservation of forest is concerned. So with so much of forest coverage in India compared to global area, we should not be sitting like this. We must market in a big way. I'm sure government, we are extremely happy that UP government has come out with this kind of interactive sessions here. I'm sure this session will produce wonderful ideas and which will guide us. We will take the summary of these deliberations here, and we will try to incorporate in our new national tourism policy which is coming up. In the new national tourism policy, we have included forest in a very big way. We are having a whole of government approach is what Government of India is talking about. With forest department coming together, we will try to market it in a very, very big way in near future. And I thank UP government for giving me this opportunity. Thank you so much. So we would like to thank Honorable Sir, Ma'am, DG Saab, or the august audience. I would personally like to thank on behalf of the Uttar Pradesh Forest Department to Mr. Kamal Vardhan Rao, who could spare his valuable time and guide us over the various visionary plans which our Honorable Prime Minister and the government is taking in view of promoting tourism in a big way in this country. As he rightly pointed out, we should promote forest tourism in a sustainable manner, and that is the crux of this whole issue. We just cannot plan increasing a tourism from 12 million to 80 million, as Paris he pointed out,
But whatever the tourist which comes to the forest sector or for the forest places, that should all be a responsible tourism. So thank you, Kamal, and you could spare time. I know you're very busy and you again want to leave. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we'll take this opportunity to extend our gratitude to Rao sir. Sir, we'll take just one moment of yours for thanking you for your kind presence. I humbly request Shri Manoj Singh ji, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh, to please welcome sir. And I also request Kashish Tyagi ji, Regional Director, IACC, to please extend a warm gesture of gratitude to Rao sir. With continuous thunderous loud round of applause, ladies and gentlemen, thanking Rao sir for his valuable time. So due to his urgent commitments, ladies and gentlemen, he has to leave. Once again, we'll thank him for his valuable presence to this prestigious event. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you for your quality time. So with this, a very good morning, ladies and gentlemen, a very warm welcome. Thank you so much for taking out your valuable time just to be a part of this prestigious event. I'm your host today. My name is Mallika. Mallika Yash Asthana, and it gives me immense pleasure to welcome you to this prestigious event. Ladies and gentlemen, we would like to welcome our esteemed dignitaries and our respected guests. Thank you so much for traveling from far-flung corners of the country just to be a part of this prestigious event. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर यहाँ इस परिसर में उपस्थित हैं आज। मैं हूँ इस कार्यक्रम की मंच संचालिका। मेरा नाम है मल्लिका यश अस्थाना, और मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी दिग्गजों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दूर दूर से यात्रा करके आज यहाँ पधारे हैं। On behalf of UP Forest Corporation, we warmly welcome you to this All India level conference today, which is on a very important subject of diversification and innovative pathways for forest corporation. We are today joined by senior luminaries joining us from various respectable corporations who are marking their presence today. And we once again humbly welcome our respected dignitaries, our esteemed guests, and all our participants who have traveled the length and breadth of the country just to be a part of this event. Ladies and gentlemen, the Uttar Pradesh Forest Corporation was established on 25th November 1974 under the Uttar Pradesh Forest Corporation Act 1974. And with this, ladies and gentlemen, we are now joined by our honorable chief guest for today's program. Let's hear it, a big round of applause for our honorable chief guest, आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश। और साथ ही बेहद आदर और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री केपी मलिक जी का, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उत्तर प्रदेश। आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। And we also humbly welcome Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji, PCCF and Head of Forest for Uttar Pradesh. A very warm welcome, ma'am. So in the presence of our respected dignitaries, ladies and gentlemen, I humbly request you all to please stand up as a mark of respect for the national anthem. आप सभी से अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ गाएं।
Thank you so much, ladies and gentlemen. I humbly request Shri Manoj Singh Ji, Senior IAS Officer, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Uttar Pradesh, as well to please join us. And in this league, ladies and gentlemen, we'll take this moment to express our gratitude to our esteemed dignitaries present on the dais. I humbly request Shri Mukesh Kumar Ji, Managing Director, UP Forest Corporation, to please welcome our Honorable Chief Guest for this program, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का औपचारिक रूप से अभिनंदन स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश। एक बार पुनः मैं अनुरोध करती हूं श्री मुकेश कुमार जी से कि वे आदरणीय श्री के.पी. मलिक जी का मंच पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूपी, I once again humbly request Shri Mukesh Kumar sir to please do the honor and welcome Shri C.P. Goyal ji. With a big round of applause, ladies and gentlemen, Director General Forest, Special Secretary, Government of India. I request once again Shri Mukesh Kumar ji to please welcome none other than Shri Manoj Singh ji, Senior IAS Officer, Additional Chief Secretary, Environment, Forest, Climate Change UP. And in this league, ladies and gentlemen, we humbly welcome Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji. I request Indu Sharma ji, General Manager, UP Forest Corporation, to please join us and do the honor and welcome ma'am. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Please give it up for Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji, PCCF and Head of Forest Force, Uttar Pradesh. Thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time. And once again, in this league, I request Shri K.K. Singh ji, General Manager, UP Forest Corporation, Bareilly, to please join us and extend a warm welcome to Shri Mukesh Kumar ji, Managing Director, UP Forest Corporation. आपकी उन लगातार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करेंगे आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी का। And I once again request Shri K.K. Singh ji to please welcome Shri Sunil Chaudhary ji, Additional Managing Director, UP Forest Corporation, with a big round of applause. And I request K.K. Singh sir to please do the honor again and welcome Shri Arun Karna ji, Regional Vice President, IACC and MD, AT&T. And in this league, I humbly request Mr. Mukesh Singh ji to please welcome our honorable chief guest, Mr. Mukesh Singh, Executive Council Member and Chairman, IACC Lucknow Desk, to please extend a big gratitude to our honorable chief guest. And I request Kashish Tyagi ji, Regional Director, IACC, to please welcome Shri K.P. Malik ji once again. और इसी कड़ी में अब मंचासीन सम्मानित अतिथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि परमपिता परमेश्वर का नमन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को एक शुभारंभ दें. आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस टू प्लीज डू द ऑनर एंड inaugurate this program with the auspicious lamp lighting ceremony. परमेश्वर का नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, ताकि आने वाले हमारे हर संकल्प में परमपिता का आशीष हम पर बरसता रहे. स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु.
औषधीषु वयोति. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And with this, ladies and gentlemen, as you all know that the UP Forest Corporation has been dedicatedly working towards various activities which include removal and disposal of forest produce according to the management plan of the forest, Tendupatta collection and disposal work, collection, storage and marketing of herbs in Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Mirzapur, Sonbhadra and Varanasi districts. And with this event, under the guidance of our Honorable Chief Guest Sir and ACS Sir, we aim to come together and deliberate on various issues, and UP wants to learn from various other different states. So we'll take this opportunity for that. And to begin this program, let me please humbly request Shri Mukesh Kumar Ji, Managing Director, UP Forest Corporation, with a big round of applause, ladies and gentlemen. He is Senior IFS Officer of 1987 batch and presently posted as Managing Director, UP Forest Corporation. I request sir to please provide a welcome address. थैंक यू मल्लिका जी। आज यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम लोग हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके साथ ही हमारे माननीय श्री कृष्णपाल मलिक जी हमारे बीच हैं, राज्य मंत्री वन। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यशाला में। हमारे बीच भारत सरकार डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल साहब, जो हमारे यूपी के कैडर के ही अधिकारी रहे हैं, हम लोगों ने बड़ा लंबा समय बिताया है। आज उनका भी मैं इस कार्यशाला में, इस कॉन्फ्रेंस में उनको स्वागत करता हूं और आपने हम लोगों के लिए समय निकाला, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। हमारे एसीएस सर श्री मनोज कुमार जी, मैं उनका स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में ही, आपके सोच के साथ ही इस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने एक प्लान किया और जिसको मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पूरे भारत के अन्य प्रदेश के हमारे एमडी साहिबान, एएमडी साहिबान आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस जो सफलता इसके इस कॉन्फ्रेंस की होगी, वो उसका श्रेय मैं उस सोच को देता हूं जिन्होंने इसको जन्म दिया, श्री मनोज कुमार साहब। हमारी पीसीसीएफ श्रीमती ममता संजीव दुबे भी हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन देती रही इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं उनका स्वागत करते हुए और हमारे बीच में वो उपस्थित हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके विचारों से भी हम अवगत होंगे। ऑपरेशन की जो पैन इंडिया हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें कैसे हम आगे बढ़ें, इस पर हमें विचार करके एक पाथवे हम लोग डेवलप कर पाएंगे। हमारे बीच समय कम होने के कारण हमारे बीच में कमलावर्धन राव एमडी आईटीडीसी उपस्थित थे, लेकिन समय अभाव के कारण उनको जल्दी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कुछ शब्दों को आपसे शेयर किया। मैं इस मंच से उनका भी स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में मिस्टर अरुण करना साहब हैं, एमडी AT&T, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में MP मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के MD साहब श्री पुष्कर सिंह भी उपस्थित हैं। उनके विचारों से हम आगे तकनीकी सत्र में रूबरू होंगे। उनके जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठा के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के एमडी श्री संजय शुक्ला साहब भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में महाराष्ट्र फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री वासुदेवन साहब, वो अभी फ्लाइट में हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हम लोग को उनसे उनके एक्सपीरियंस से जो हम लोग पाथवे तय करने जा रहे हैं उससे फ़ायदा होगा। इस बीच हमारे साथ में एमडी उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन श्री धनंजय मोहन साहब भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सीजीएम हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिस्टर नदीप हुडा साहब भी मौजूद हैं और उनके जो फर्नीचर के कामों में जो काम हरियाणा ने किया है, जिसमें आगे बढ़े हैं, हम उनसे भी उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में एमडी छत्तीसगढ़ टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमडी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री अनिल कुमार साहू जी भी हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रकृति श्रीवास्तव एमडी केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और उनके विचार भी हम तकनीकी सत्रों में सुनेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कुछ हमारे पुराने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, संजय सिंह साहब एमडी यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन रहे हैं, मिस्टर वाशरे साहब वो भी हमारे बीच में, मिस्टर गैरोला साहब हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, अपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, कॉरपोरेशन के फॉरेस्ट ऑफिसर्स का और आए हुए समस्त साथियों का स्वागत करते हुए नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And with the right start, ladies and gentlemen, now we'll move ahead. And I humbly request Mr. Arun Karna, Regional Vice President, IACC and MD, AT&T, to please join us and share some of his thoughts on this occasion. Thank you so much. And good morning, everyone. Welcome. Honorable Chief Guest and State Minister with independent charge of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh, Dr. Arun Kumar Saxena ji. Honorable State Minister, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh, Shri K.P. Malik ji. Shri Mukesh Kumar ji, Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji, Shri G. Kamla Vardhan Rao ji, whom we just heard, I welcome him, Shri Manoj Singh ji, Shri C.P. Goyal ji, Shri Sunil Chaudhary ji, Shri Mukesh Bahadur ji, esteemed dignitaries and guests, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to be speaking to you from this platform today. Let me take this opportunity to congratulate and indeed compliment the UP government on all the dignitaries on the stage here for organizing this important meeting. The Indo-American Chamber of Commerce is happy to note that the UP government has been undertaking forest-centric programs which have focused on sustainable development. We know how important all that is, and all you dignitaries here on the stage and in the hall are contributing to that, what I would say, God's work in a sense. Forests, as we know, are the stabilizing force for the climate. They regulate ecosystems, they protect biodiversity, and they play an integral role in the overall carbon cycle. They support livelihoods, they supply goods and services that can drive sustainable growth. I read somewhere that according to an estimate, forests are now home to about 80% of the remaining biodiversity on the planet. So that's how important forests are. Now, to maximize the climate benefits of forests, we must keep more forest landscapes intact, manage them more sustainably, and restore more of those landscapes that we have lost. Halting the loss and degradation of natural systems and promoting their restoration have the potential to contribute over 1/3 of the total climate change mitigation efforts that we are required to put in as humanity by 2030. This is according to scientists.
When we talk about afforestation, a few things come to my mind. Foremost, of course, is climate change, as we all know, and of course, increased forest cover can bring down the carbon footprint significantly. And we know carbon footprint, carbon emissions, GHG emissions are top of mind for everyone, whether we live in a developed country or a developing country like India or an underdeveloped part of the world. Afforestation, therefore, is important to herald a more livable planet for all of us. I would say that equally significant are the technological breakthroughs that have taken place recently in forestry. So newer concepts are coming through, newer initiatives are coming. They involve the enhancement and acceleration of sustainability of forests. For instance, now precision forestry is enabled by a wide range of emerging technologies, such as drones or unmanned aerial vehicles, what we call UAVs, laser scanning techniques like LIDAR, soil sensors, when technology is beginning to play a big role here. I might point out that some of these cutting-edge technologies have already made their mark in the US and can be easily adapted to the Indian conditions as well. That also calls for greater cooperation between the Indian and the US academia and forest departments to undertake forest research activities. Now, I would say beyond technology, engaging with local communities can bring a range of benefits, such as stronger land tenure, an improved local operating environment, and potential sources of labor or support services, while generating a lot of employment. Also, we may continuously look for ways to align forest conservation and afforestation goals to the sustainability goals of the industry. As we all know, organizations are making very aggressive and strategic sustainability goals to improve their own brand reputation, ensure regulatory compliance, and improve resource efficiencies. So with that said, I would say let us all, the government, the industry, the civil society, we all should work together for evolving a modern forestry template in the country, which should focus on multiple uses of forestry, including the provision of timber, fuel wood, wildlife habitat, natural water quality management, recreation, tourism, landscape and community protection, and should lay focus on employment, aesthetically appealing landscapes, biodiversity, and above all, an inclusive society. And finally, I would like to end by citing my favorite line on environment protection, and this I have borrowed from someone, by the way. So it says, I don't want to protect the environment. I want to create a world where the environment doesn't need protection. So with those thoughts, I again welcome you all. Thank you for listening to me so patiently. I wish you a very productive day ahead. And again, I wish the UP Forest Corporation and the UP government all the best and our gratitude as well. Thank you so much. And with this, ladies and gentlemen, I would also like to tell you that Indo-American Chamber of Commerce with this event is supporting us as the knowledge and the industry partner. And taking the program forward, I humbly request Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji with a big round of applause. Ladies and gentlemen, please give it up for her, PCCF and Head of Forest Force Uttar Pradesh. She is an IFS from 1986 batch and she is leading the department, inspiring all of us out here. Please give it up for her. Thank you, Malika. Good morning to all. Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Dr. Arun Kumar Saxena ji, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Mr. KP Malik ji, Adarniya Shri CP Goyal, DG Forest and Special Secretary, Government of India, Adarniya Manoj Singh ji, ACS, UP Forest Department, Environment and Climate Change, and all present on the stage, especially Mr. Mukesh Kumar, who is hosting this conference and who is the brain behind this conference. Thank you so much for inviting me here. और बहुत खुशी है मुझे यहाँ पर आके कि फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट के बदलते हुए परिवेश में वन निगम ने अपना भी रोल बदलने का एक प्रयास किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सार्थक प्रयास होगा। वन निगम जब बना तो केवल
जंगल से एक्सट्रैक्शन के लिए बना था, लेकिन जैसे जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हमारे आयाम बदलते गए, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए कार्यक्षेत्र भी बदलना चाहिए था, लेकिन वो बदला नहीं। बहुत धीरे धीरे आई थिंक 2015 या 16 से इको टूरिज़्म के क्षेत्र में वन निगम ने प्रवेश करना शुरू किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि यूपी में जो थोड़ा बहुत इको टूरिज़्म करने की दिशा में हम सफलता प्राप्त कर पाए हैं वो वन निगम की वजह से ही है। 2 साल हमारे पैंडेमिक की वजह से बर्बाद हुए, लेकिन इस साल से फिर से वन निगम सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इको टूरिज़्म सिर्फ एक आयाम है, बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के सेक्टर में, इको रेस्टोरेशन के सेक्टर में, क्लाइमेट के सेक्टर में बदल रही हैं और उसी हिसाब से वन निगम को आगे बढ़ना होगा। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज़ धीरे धीरे सिकुड़ते चले गए हैं, उन पर प्रेशर बहुत है। एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एडवांसमेंट्स के लिए, उसके लिए हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है कि हम कुछ भी क्षेत्र को प्रिस्टीन फॉरेस्ट के रूप में छोड़ दें। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ग्रीन कवर के लिए, हम अपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन गेन्स के लिए, हम अपनी टिम्बर रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करें। और मेरा ये मानना है कि उस दिशा में वन निगम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकता है। इस देश में बहुत सारी फॉरेस्ट कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने प्लांटेशन डिविजन्स के रूप में अच्छा काम किया है। यद्यपि फॉरेस्ट एरिया हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट हमारे पास क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत स्कोप है, खास करके यूपी में, एंड मे बी वन निगम को वहाँ पे आगे निकल के सोचना होगा कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के एरिया में वन निगम का क्या इंटरवेंशन हो सकता है कि वो एक तरफ हमारे क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद कर सके, ट्री कवर बढ़ाने में हमारी मदद कर सके, दूसरी तरफ हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जिनको फॉर वेरियस रीजंस हम शायद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको इफेक्टिव फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकें। तो एग्रो फॉरेस्ट्री और टीओएफ के क्षेत्र में वन निगम को आगे आना होगा। हमने यूपी में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से ही काफ़ी बड़े क्षेत्रफल को हमने सर्टिफाई कराया है। इस सर्टिफिकेशन के लिए हम एफएससी के पास गए थे और हमने काफ़ी बड़ा पैसा खर्च किया था। वन निगम के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है एरियाज़ को सर्टिफाई कराने का, और जब हम टीओएफ की तरफ जा रहे हैं और हम किसानों के क्षेत्र में हम वुड प्रोडक्शन को लेके जा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वुड इंपोर्ट कम हो, हमारा वुड एक्सपोर्ट बढ़े, तो ये ज़रूरी है कि हमारे ये जो एरियाज़ हैं इनके सर्टिफिकेशन के लिए और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेनेंस के लिए हम कोशिश करें। एंड अगेन वन निगम कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन निगम कर सकता है। एनवायरमेंटल एम्यूलरेशन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर भी वन निगम कर सकता है, वन निगम कार्यदायी संस्था के रूप में कर सकता है। जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके वैल्यू एडिशंस में वन निगम या तो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकता है या फिर वन निगम एक सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में काम कर सकता है जो कि कम्युनिटीज़ को आगे लाने में मदद कर सकता है। कैनवस बहुत बड़ा है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम ये समझ रहे हैं कि वन निगम के सामने इस समय एक बहुत बड़ी क्राइसिस पर्सनल मैनेजमेंट को लेकर के है। हमारे पास ऑफिसर्स की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, रिक्रूटमेंट स्लो हैं, लेकिन चैलेंजेस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एंड आई एम श्योर दैट विद अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग हियर एंड देयर, विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग हियर एंड देयर, वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट। We have very able officers sitting there, we have very able advisors there, and we have very able leadership in the form of our honorable ministers, our ACS, and our officers down the line. And I'm sure we can do wonders if we only put our minds to it. And I hope that this conference will come up with some very good ideas, some very good opportunities, and some very good roadmaps to move ahead and do something different, something meaningful, and something very, very positive. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And with these words, ladies and gentlemen, now I humbly request Shri Manoj Singh ji, Senior IS Officer, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh, to please share some of his thoughts and guide us on this workshop. Ladies and gentlemen, he is an inspirational force and he has been a pioneer in climate change. Please give it up for him.
Honorable Minister परम आदरणीय अरुण कुमार सक्सेना जी, Honorable Minister of State KP Malik जी, PCCF HOF ममता संजीव दुबे जी, Shri Mukesh Kumar ji, who is MD of UP Forest Corporation, and our friends who have come from different states to the city of Noida, Mr. Dhananjay Mohan, MD, Uttarakhand State Forest Development Corporation, Mr. Navdeep Hoda, Haryana Forest Development Corporation, Dr. Suresh Galora, FSC Certificate India Limited, Shri Rahul Vora ji, CEO CL Gupta Exports, Shri S. Viswanathan ji, MD Madhya Pradesh Tourism Development Corporation, Shri Anil Kumar Sahu ji, MD Chhattisgarh Tourism Board, our beloved friend Mr. Mukesh Bahadur Singh, Chairman Indo-American Association, Lucknow Desk, Shri Sunil Pandey ji, Vice President ITC Bangalore, Shri Ajay Sharma ji, Member Secretary, Mr. Sanjay Singh, our ex-MD of UP Forest Corporation, and distinguished officers from Forest Department, from Department of Environment and Department of Climate Change. On the onset, I will like to say with a great candor and aplomb that Forest Department, UP, is progressing in leaps and bounds. बड़े अभिमान के साथ और खुले मन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है, आदरणीय मंत्री जी के तत्वाधान में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। और ये क्यों संभव हो चुका है? क्यों कि हम लोगों ने अपने तीनों भाग को, तीनों विंग को एक साथ जोड़ा है। टुडे वी हैव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टॉकिंग टू एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट टॉकिंग टू क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड द होल विजन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट into something which is unique, and why it is unique मैं आपको बताऊंगा। हमारा जितना भी लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को क्लाइमेट चेंज की जो आपदा है उसको, उससे निपटने के लिए उसके स्वरूप हम लोग ने अपने लक्ष्य को बनाया है। एंड जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के हमारे टारगेट्स हैं उसको हम लोगों ने अपने लेवल पर कैलकुलेट किया कि उत्तर प्रदेश का कितना उसमें योगदान होना चाहिए, और उसके मुताबिक हम लोगों ने अगले 5 साल में फॉरेस्ट्री का एक रोड मैप बनाया। 2015 से जब से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कही गई है पेरिस एग्रीमेंट में, उसके बाद से हम लोग 100 करोड़ पौधे लगा चुके हैं पिछले 5 सालों में, और अगले 5 साल में 175 करोड़ लगा के 275 करोड़ पौधे लगा के हम अपने 1800 लाख मिलियन टन जो हमें कार्बन को अवशोषित करना है, सिक्वेस्टर करना है, उसके मुताबिक हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है। और इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए हम लोग अपना रोड मैप जो है हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ ध्यान देने का है। आपको मैं कह के आपको ताज्जुब होगा कि पूरे इंडिया का जो बिग डाटा है फॉरेस्ट्री के बारे में, उसमें एक फिगर आई थी, उत्तर प्रदेश में 70% ऐसे कृषि भूमि है जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमें कि एक तरफ हम कार्बन को भी अवशोषित कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों ने जब ये कैलकुलेशन किया तो देखा कि अगर किसान अपने मेड़ों पर पेड़ लगाता है और पेड़ लगाने के बाद
वो उसे वुड बेस्ड इंडस्ट्री को देता है तो उसकी आमदनी दोगुना हो जाएगी। और अगर हम क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट से उसको कार्बन क्रेडिट उसके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी आमदनी तिगुना हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बस ऑल्सो फॉर डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम विच इज़ नीडेड। और हमारे प्रधानमंत्री जी की यही विजन है कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करें। साथ ही साथ ये भी नेसेसरी है कि जो वुड आ रहे हैं उसका हम रीजनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। वहाँ पर हर न्याय पंचायत में या हर ब्लॉक में हमारे पास आरा मशीन होने चाहिए, हमारे पास वुड बेस्ड टिम्बर के फैक्ट्री होने चाहिए, विनियर फैक्ट्री होनी चाहिए। तो इसका एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो उसको ज़्यादा देर दूर ट्रांसपोर्ट नहीं करना होगा और उसका कंजम्पशन भी उसी तरह से हमको बढ़ावा देना होगा। हम लोगों ने एक नारा दिया है, वुड इज़ गुड, क्योंकि वुड को अधिकांश लोग इवन ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में वुड को ऐसा माना जाता है कि पेड़ कट गया, बट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो एंगल है, वुड में कार्बन अवशोषित होता है, स्टोर्ड होता है। और कम से कम 150 साल जो इंटरमीडिएट लक्ष्य है, हम अगर वुड को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, अपने घरों में अपने फर्नीचर यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करेंगे, अवशोषित करेंगे और हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो कंज्यूमर साइड से लेके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन साइड में एक लिंक मिला हमें, जो हम लोगों ने विचार करके अपना रोड मैप बनाया है एंड वी आर गोइंग अहेड स्टेप बाय स्टेप एंड दैट्स व्हाई विथ ऑल कैंडोर एंड एपिलम आई एम सेइंग दैट वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट इन अ राइट डायरेक्शन। आज का जो सेमिनार है वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने रखा है और इसमें न्यू पाथवेज मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि पहला टेक्निकल सेशन जो है वो न्यू पाथवेज एंड अपॉर्चुनिटी है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एवरीवेयर जहाँ भी जिस प्रदेश में है, उनके जो लर्निंग कर्व है उनसे अपना हम लोग एक सुझाव लेते हुए एक रोड मैप बनाएंगे कि हम अपने फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी, प्रोफिशिएंसी और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें। और उसको करने के लिए हमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिकेसी लाना होगा अपने कार्यशैली में, तभी जाके हम इसको अचीव कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में पोटेंशियलिटी है, लेकिन वो धीरे धीरे चूँकि उसकी आमदनी घट रही है तो एक डेड कॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ रहा है। शायद अन्य प्रदेशों में भी कहीं कहीं अदर एक्टिविटीज़ लेके, जैसे माइनिंग एक्टिविटी है या ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इस तरह लेके फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने अच्छी प्रगति हासिल की है। इसी उद्देश्य के कारण कि कैसे हम अपने कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाएं, उसके लिए फर्स्ट टेक्निकल सेशन है। दूसरा टेक्निकल सेशन हमारा इको टूरिज़्म का है और मुझे पूरा विश्वास है और हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि आगरा इको टूरिज़्म सर्किट, दुधवा इको टूरिज़्म सर्किट और हमारा वाराणसी इको टूरिज़्म सर्किट, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से यहाँ पर लोग आएँ, फुटफॉल इंक्रीज़ हो, ताकि हम इसको और बढ़ावा दे सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि देवधारी और राजधारी फॉल्स जो बनारस में है वो प्रिस्टाइन फॉल्स है और नियाग्रा फॉल्स से कम नहीं है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। उसी तरह हमारे आगरा तो ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन सूर सरोवर, एलिफेंट वाइल्ड लाइफ एलिफेंट SOS और रेस्क्यू सेंटर जो है, और हमारा लायन सफारी, हमारा चंबल सफारी, हमारा ताज नेचर वॉक, ये सारा चीज़ आप 2 दिनों में कर सकते हैं। और आगरा नॉट ओनली हेरिटेज टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए बहुत। अभी हम लोगों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी फाउंडेशन बना लिया है और अमानगढ़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। अमानगढ़ वो जगह है जो कि साउथ ऑफ कॉर्बेट है और वहाँ भी अच्छी साइटिंग हो रही है। तो ये सब जो पोटेंशियलिटी है इको टूरिज़्म का, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, भारत सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सभी मिल के अगर हम लोग कोऑपरेटिव एफर्ट करें तो शायद इसमें हम लोग बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं।
लास्ट इसमें टेक्निकल सेशन जो है आज, उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है। और आप जानते हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, दिस इज़ फॉर द पुअर मैन एंड स्पेशली फॉर द फेमिनिन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, रूरल एरियाज़ में जो रह रहे हैं, इनको हम कैसे आर्टिजनल क्लस्टर्स में एक हस्तशिल्प संकुल में कन्वर्ट करें और कैसे उनके उत्पाद को ब्रांड करें, मार्केटिंग करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको आमदनी उन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उन महिलाओं ग्रुप को दे सकें, उन ट्राइबल सोसाइटी को दे सके, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े। और इसके लिए भी एक सेशन रखा गया है। इसमें भी काफ़ी अन्य प्रदेशों में जो काम हुआ है, विशेष करके छत्तीसगढ़ में, तो उसका भी हम लोग अनुभव प्राप्त करेंगे और अपने प्रयासों में सम्मिलित करते हुए एक नवीन प्रयास करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अ great occasion for us. I, on behalf of the UP government, welcome you all for a very enlightening session that is going to happen today, where we will enrich and enmesh our experiences, knowledge, and prepare a roadmap not only for Uttar Pradesh, for your state also. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके शब्द हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे, प्रोत्साहन देते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए। एंड इन दिस लीग, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हम्बली रिक्वेस्ट श्री CP गोयल जी, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ अ 1986 बैच IFS ऑफिसर। अर्लीस्ट he served as joint secretary, Ministry of Science and Technology, and before that he served at many capacities in Uttar Pradesh. Please welcome him. I request sir to please share his thoughts and guide us forward. आदरणीय मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, आदरणीय श्री KP मलिक जी, श्री मनोज सिंह जी, ममता संजीव दुबे जी, मुकेश जी, और मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण और मेरे समक्ष बैठे सभी मेरे पुराने साथी लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मुकेश कुमार जी का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो एक तरह से घर वापसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि लगभग 8 साल से प्रदेश से बाहर रहने के बाद ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहां अपने साथियों के साथ दोबारा मिलने का मौका मिलता है। मेरे रिटायर्ड लोग भी नज़र आ रहे हैं, वार्ष्णेय साहब, गरोला साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कॉरपोरेशन 1974 में बना था और शायद ये पहला मौका है जब इतने इस विषय पर एक कार्यशाला हो रही है कि कैसे इसको डाइवर्सिफाई किया जाए और कैसे नए नए आयाम इस कॉरपोरेशन के लिए ढूंढे जाएँ। तो उसके लिए तो मैं अपने जो ACS हैं, मनोज सिंह जी, मंत्री जी और मुकेश जी जो हैं, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने कम से कम एक बहुत सही मौका चुना किस तरह से कॉरपोरेशन की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। और आज जिस समय कॉरपोरेशन जो एक ज़माने में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, आज कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है और बहुत अच्छा सेमिनार आपने आयोजित किया है। जहाँ तक कि इस बात का प्रश्न है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वह सीमित संभावनाएं हैं, उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ पहलुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। NTFP, तेंदुपत्ता, इको टूरिज़्म में आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इको टूरिज़्म में और ज़्यादा, जैसे अभी हमारे मनोज सिंह साहब ने बताया कि कैसे कैसे नए सर्किट्स को आप यूज़ करके कैसे उसमें अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही वनों के प्रति जो आम जनता को जागरूक करना, उनको प्रेम बढ़ाना और अपने आय के संसाधनों को विकसित करने का भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें, अगर भारत सरकार ने जो विगत दिनों में कुछ नई पॉलिसीज़ जारी की, जिसमें एक बैम्बू का चारकोल के बारे में एक पॉलिसी है कि बैम्बू के चारकोल को भी हमने से बाहर कर दिया है रेगुलेशंस से। तो उसके बारे में भी जो हमारे जितने भी बिगड़ के इलाके हैं, जहाँ पर कि जैसे इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, आपका कन्नौज है, इस एरिया में जहाँ बैम्बू की संभावनाएं ज़्यादा हैं, वहाँ भी अगर आप इस तरह के यूनिट्स कर सकते हैं तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिलेगी और आय के संसाधन भी प्राप्त होंगे। वैल्यू एडिशन
आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो आप टिम्बर का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, टिम्बर की सेल वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं वैल्यू एडिशंस की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं तो उसमें कर सकते हैं। ऐसे अभी भारत सरकार ने MDF और आपके जो पार्टिकल बोर्ड्स के प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पॉलिसी अनाउंस की है कि उसको वुड इंडस्ट्री से बाहर रखा गया है। तो अगर वन निगम देखता है कि कहीं प्रदेश हमारा एग्रो फॉरेस्ट इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है उनको और अपने जो फॉरेस्ट्री के वेट्स हैं उसको भी करके अगर वो इंडस्ट्री में भी आना चाहता है तो उसकी भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो आपके जो जहाँ तक मुझे जानकारी है वन निगम की, एक तो कॉरपोरेशन होते हुए भी शायद उसमें इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जितनी कि कॉरपोरेशन में होनी चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और मनोज सिंह जी से भी कि कृपया इस पक्ष को भी देख लिया जाए कि अगर हमारी पोजीशंस या हमारी जो लोकेशंस हैं वो एक जगह फिक्स हो गई हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर को या बोर्ड को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि उनको वो रीलोकेट कर सकें, नए आयाम ढूंढ सकें और हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सरकार तक ना पहुंचना पड़े, तभी ये शायद ऐसा हो पाएगा कि वो कॉर्पोरेट स्टाइल में रन कर सकेगा। और आज इस बात की वाकई में ज़रूरत है कि कॉर्पोरेशंस को हम लोग कॉर्पोरेट स्टाइल में वर्क कराएं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो बाद में डेट रिडन हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमको उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या शायद राइट ऑफ करना पड़ेगा। जहाँ तक अभी जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनको देखकर ऐसा एक विचार आता है कि अगर कहीं हमारा जो कॉरपोरेशन है उन क्षेत्रों में आ सकता है, जैसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है। आजकल कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हों, चाहे जायका के हों, चाहे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हों, इवन हमारे कैंपा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत आसानी से कॉरपोरेशन बाकी स्टेट्स में ले सकता है, क्योंकि इन सब के टेंडर्स होते हैं और बहुत भारी उसमें मात्रा में राज्य सरकारें जो ऑन प्रदेशों की हैं वो खर्च भी करती हैं। तो और एक हमारे पास एक ऐसा एक रिसोर्स है रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए, चाहे हमारे IFS के हों, चाहे रेंज ऑफिसर्स हों, चाहे ACFs हों, उन रिसोर्स को हम लोग अगर आप प्राइवेट कंसल्टेंट लेते हैं तो उनको आप जो कीमत देनी होगी हमारे लोगों से उससे आधी पड़ेगी, क्योंकि पेंशन तो ऑलरेडी उनको मिल रही है। तो आप इस तरह के टेंडर्स में बहुत कम्पिटिटिवली वर्क कर सकते हैं। और उसमें जो एक कमी है कि अभी अगर हम लोग देखते हैं जहाँ से भारत सरकार पे हम लोग देख रहे हैं, कहीं वो वेबकॉस आता है, कहीं कोई और ऐसी संस्था आती है, नाबार्ड आ जाता है, जिनका कोई फॉरेस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंकेजेस नहीं है। तो अगर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन आएगा और वो दिखाएगा कि हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतनी हमारे पास नॉलेज बेस है, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा और आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाने में सहायक होगा। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हैं, इसके भी जगह जगह एक इस तरह के अभाव देखा गया है कि हमारे बहुत ही नॉलेजेबल कंसल्टेंट्स नहीं हैं। अगर आप कोई इसी हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले शर्मा जी बैठे हैं, जितने भी आपके पास इसी के लिए टॉर वगैरह के लिए जो भी आपके एप्लीकेशंस आती हैं, सिया में आती हों, चाहे आपके पास आती हों, कहीं ना कहीं वो कंसल्टेंट्स उसके बैकग्राउंड में रहते हैं। तो इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कॉरपोरेशन एक्सप्लोर कर सकता है देने के लिए। ट्रेनिंग और एक्सटेंशन का भी एक बहुत बड़ा काम कॉरपोरेशन ले सकता है। जैसे हमारे ही अगर FTI है, अगर विभाग चाहता है कि इसको कॉरपोरेशन रन करे कॉर्पोरेट स्टाइल में, तो न केवल वो हमारे लोगों को ट्रेनिंग देगा, लेकिन बाहर के और भी अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री के एरिया में आ रहे हैं तो फार्मर्स की ट्रेनिंग करनी है आप, और जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को कैसे आपको फील्ड से कनेक्ट करना है, तो इस तरह के भी एस्पेक्ट को आप वर्क कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में इस समय काफ़ी ज्वलंत विषय है। हमारे अभी जो इस साल का बजट है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री एक मेजर एक्टिविटी हाईलाइट की है माननीय वित्त मंत्री जी ने। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में जहां आप एक्सटेंशन सर्विसेज तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल लैंड्स हैं या जहां एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वाली समस्या है, उस पर अगर आप चाहते हैं कि एक अपने गवर्नमेंट एजेंसी के रूप में उन पर प्लांटेशन करके आप जो भी वहाँ के लैंड ओनर्स हैं उनको वापस कर सकें एक एफॉरेस्टेड एरिया, तो उस पर भी एक मेरे ख्याल में संभावनाओं पर विचार हो सकता है। इको टूरिज़्म की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कहा गया है कि आप जो हमारी सरकार की नई गाइडलाइन है कि आप कहीं भी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बिना क्रिएट किए हुए आप इको टूरिज़्म कर सकते हैं। लेकिन इको टूरिज़्म के लिए केवल हम वहीं तक सीमित ना रहें कि जो साइट्स हमारे पास हैं, जो वन विभाग के पास हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं जो कि वन विभाग के पास नहीं हैं, जहाँ पर कि इको टूरिज़्म की संभावना है। तो वहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि ऐसी इको फ्रेंडली हाउसिंग है, इको फ्रेंडली और
एकोमोडेशंस आपको प्रोवाइड करनी है तो उसमें भी वन विभाग वन निगम अपना कार्य कर सकता है। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में एसीएस साहब ने अभी अपना कहा है, तो जो काम अभी पिछले मेरे ख्याल में 2-4 महीने पहले यहाँ पर एक कार्यशाला हुई थी जिसमें मनोज सिंह साहब भी थे, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न भाग के किसानों को जो एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद जो उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स उनको मिलेंगे उसकी ट्रेडिंग के लिए हमने टेरी को एंगेज किया है एक बीच में एजेंसी के रूप में कि टेरी उसको फैसिलिटेट करेगा कि किस प्रकार से वो कार्बन क्रेडिट्स हम उन फार्मर्स को दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो टेरी भी केवल उन्हीं लोगों के सपोर्ट पर चल रहा है जो कि आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इस चीज़ को, जबकि उसने एफएससी के सर्टिफिकेशन करा रखा है, उसको पर्याप्त अनुभव है, उसके पास इसमें कैपेसिटी है, तो कार्बन ट्रेडिंग के विषय में भी एग्रो फॉरेस्ट्री के एरियाज़ में फार्मर्स को कैसे कार्बन मार्केट से लिंक करना है, इसमें हमारा जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है ये बहुत मेजर रोल अदा कर सकता है। और मैं चाहूँगा कि टेरी के जो मॉडल्स हैं उसको आप अडॉप्ट करके, अगर वेस्टर्न यूपी में टेरी ने लिया है तो बाकी क्षेत्रों में अगर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इसको करेगा तो उस पर हम काफ़ी अपनी व्यय में वृद्धि कर सकते हैं। तो यही सब मेरे कुछ विचार हैं किस प्रकार से इसमें फॉरेस्ट कॉरपोरेशन अपने को डाइवर्सिफाई कर सकता है, नए नए आय के संसाधनों को विकसित कर सकता है। मैं एक बार पुनः इस वर्कशॉप के आयोजकों को, माननीय मंत्री जी को, माननीय राज्य मंत्री जी को, श्री मनोज सिंह जी को और एमडी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन पीसीसीएफ एंड हॉफ और आप सभी जो यहाँ आए हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचारों को सुना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय श्री केपी मलिक जी की इच्छा है कि इस कार्यक्रम को सीधा आगे बढ़ाया जाए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के आशीर्वचनों के साथ। लेकिन हमसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर सकते हैं कि भले ही 2 पल बोलें, लेकिन आदरणीय श्री केपी मलिक जी के प्रोत्साहन भरे शब्दों को सुनने का हम सभी को मौका मिले। ज़ोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। आज के इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, महानिदेशक पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन भारत सरकार श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, महानिदेशक पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक आईटीडीसी भारत सरकार श्री कमलावर्धन राय जी, अपर प्रमुख सचिव पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, उत्तर प्रदेश वन निगम श्री मुकेश कुमार जी, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा व कर्नाटक वन निगम के आए वरिष्ठ अधिकारीगण। सर्वप्रथम तो जो अतिथि के रूप में अपने बीच में सभी लोग अपने बीच में आए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ प्रशंसा करता हूं आप सबके बर्तावे की, तौर तरीके की और विभाग के प्रति गंभीरता की, कि जितने इन कई महीनों में मुझे देखने को मिला। आदरणीय बड़े भाई अरुण कुमार जी और हम इकट्ठे भी गए, देखने को मिला, वो बहुत अच्छा लगा। पर हमें मानवता के नाते और माहौल को देखते हुए और कल को देखते हुए जो अभी चर्चा हुई वो विस्तार से हुई। मैं उनसे आपको सबको जोड़ते हुए भाई यही कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैंने भी अपने क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और सबको इकट्ठा किया, विचार विमर्श किया और एक आपके विभाग की जानकारी देते हुए
आपकी गंभीरता को परखते हुए उनसे एक अनुरोध किया कि हमें वृक्ष लगाने के संबंध में एक नई पहल करनी चाहिए। उस नई पहल के तहत हमने एक नया तरीका निकाला, खो या सुख हो, उन सारे अवसर पर हमें कहीं न कहीं वृक्षारोपण करना होगा। बच्चे का जन्मदिन हो या जन्म हो, तब भी हमें वृक्षारोपण करना होगा। और हमारे यहाँ पश्चिम में एक चलन है, जब दाह संस्कार के बाद अस्थियाँ विशेषकर कोई हरिद्वार ले जाने का काम करते हैं, कोई गढ़ ले जाने का काम करते हैं, ऐसे ही बड़े से बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर ले जाने का काम करते हैं। हमने उनसे निवेदन किया इस सब को हम तौर तरीके को बदलें। और जब हम अस्थियाँ ले जाने का कई बार ऐसा प्रैक्टिकल रूप में देखा गया, कोई अपने पिता की माँ की अस्थियाँ ले जा रहा था, उसको अकेला एक बच्चा था, जब वो ले जा रहा था दुर्घटना में चल बसा और उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। तो हमने निवेदन किया, इसकी बजाय आप अपनी अस्थियों को चुगने के बाद कभी उचित स्थान पर वहीं दफना दें, वहीं दबा दें, वो चाहे शमशान घाट हो या किसी का घर हो, घेर हो, खेत हो या सड़क का किनारा हो, और उस पर एक पेड़ हम लगा दें और उस पेड़ को लगातार ये मानते हुए हम पानी और उसको पालते पोसते रहें, जैसा कि हमारे फादर को हम पानी दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया, जब वो बड़ा होगा, कई वृक्ष ऐसे हैं जो कई सौ वर्ष और हजारों वर्ष तक जिंदा रहते हैं। जब जब हमारी नई पीढ़ी आएंगी, हम बता सकेंगे ये पेड़ हमारा बाप के रूप में या दादा के रूप में या माता के रूप में खड़ा है। और जब हम उसके बीच में बैठने का और पानी देने का काम करेंगे, लगेगा हम इसका पालन पोषण कर अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा एक हमने मानवता का परिचय देते हुए और सबको एक आत्मिक लगाव का पैदा करते हुए एक संदेश देने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं, आपने सबने प्रशंसा का काम किया, पर हमें व्यक्तिगत तौर से भी अपने परिवारों में और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा। और ये मैं मनोज सिंह जी से और मैडम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये गोष्ठियाँ हम ब्लॉक लेवल पे या ऐसी लेवल पे भी करें, देहात लेवल पे, जहाँ हम इनको समझा सकते हों, उसको हम कागज़ से ऊपर ले जाकर एक उनके बीच में समझाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आने का काम होगा। आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए और पुनः आपकी धन्यवाद और प्रशंसा करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और ये लाभ हम सभी को मिल सका कि आपके शब्दों से हम सभी को इतनी प्रेरणा मिली। तो इससे पहले कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के आशीर्वचनों से हम प्रेरणा पा सकें, एक लम्हा लेंगे हम यहाँ पर एक विशेष लोकार्पण का, जिसके लिए यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एवं श्री के.पी. मलिक जी माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन जी की गरिमामय उपस्थिति में श्री अरुण कुमार सक्सेना जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा आज एक विशेष लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंचासीन हमारे समस्त सम्मानित अतिथियों से भी कि वे भी इसका हिस्सा बने। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ लोकार्पण होने जा रहा है। प्रदेश के 3 शहरों में 5 स्थलों पर सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र, नोएडा स्थित कोंडली ड्रेन के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के सघन अनुश्रवण हेतु प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल का। तालियां लगातार होनी चाहिए, एक बार दमदार तालियों के साथ। माननीय
मंत्री श्री अरुण कुमार जी, माननीय श्री के मलिक साहब, एसीएस साहब, डीजी फॉरेस्ट भारत सरकार श्री मैडम दुबे जी एवं अन्य मंचासीन सदस्य, आज इस जो 100 दिनों की जो हम लोगों की प्रदेश सरकार की योजना थी, उसमें जो ये लोकार्पण भी किया गया है, उसके बारे में आपको मैं सूक्ष्म में अवगत कराना चाहूँगा। जो 3 शहरों में हम लोगों ने 5 CAQMs लगाए गए हैं, इसमें हम लोगों को परिवेशी वायु गुणवत्ता का लगातार डेटा मिलता रहेगा। इसमें 6 गैसीय उत्सर्जन होते हैं और ये डेटा हमको एक जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐप है, समीर ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको 24 घंटे आपको डेटा मिलता रहता है, जिससे आपको ये ज्ञात होता है कि इन शहरों की वायु गुणवत्ता का स्तर क्या है। इसके अतिरिक्त जो एक कुंडली ट्रेन का एक माननीय मंत्री जी ने अभी लोकार्पण किया है, कुंडली ट्रेन पर एक कंटिन्यूअस वाटर क्वालिटी स्टेशन लगाया गया है, जिसमें दिल्ली से जो आपका कुंडली ट्रेन में एफ्लुएंट आ रहा है उसकी वायु गुणवत्ता क्या है, कुंडली ट्रेन जो यमुना में गिरती है उसके पहले उसकी वायु गुणवत्ता क्या है, उसकी जल की गुणवत्ता क्या है, इसका डेटा मिलता रहता है। अच्छा, इन दोनों गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता का और जल गुणवत्ता का मिलने का हम लोगों का एक जो हम लोग उसका परिणाम ये रहता है कि हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हमारे एक्शंस क्या होंगे। अगर हमारी गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता या जल गुणवत्ता में के स्तर में कोई वृद्धि हो रही है या उसमें कोई गिरावट आ रही है, तो अपने एक्शंस को हम किस तरह से इंटेंसिफाई करें कि उनमें वायु गुणवत्ता में या जल गुणवत्ता में सुधार ला सकें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो अभी माननीय मंत्री जी ने लोकार्पण किया है, एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ऐप का लोकार्पण किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो प्लास्टिक वेस्ट के जो अर्बन लोकल बॉडीज़, हमारी उत्तर प्रदेश में 651 लोकल बॉडीज़ हैं, उन सभी लोकल बॉडीज़ द्वारा जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन किया जाएगा और उसमें प्लास्टिक का सेग्रीगेशन किया जाएगा, उसका पूरी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर लखनऊ में ही हो सकेगी। और इसके अतिरिक्त उस जो प्लास्टिक वेस्ट का संग्रहण करने के बाद, सेग्रीगेशन करने के बाद उसका अल्टीमेट डिस्पोजल किस प्रकार किया जाएगा, को प्रोसेसिंग में जाएगा, रिसाइकलिंग में जाएगा या वेस्ट टू ऑल में जाएगा, इस प्रकार का पूरा उसका कलेक्शन से लेकर के डिस्पोजल तक पूरा एक जो वहाँ पर मॉनिटरिंग है सेंट्रली हम लोग लखनऊ में कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ अब बेहद आदर के साथ मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। धन्यवाद मैडम। डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेटिव पाथवेज फॉर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में यहाँ उपस्थित मेरे साथी, माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री कृष्णपाल मलिक जी, महानिर्देशक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, महानिर्देशक पर्यटन एवं प्रबंध निर्देशक ITDC भारत सरकार श्री कमलावर्धन राव जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रबंध निर्देशक उत्तर प्रदेश वन निगम श्री मुकेश कुमार जी, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा व कर्नाटक वन विकास निगम से आए वरिष्ठ अधिकारीगण, तकनीकी सत्रों में प्रतिभाग कर रहे विषय विशेषज्ञ, वन विभाग, वन निगम व पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रसार माध्यमों के प्रतिनिधि, मैं आप सबका आज इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आप लोग आए। और मैं समझता हूं यहाँ जो डेलिब्रेशंस होंगे उसमें कुछ ठोस चीज़ निकल के आएगी कि और प्रदेशों में क्या चीज़ अच्छी है उसको उत्तर प्रदेश भी एक्सेप्ट करे, और जो प्रदेश उत्तर प्रदेश की अच्छी है वो और प्रदेश भी एक्सेप्ट करें और अपने यहाँ लागू करें। तब तो इस कार्यशाला का असली
फ़ायदा तभी है जनता के लिए कि हम देश के लिए कुछ बेहतर काम करें, सभी प्रदेशों के लिए बेहतर काम करें, एक दूसरे के तरक्की, एक दूसरे के अच्छे कार्यों का आदान प्रदान करें। मैं सीपी गोयल साहब का भी बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ आए, उन्होंने समय दिया और उन्होंने अभी अभी मुझे बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर MDF फैक्ट्री लगाने में कोई रोक नहीं है, लगाई जा सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि आरा मशीन लगाने में उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाई जा सकती हैं। प्लाई की फैक्ट्री के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन कहा ये भी लग सकती हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आदरणीय मनोज जी से और ममता जी से यही कहूँगा कि हम लोगों को अपने यहाँ अब आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ जल्दी ही करना होगा। साथियों, नवीन तकनीकी का उपयोग जन आकांक्षाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति, प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक विधोन व संवहनीय उपयोग एवं संस्था को सुचारू रूप से संचालन कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु मैं आयोजकों की सराहना करता हूं। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु वनों के संरक्षण व संवर्धन के महत्व को समझते हुए वनों, वृक्षों, वन्यजीवियों व इनके प्रकृतिवास को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी हर जगह जहाँ भी जाते हैं एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट आज इतना ज़रूरी हो गया है कि पूरी दुनिया एनवायरनमेंट की बात कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान होने के उसमें है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से होती रही तो क्या होगा, पृथ्वी सिर्फ एक है, कहीं और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं कहूँगा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अच्छा तरीका रोकने का जो है वो हम जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकें, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करें और उसके लिए ज़रूरी है पेड़ लगाना। वन्य प्राणियों को स्वच्छंद वितरण के लिए उनको प्राकृतवास देना, क्योंकि अगर वन्य प्राणी नहीं होंगे तो भी वन की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार देना भी वन के ही कार्यकर्ताओं का काम है कि वहाँ आसपास के रहने वालों को रोज़गार दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। साथियों, राष्ट्रीय पशु बाघ व प्रकृतिवास के संरक्षण व संवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है तथा इस क्रम में प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव विहार को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लगभग 6,502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रबंधन संरक्षित क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्रों में वाणिज्यिक विदोहन प्रतिबंधित होने के कारण वन निगम को आवंटित होने वाले वृक्षों की संख्या में कमी आई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में वन निगम को निरंतर क्रियाशील व स्वनिर्भर बनाए रखने हेतु वृक्षपातन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमको मेडिसिनल प्लांट पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो वन निगम की आमदनी भी बढ़ाएंगे और जनता को बेहतर इलाज की सुविधा देंगे और इससे मैं समझता हूँ काफ़ी फर्क आएगा। पर्यटन हमारी संस्कृति व परंपरा का अनिवार्य अंग है। इको टूरिज्म हर तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम अपने प्रदेश में भी इको टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बनारस सर्किट बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। आगरा में, दुधवा में, इन सभी जगह हम लोग इको टूरिज्म को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों व वन्य प्राणी प्रजातियों का वास स्थल है। प्रदेश में झीलों में आने वाले स्थानीय व प्रवासी पक्षी, राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन की अठखेलियाँ, जलीय जीवों का प्रकृतवास, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय पक्षी सारस, दुर्लभ व लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन संपूर्ण प्रकृति प्रेमियों का बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि पिछले 5 सालों में हमारी योगी सरकार ने 100 करोड़ पेड़ लगाए और हमारा कंपटीशन हमारी ही सरकार से और तो कोई आसपास नहीं है। और इस बार तय किया है हमने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने
इन 5 सालों में 175 करोड़ पेड़ लगाने हैं। तो उसके लिए मैं सभी से यही कहूँगा कि हम लोगों को पेड़ लगाने की भी आप लोग गाइडेंस दीजिए। और मनोज जी और हमारी ममता जी, पूरा हमारा स्टाफ, मैं कहूँगा वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से पेड़ लगाने पे लगे हुए हैं। और पेड़ लगाने से ही एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा। और ये एनवायरनमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट पर असर डालेगा। साथियों, एक जिला एक उत्पाद को विश्वव्यापी पहचान मिलने के उपरांत प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में एक प्राकृतिक स्थल को पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ओडीओपी तो होगा ही, लेकिन साथ में एक जिला एक पर्यटक स्थल भी बनाने का हमारा विभाग और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ प्रदेश में घोषित विरासत वृक्षों को पर्यटक गतिविधियों से जोड़कर इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण, जन सामान्य को प्रकृति से जोड़ने एवं राजस्व अर्जन को इको पर्यटन के अंतर्गत असीमित संभावनाओं के दृष्टिगत मुझे विश्वास है कि आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर, क्योंकि हमको जंगल बढ़ाना है, एनिमल्स बढ़ाने हैं, रोज़गार बढ़ाना है, अपना विकास भी करना है, लेकिन समन्वय स्थापित करते हुए विकास और एनवायरनमेंट दो चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं। हम ये चाहते हैं विकास हो, विकास ज़रूरी है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट से समन्वय होते हुए करें। इस मामले में, इस विषय पे आप लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। मुझे विश्वास है कि वन निगम द्वारा फर्नीचर व खिलौना निर्माण, वन क्षेत्र के निकट व वन क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों का प्रवाह अविरल व निर्मल बनाए जाने एवं वन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने हेतु नदियों के चुगान तथा वन निगम के कार्यों में निरंतरता बनाए रखने हेतु गैर वन्य भूमि पर वृक्षों की वाणिज्यिक खेती व वैज्ञानिक विद्वहन व विपणन करने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर वन निगम के कार्यों में विविधता लाने की दिशा में अन्य प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों से सीखने व उत्तर प्रदेश में इस कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक दिवसीय राष्ट्र कार्यशाला में गहन विचार विमर्श के उपरांत महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होंगे। और मैं आप सबका एक बार पुनः यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आज के डेलिब्रेशंस में आप जो एक समरी जो निकल के आएगी वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत यूज़फुल होगी, और उत्तर प्रदेश द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं वो और प्रदेशों के लिए भी उससे सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके इन प्रेरणादायक शब्दों ने वाकई में इस परिसर में बैठे हर सदस्य के हृदय में एक नई ऊर्जा का यहाँ पर संचार किया है, और ये शब्द निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने की, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब औपचारिक रूप से हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। So, ladies and gentlemen, we'll take this very special moment out here before the vote of thanks to express our gratitude to our honorable respected dignitaries who took out their valuable time. I once again humbly request Shri Mukesh Kumar ji, Managing Director, UP Forest Corporation, to please extend gratitude to our honorable chief guest for this program, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पुनः मैं अनुरोध करती हूँ श्री मुकेश कुमार जी से कि वे आदरणीय श्री केपी मलिक जी का आभार व्यक्त करें। इस विशेष भेंट के साथ अपना बहुमूल्य समय जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को दिया और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से जो कुछ समय निकाल कर आज यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री मुकेश कुमार जी से पुनः कि वे आदरणीय श्री सीपी गोयल जी का आभार व्यक्त करें, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम. A humble gesture on behalf of the entire team. Thank you so much, sir, for joining us today. And I once again request Mr. Mukesh Kumar to please extend a humble gesture of gratitude to respected Shri Manoj Singh ji. With a big round of applause, ladies and gentlemen. Additional Chief Secretary, Environment, Forest, Climate Change, Uttar Pradesh. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and guiding us with your wisdom and words. In this league, I humbly request Indu Sharma ji, General Manager, UP Forest Corporation, to please join us and extend a humble gesture of gratitude to none other than Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji. With a big round of applause, ladies and gentlemen, PCCF and Head of Forest Force, Uttar Pradesh. Thank you so much, ma'am, for joining us today and giving us your valuable time. And a special gesture on behalf of the entire team. Thank you so much, ma'am. In this league, I humbly request Shri K.K. Singh ji, General Manager, UP Forest Corporation, Bareilly, to please join us and extend a humble gesture of gratitude to Shri Mukesh Kumar ji, Managing Director, UP Forest Corporation. आपकी उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियों के साथ. और मैं पुनः अनुरोध करती हूं श्री के सिंह जी से कि वे आदरणीय श्री सुनील चौधरी जी का धन्यवाद दें. जोरदार तालियों के मध्य Shri Sunil Chaudhary ji, Additional Managing Director, UP Forest Corporation. Thank you so much, sir. And now I humbly request you to please provide a vote of thanks. Please give it up, ladies and gentlemen, and help me welcome Shri Sunil Chaudhary ji. And I request Mr. K.K. Singh to please join us once again. We have with us respected Arun Karna sir, Regional Vice President, IACC and MD, AT&T. Thank you so much, sir, for joining us all the way and gracing this event with your presence. हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी एवं माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण पाल मलिक जी ने उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यों में डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेटिव पाथवेज फॉर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कर कार्यशाला को नई गति व ऊर्जा प्रदान की. माननीय मंत्री जी, आपके अनुशासन और आपकी समयबद्धता के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित सभी समस्त अधिकारियों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा. आपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आपने जो नवीन आपने जो हमें ख्याल बताए हैं, हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी आपके विजन हैं और आइडियाज़ हैं, हम इनको पूर्ण करेंगे. माननीय राज्य मंत्री मलिक जी ने जो वृक्षारोपण की नई पीढ़ियों के लिए मानवता का एक संदेश दिया है और कैसे उन पीढ़ियों को साथ में जोड़ना है, हम उनको भी आश्वस्त करते हैं कि हम ये उनके जो आपकी विजन है उसको हम जरूर लागू करेंगे. अत्यंत व्यस्त होने पर भी हम सबके बार अनुरोध करने व कार्यशाला के महत्व के दृष्टिगत महानिदेशक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी ने कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपने विचारों से कार्यशाला के प्रतिभागियों को नई दिशा व ऊर्जा दी. जैसे श्री गोयल साहब ने बताया कि घर वापसी है,
हम तो सर आपको अपने घर में ही रखना चाहते थे, पर ईश्वर की मर्जी थी कि आप पूरा भारतवर्ष देखें, तो इसलिए शायद आप दिल्ली आ गए। आपके जो विशेष हमारे सुझाव थे, चारकोल ब्रिकेटिंग, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और एक कॉर्पोरेट स्टाइल में वर्किंग करने के लिए, इन सभी पे आज चर्चा होगी और हम प्रयास करेंगे इसमें भी कोई फाइनल रिजल्ट हम लेके आएँ। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज सिंह जी वन निगम के कार्यों में निरंतर सुधार व अभिनव प्रयास करने हेतु नवीन विचार प्रदान करने के लिए साथ ही प्रेरित व प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। श्री सिंह साहब का ये कहना है कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें जो क्लाइमेट चेंज का आपका कंपोनेंट है दैट इज द बिगेस्ट, देखने को सबसे छोटा है, पर आप अन्य विभागों में भी इससे काम कर रहे हैं। सर ने अभी ये कॉन्फ्रेंस कराई है, कॉप पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत विद अ वेरी नोवेल आइडिया, जिसमें 58,000 पंचायतें पूरे उत्तर प्रदेश की जोड़ी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया और 1-to-1 हुआ। तो ही इज वन ऑफ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट विजनरी ऑफिसर्स, और जो इनकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं, मैं आपको ही सर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय लिया और यहां पर आए। वन विभाग के सक्रिय सहयोग एवं योगदान के फलस्वरूप वन निगम इस राष्ट्रीय कार्यशाला को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सफल हुआ है। पीसीसीए मैडम और हमारी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज श्रीमती ममता संजीव दुबे द्वारा कार्यक्रम के आयोजन हेतु निरंतर मार्गनिर्देशन करने के साथ ही समय समय पर महत्वपूर्ण सुझाव हमेशा दिए गए हैं। उनका सहयोग हमेशा रहा है, उनकी विजन अलग रही है। वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में बहुत वर्ष जब उन्होंने काम किया तो इको टूरिज्म का जो पूरा मैनेजमेंट है, जो उसका पूरा बेसिस है, जो पॉलिसी का ओरिजिन है, सब मैडम की देन थी। और मैं मैडम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने बहुमूल्य समय से वो निकल के आज सवेरे ही फ्लाइट से आई हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। एमडी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन श्री मुकेश कुमार साहब ने ये नवीन प्रयास किया है। जैसे गोयल साहब बता रहे थे कि संभवतः प्रथम बारी ऐसी राष्ट्रीय स्तर की एमडी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये बहुत एक नवीन और बेहतरीन प्रयास है, जिसके लिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि जो विभिन्न भारतवर्ष से आए हैं, जैसे हरियाणा से श्री हुड्डा जी, नवदीप हुड्डा जी हैं, अनिल साहू जी हैं, आपके केरला से प्रकृति जी आई हैं और वासुदेवन जी हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मुकेश बहादुर सिंह जी का, जो हमारे वाइस चेयरमैन आईसीसी के हैं, वो जिन्होंने दिन रात लग के जो कार्यशाला उसको सफल आयोजन के लिए, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उन्होंने विशेष प्रयास किए। यहाँ पर उपस्थित आपके लोकल मीडिया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एवं हमारी लोकल जो जोनल चीफ हैं यहाँ के एनके जानू जी और उनकी टीम, जो दिन रात लग के उन्होंने इंश्योर किया है कि किसी को भी कोई कठिनाई ना, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और सबको, माननीय मंत्री जी को एश्योर करता हूं कि एक फ्रूटफुल सेशन होगा, जैसे उनका डायरेक्शन है। अब मैं सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूं कि एक अल्पाहार हमारा चाय की ब्रेक के बाद हम अपने फर्स्ट सेशन के लिए यहाँ दोबारा 12:45 में। Ladies and gentlemen, before we disperse for the tea break, I request you all to please stay back, please settle down, because we'll take this one moment and one opportunity out here. यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के साथ मंच पर एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में हम अंकित करना चाहेंगे. So I request our honorable dignitaries on the dais, along with we would also like to invite on stage Shri P. Prabhakar ji, AMD UP Forest Corporation, along with Kashish Tyagi ji, Regional Director IACC, to please join us for a group photograph so that we can preserve these moments for posterity in our hearts. So I humbly request जितने भी यहाँ पर मंच पर हमारे सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं, so I also request humbly to all the MDs and representatives who have joined us from other states as well, please join us on the stage so that we can take this opportunity to capture this moment with a group photograph.
तो इन अद्भुत लम्हों में आपकी तालियों की बहुत ज़रूरत है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए। Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time. And with this, ladies and gentlemen, we'll disperse for a short tea break. आज आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी के यहाँ पर परमिशन के साथ इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। एक बार पुनः इसी परिसर में वापस पधारी गए हम सभी। Ladies and gentlemen, a short tea break and we will join again for the technical session 1 today. Thank you.
नदियाँ कई एक्वाटिक स्पीसीज और बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है। वल्चर्स जैसी एंडेंजर्ड स्पीशीज के संरक्षण की हर कोशिश की जा रही है। Check, 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 check. And ladies and gentlemen, now we are about to begin with the technical session 1 today, which is on new pathways and opportunities for the forest corporations. Ladies and gentlemen, we humbly request all our esteemed dignitaries and our eminent guests to now please rejoin us in this very place so that we can begin with the technical session 1. आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि अब इस कार्यक्रम का पहला तकनीकी सत्र आरंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप पुनः इसी परिसर में पधारें और विराजमान हो जाएं, जिसके साथ हम हमारा पहला तकनीकी सत्र आरंभ कर सकें।
technical session which is about to begin. And with this event, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for joining us today. I'm your host. My name is Mallika. And yet again, I warmly welcome you post the tea break. I hope you are all energized and duly ready for all the technical sessions which are ahead of us. So we have a big task ahead of us with all the 3 technical sessions. Beginning now with the technical session 1, ladies and gentlemen. We would like to tell you that the UP Forest Corporation is working relentlessly and tirelessly towards establishing itself as the most efficient, innovative and citizen-friendly organization in the country for preservation, supervision and development of forest, as well as for providing value-added forest produce to the common man. And in this league, with this aim, we aim to cover wide-ranging topics today through our technical sessions. With the technical session 1, we seek to learn innovative techniques by different corporations. And if you are all set, then we will begin with the technical session 1. Ladies and gentlemen, the chairman for technical session 1 with the topic New Pathways and Opportunities. Our chairman is going to be Shri Manoj Singh Ji, Senior IAS Officer and Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. Shri Manoj Singh Ji will be joining us in just a short while. We will now proceed and we would like to invite on stage our Honorable Co-Chairman for this technical session. I humbly request Shri Sanjay Singh Ji, Honorable IFS, ex-MD, UP Forest Corporation, to please join us and head the session as the co-chairman. And the moderator for this technical session 1 is going to be Shri P. Prabhakar Ji, Honorable Shri B. Prabhakar Ji, AMD, UP Forest Corporation. I request sir to please join us as the moderator of this technical session. And ladies and gentlemen, our panelists for this technical session are Shri Dhananjay Mohan, Managing Director, Uttarakhand State Forest Development Corporation. He is a 1988 batch IFS officer, presently serving in Uttarakhand State Forest Department Corporation. Before joining as Managing Director, he was also the Director, Wildlife Institute of India. He has also served in various capacities in Uttarakhand, and he is a well-lead fellow. We are also joined today by Shri Vasudevan, Managing Director, Forest Development Corporation of Maharashtra Limited. Let's welcome him with a big round of applause, ladies and gentlemen. लोग कम हो सकते हैं, तालियां तो कम नहीं होनी चाहिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए भी. We also invite on stage Shri Navdeep Hooda Ji to please join us, CGM Haryana Forest Development Corporation. Shri Navdeep is an IFS 1993 batch officer, additional principal chief conservator of forests and chief general manager, Haryana Forest Development Corporation, Karnal. We are also joined today by Dr. Suresh Gairola Ji, FSC Certificate Indian Head. He is the Country Director of Forest Stewardship Council, FSC. FSC is an international NGO promoting responsible forest management worldwide. In the past, Dr. Gairola has worked as PCCF, Head of Forest Force, Maharashtra, DGICFRE, and Additional Director General, Wildlife. We also welcome Shri Rahul Vohra, CEO, CL Gupta Exports Limited, with a big round of applause. And we also take immense pleasure in welcoming Mr. Tushar Funde, Sparsh Technologies, Pune, joining us. So once again, joining us with this technical session, our panelists today are Shri Dhananjay Mohan, Managing Director, Uttarakhand State Forest Development Corporation; Shri Vasudevan, Managing Director, Forest Development Corporation of Maharashtra Limited; Shri Navdeep Hooda, CGM, Haryana Forest Development Corporation; Dr. Suresh Gairola, FSC Certificate India Head; Shri Rahul Vohra, CEO, CL Gupta Exports Limited;
and Mr. Tushar Funde, Sparsh Technologies, Pune. And with this, I humbly request our respected moderator for this technical session 1, Shri B. Prabhakarji, AMD, UP Forest Corporation, to please take over with this session. नमस्कार सर, मैं जो हमारे प्रथम तकनीकी सत्र में जो है आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सत्र के अध्यक्ष महोदय जो है अभी थोड़ी देर में हम लोगों के साथ जेल करेंगे। हम इस सत्र को जो है अभी हमारे संजय सिंह सर के अध्यक्षता में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आज के हमारे टेक्निकल सेशन के मुख्य टॉपिक है ये जो है न्यू पाथवेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। हम सुबह से जो है ये चर्चा कर रहे हैं कि जो है आगे वन निगमों को किन किन आयामों पे काम करना है, किस तरह के जो है नवीन आयाम हम लोग जो है अपनाएंगे। इस कड़ी में जो है मैं सर्वप्रथम जो है श्री धनंजय मोहन सर को आमंत्रित करता हूं, जो उत्तराखंड के जो है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Prabhakar. A very good afternoon to all the delegates, and let me first of all thank UP Forest Corporation, particularly MD Sir Mukesh Kumar Saab, for having invited me here. And in the morning, DG Saab said it's like homecoming. It's homecoming for me as well. I'm also originally UP cadre officer. I'm very, very new to the corporation, and for the first time in my life, I've been posted in corporation, not even a month old. So I'm also trying to learn. And today I was specifically requested by Mukesh Kumar Saab to talk about the riverbed mining, which is I would say the second largest activity of the Uttarakhand Forest Development Corporation. As I said, I am very new to the corporation, still in the learning phase, but fortunately my general manager, Mr. Nishant Verma, he's here with me, and he looks after the mining aspects also. So he's our specialist for the day. So if you have any queries and all, and I'm not able to handle them, he'll definitely bail me out. So can we have the presentation, please? Yeah. So the presentation is in Hindi, but I'll speak in English for the benefit of the pan-India audience here. So, sir, would you like Nishant to be coming here? I think Nishant, at least for this presentation, you can be here.
So ours is a, I would say, slightly largest corporation, a turnover, annual turnover of about 800 to 900 crores. And as I said, riverbed mining is our second largest activity. And as I said earlier, Uttarakhand was born out of the state of UP. So our corporation is also basically come out of UP Forest Corporation. And 22 years have passed and we are still busy settling our assets. There are still some remaining issues. So, but I'm sure with the positivity around, they'll be settled very soon. We've been in business for 21 years now, the Uttarakhand Forest Corporation. And like our corporations, for timber harvesting from reserve forest areas and other areas as well is our primary activity. Last year, our timber sales were exceeded 600 crores. If you subtract the royalty part, which was about 325 crores, so the rest was, of course, much of it goes in our operational costs and establishment costs and everything. And we also provide a platform for medicinal plant sales. We don't collect it. It is collected by various organizations, many of them cooperatives. And we only provide our depots for their sale and take a very small cess out of it for this service. And that's a very small amount in our profits. Then, of course, as something about which I'll talk in details is the riverbed mining. And last year, if I think total collection was 286 crores. I'll show the figure later in the slides, which is the total collection which goes into various ends, and part of it comes to the corporation. So, so the process and procedure are also very important for riverbed mining, and it all started, it's all basically gaining strength from order of Honorable Supreme Court under one of the many orders under the famous Godavarman case, wherein it said that any extraction of riverbed material from reserve forest areas has to be done either by the forest department or the forest corporations. So that is how we come into the picture. And Uttarakhand has got a lot of mountainous areas, and particularly the foothills are full of rivers which just before debouching into the plains, they carry a lot of riverbed material which has got heavy demand in the construction industry. So the process is, and it also, in fact, just 2 days back we had the State Wildlife Board meeting, and our Honorable Chief Minister was sharing his concerns about rivers inundating villages, particularly in the foothills, because of deposition of a lot of debris. So basically, we are clearing these riverbeds of this from this debris, so that there is a better flow of water, the river is more channelized, and it doesn't cause havoc or disasters in the nearby human inhabitations. So that is the primary aim. It's more of a side product that we sell this debris and make money out of it. So basically the forest department and with the consent of the government, the rivers which need to be channelized and riverbed material has to be extracted. That is what is decided and demarcated. And there is some internal procedure through which a letter of intent is finally issued. The mining department also comes in the picture, and they are the ones who issue this letter of intent after identifying river stretches and all. And then we go for a fairly elaborate procedure of obtaining the 3 clearances, the forest clearances, because it's a non-forestry use of RF areas, environmental clearance, and the wildlife clearance if required. Wildlife clearance because if it falls into any ESZ of any protected area. And in Uttarakhand, most of the ESZs have not been declared, so it's a 10-kilometer limit. And then once we obtain these permissions, then we go in for the extraction, which again has a very elaborate procedure and a standard operating protocol. Because this is
activity which is often done on forest edges, and there's a lot of chances of theft of this material. So we have to take a lot of precautions. So this is in short the preparatory procedures, which ends with the clearances from Government of India. So joint surveys are done by the Forest Department, the Forest Corporation, Revenue, and Mining Department, and the maps are prepared, which are the areas where it has to be done. Then another very important thing is replenishment study, which the environmental clearances have a condition that a replenishment study has to be done by a technical institution, and these are the identified institutions: Central Soil and Water Conservation and Training Institute, Dehradun, FRI, and IIT Roorkee. So they do a study, of course we pay them for that, and they calculate how much material should be extracted out of a particular stretch of riverbed. Then the 3 clearances are pretty elaborate and may often take a few years. And this is what sometimes even delays. And of course, all procedures have their own inherent time required. So, and the EC procedure also involves public consultation. Forest clearance, we all know, we are all very familiar, so I don't need to spend time on this, the whole process and procedure. Environmental clearance, again, I think this is all well known to the audience here. And then, of course, wildlife clearance, which has to move through State Board for Wildlife. There's another, this is an activity which involves a lot of departments. The Pollution Control Board also comes into picture, and the consent to operate and consent to establishment is also obtained from them. And the riverbed material is not to be taken from the entire river. We have to leave 1/4 of width of the river on either side so that the banks don't get eroded. And the maximum permissible depth is 1.5 meters. And as I said, a lot of checks are there while extraction goes on. The transit passes are all electronic now. We have CCTVs at the exit gates, RFID on all the vehicles. The vehicles have to get registered first, who have to extract the material from there. Sorry, I think it's jumped. Sorry, this is not cooperating. All right. Yeah. So all this plus way bridges have to be established in all the gates. So these are some visuals. It's a hectic activity involving at times thousands of laborers. Another important thing is that as per the conditions, no mechanization has to take place. The entire collection of material has to be done manually. So it involves a large number of laborers. That way it is linked to local livelihoods also in a very big way. And I think the number of trucks that get registered and are involved, trucks and tractor trolleys, that also runs in thousands and perhaps even more. Maybe Nishant can give a better figure. And during COVID also, like last year, we had to carry on with our exercise with all precautions. Then, yeah, there are other processes like getting the e-transit passes from the mining department. So pretty elaborate and extensive processes involving many departments. Then whatever collection is finally made, as I said, the total collection last year from all the rivers was about 280 crores. So it is split into many components, and one of the major component is the royalty which goes to the government exchequer through the mining department. I'll give you the details and the breakup. This is the amount of material in lakh cubic meters extracted
in last 3 years, 21-22 and 2021 and 19-20. And as you can see, it's actually the target word is wrong. It's the maximum allowable limit set by the replenishment study. And then sale quantity is always less than the maximum allowable limit, but we've been extracting something like 50 odd lakh cubic meter of riverbed material. And yeah, these are the figures. The total, for example, last year the total was 264 crores, I stand corrected. 264 crores was from all the rivers, but our one major river, that is Gola River, next to Haldwani, that provides the lion's share of it. 186 crore comes alone only from that river, and there's about dozen other rivers which contribute the rest. And out of this, royalty is a certain percentage. Last year it was about 100 crores, and profits is a small amount, and that also goes back to the department. In Gola River, the 100% of the profit goes back to the department and goes into a corpus, which is used for conservation and primarily wildlife conservation measures around Gola catchment. Then expenditure is what the Forest Corporation gets out of this, which is for actually carrying out the operations, and we make a pretty impressive saving out of this. This 85 crores that we get is about 40% of it is our saving and profit. So that's the profit which comes out of mining, so about 35-40 crores. So that's the annual gain that corporation gets, net gain. There are some difficulties, as I said, the clearances, all clearance and the whole procedure takes a long time. Then there are connectivity issues in the remote places, so generating e-transit passes can be tricky at times. Another thing is there are in the adjoining civil areas and private areas, there's mining happening by other agencies as well as private individuals, and they are free to use mechanized methods. So they are using JCBs, and also their production cost is much less. So they outcompete us. Fortunately, the demand is high, so our material also ultimately gets sold. But we have a unfair competition with other players there. So I'll end here. If there are any questions, we can perhaps take them later, and I'll seek Nishant's help also there. Thank you very much. माइक है सर? क्वेश्चन करना है? अभी करेंगे या बाद में? बाद में कर लें. सर डेफिनेटली सर, एक्चुअली इवन हम लोगों का जो अभी जो पिछले सरकार ने भी, इस सरकार ने भी जो है इस बात पर जो है बहुत जोर दे रहा है कि जो है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात कहा कि जो है इसके वजह से जो रिवर बेड्स की जो फ्लडिंग हो रहा है उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं. गवर्नमेंट का भी मंशा ये है कि जो है यूपी में भी जो है इस कार्य को शुरू कर दिया जाए, एंड दिस इज़ वेरी गुड पाथवे फॉर अस डेफिनेटली. उत्तराखंड को जो है डेफिनेटली हम लोग को तारीफ देने की बात है कि जो है उत्तराखंड कार्विंग होने के बाद अपने आप में एस्टेब्लिश होके अब प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है सर. नहीं गेटिंग Prabhakar, what Sanjay was asking basically, अगर हम इसको फॉलो करें, we already made a plan around 12 years back for the Shivalik rivers. 11 नदी को हमने खड्डों को आइडेंटिफाई किया था, so we are working on that. Let's see what way it goes. उसमें मैं बता दूं, हमको परमिशन भी मिला था सर, but for some reasons we could not take up the. नहीं बताएंगे. हाँ, परमिशन भी मिला था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हम लोगों को सर. नेक्स्ट पैनल सर, मैं आगे में जो है कंटिन्यू करते हुए वासुदेवन सर, एमडी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इनवाइट करता हूँ. वो आया अपना विचार करते हैं. मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2:15 तक जो है 45 मिनट टाइम है. प्लीज़ टेक 5 to 6 minutes ऑफ टाइम फॉर डिलिब्रेशन. थैंक यू सर.
Good afternoon to all of you. And let me first thank the UP Corporation and also congratulate them for organizing such a very big, important event and very well organized, as one can see. And grateful to you for inviting me. Our Forest Development Corporation started as a Forest Development Board in 1969, but then was converted into a company in 1974. And since 1988, we have been consistently making profit and paying dividend to government. So maybe next slide, please. I'll quickly, go through some, go through the presentation as the time is short. Basically, I will first talk about what the corporation is doing today and what diversification we are, entering into. And also there is a wish list of what we want to do at the end of it. It is not structured that way, but that's how the presentation is now going to be. Yeah. Next. Yeah. Okay. Thank you. So this is our production figures. If you see the last 10 years, our timber production is about 42,000 cubic meter on an average. But this year, we have exceeded all records and reached a figure of 67,000 cubic meters of timber, out of which about 40% is teak, and rest of the figures are there. The reason why this year the production is high is not because we started cutting indiscriminately. It's only because now every year we get a target of about 70,000 cubic meters, but by streamlining our operations, we could take advantage of the entire working season, because we get permission from Government of India for overwood removal every year. And that permission usually comes in November, December, January, like that. So this year we did the marking early and we got the permission by September 30th. So entire working season was available for us. Material reached the depots early, and that's why the jump in the production and the revenue. You can see the revenue has also now reached record figures. For the first time it crossed 300 crores, and the profit is also now hovering around 150, 160 crores. This is tentative figures. We also have a international zoo which was inaugurated last year by the Honorable CM. This is called the Balasaheb Thackeray Gorewada International Zoological Park. It's spread over about 524 hectares. But presently we have the Indian safari, where we have the leopard, tiger, panther, and herbivore safari. It's attracting a lot of visitors. The first year itself, in spite of the COVID interruptions, we could still get a footfall of about 1.18 lakh and a revenue of 3.35 crore. And this year we are expecting it to go up to about 6 crore revenue. This is some pictures from the safari. It's all air-conditioned buses and all that. So this, we are going to add, sorry, this is moving in the opposite direction. Okay, how do we do that? Sorry. Okay. So now the next phase, we are going to have an African safari, a bird park, and a tribal trail, for which 100 crores is budgeted this year. So we'll move, go ahead and build that African safari. Of course, there are challenges regarding procurement of animals, etc. But we are trying to, tie up with the Dubai Safari Park and get a number of animals from them. So the work is on, and government support is there so far. Sorry, this is again going in there. Now this year we have entered into the sawn timber trade. We have taken over a sawmill at Ellapalli, which was run by the department, and now we are operating it. We have already converted about 500 cubic meters of timber, and it is also even the Central Vista project we are supplying both round timber and sawn timber. So we are proposing to have more sawmills, one at Balasha and in some other places. So this is, I think, going to be the future, because we feel that this can really push our revenue many times more than what we are having now. And we have prepared a complete chart for the sawn timber.
Earlier there were only 2 rates, now we have entire range of prices. And we are also planning to tie up with the India Post for supply of sawn timber in retail throughout the country. The MOU is going to be signed very soon. And our dream is that anybody who wants timber, he or she can go to the nearest post office and place an order and get the timber at his doorstep. So that is the ultimate dream. So we are working on that. And now the wish list. Some of the wish list include conversion of these gypsies which are operating in the PAs. There are about, you can see there are about 1,000 gypsies operating in the protected areas around Nagpur. So if we decide to replace these gypsies, they are all very old, dilapidated, and rickety vehicles, which need replacement. And if you replace them with electric vehicles, we have worked out that we can probably buy about 1,000 vehicles and replace all of them, and then we can probably get a good revenue. And after 3 years, this can be transferred to the people who are running the gypsies today. Till then, they will run, the ownership will be with the corporation. This is an idea we are working on. Then of course bamboo products, neem-based products. Now we have plenty of area which are actually not utilized. Unlike the Uttaranchal Corporation, the Maharashtra Corporation has certain areas assigned to them. About 350,000 hectares of land we are holding. And our operations are limited to that area. We don't do operations in the rest of the forest areas. But out of that now, about 60,000 hectares which are in the Nasik region, we can actually do tree plantations, including species like neem, which can fetch us revenue. That can be a future asset in the next 10 years. We can start getting some important revenue from that. And then we are thinking of doing this transplantation. This is actual transplantation work done by us while doing the Gorewada Zoo and the Chandrapur Forest Academy. So this is also now something which we can do in the future years. And transforming urban dumping grounds to eco parks. There are examples in Maharashtra itself where we can approach the corporation, and if they fund us, then we can convert these dump yards into. These are just some ideas and wish list, as I said. So because the time is short, I will not elaborate any further. And if there are any questions, one can answer here or at the end of the session. So thank you very much for the opportunity. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, sir. And it is really, Maharashtra is doing innovative and diversified activities. And when we talked to you, sir, you told that you are managing International Zoo. That actually prompted us. The first day, you are the first person to whom we talked, and you inspired us. Sir, thank you, sir. And now I welcome, I invite Navdeep Huda. He happens to be my batchmate and is CGM, Haryana Forest Development Corporation. Please deliberate on. Thank you, Prabhakar. Hello. Presentation, please. Good afternoon, all respected seniors and my dear colleagues. I am representing Haryana Forest Development Corporation, and I will be speaking briefly about the overview, and I will be covering the furniture making activity in bit detail. Next. The middle one I have to press. This corporation was established in 1989, and we have presently we have a chairman, but usually it is this post is run by the ACS only, and MD. Then further down 3 CGMs and 9 GMs covering 22 districts of Haryana. Tree felling is actually the main activity as of now, because we used to have earlier another wing for felling, that was production wing. Traditional wing was production only, but once the corporation was established, slowly some areas were transferred to corporation for felling purpose. Then for a quite long time, arrangement continued like this, that
50% of the state was with corporation and 50% with the production. But in 2018, all the activities were transferred to corporation and production wing was discontinued. Apart from this, we have a few factories like this barbed wire making, and we are doing only barbing in a simple machine. Then polythene bags we supply to department, and boundary pillars, tree guards, and of course another major activity is furniture making, which is continuing for last more than 20-25 years. If we just look at the profit figures from sale of nursery bags, it is it is around 2 crores. For 21-22, if we see the last column, it is 2 crores, and for barbed wire it is 73 lakhs. Out of around 10 crores, total turnover is around 100 crores. Almost 10% of that is coming as profit to us. Usme se lagbhag like this is 2 crores from barbed wire, and almost equally from other activities like boundary pillars, tree guards. Then next comes furniture making. This is just a brief calculation about how we are doing the calculation part about the costing of these items. Tree felling, our working plans in total prescribe. As of now, it is 1,47,000 cubic meters, but 2 districts as of now, 3 districts do not have working plans. Another 30,000 if we add 30-35, it is 1,80,000. And annual felling is around 145. Others, there is another category which I have shown in this slide. It is the felling which is outside the forest areas, like certain government departments, certain private people, they are also assigning their felling to the corporation. We fell for them and we sell it, and the amount is paid to them. This is a recently initiated activity. It is actually e-auction. We used to have like a lot of issues about sale part. Almost every month there will be a complaint. This particular GM was connived. He did not give proper time to the purchasers. He has further taken some amount. Then publicity part. Every part was always open to some sort of complaint or the other. But एक साल से जब से since when this activity was started, we are totally out of this problem. And Sparsh Technology Maharashtra, they have provided this to us free of cost. They have amended this software as per our needs, and it is running perfectly smoothly. Initially, there was strict, severe resistance from the contractors. They said, we are not educated, हम कर नहीं पाएंगे, इसकी bidding कैसे होगी? But अब सभी districts में, even during COVID times, had we been having this facility, so sales would not have discontinued. All the pictures are uploaded only for sesame lots. Contractors are visiting the depots. Otherwise, they are not even going to depots. Major species as of now is eucalyptus only. So, usme he is there with us, Sparsh Technology, and they will be, he will be making a small presentation, and they are providing to Maharashtra also. This is not much important. This is actually reserve price which we decide every year for sale of timber. This is a slide we are showing the boundary pillars which corporation is making for the department, largely for the department only. This I have already covered. Profit is around 10 crores out of a turnover of 100 crores. Furniture making units, this I will be covering. We have as of now 5 furniture units spread over different parts of the state, and we are planning another big unit in Gurugram. But main issue is land. To have a proper land and then start the unit. There are few lands available with the department, but finally only the department will have to transfer the land, because there is lot of scope in Gurugram and nearby areas for sale of furniture. But as of now, the major purchasers are government departments only, because corporation has been declared an approved source for supply of timber as well as furniture. All the units have proper licensed sawing facilities, and 3 units have solar seasoning units also, but otherwise it is not
needed. Usually we are using dry wood, we stack it for 2-3 months and it automatically gets seasoned. This is that order which I would like to specifically highlight, because if suppose this is withdrawn, there was an issue in a meeting chaired by the Honorable Chief Minister that this relaxation given to corporation, they should be withdrawn. Of course, that never didn't materialize subsequently. Abhi bhi, like as of now, there is an order worth 200 crores from Education Department in the pipeline, which Education Department, for obvious reasons, they don't want to give to us, but they have not been able to give to anybody else also. Eventually, it will come to us also, us only. They wanted certain time frames कि इस डेट तक आप सप्लाई कर दें हमें, इस डेट तक कर दें, within 3 months, within 6 months. We said nothing doing, not less than 1 year, and that too spread all over the state. And major purchasers, as I have already said, police, education, universities, tourism. IGNFA I have specifically mentioned because IGNFA को हमने काफ़ी फर्नीचर दिया है, दिया है सर, दिया है. Turnover almost 25 crores and profit is around 10 crore, around 10 crores, 10%, around 2.5 crores. Now this figure is increasing. This year it is likely to cross 40 crores. Costing method is very simple. These 4 heads are there. First of all is cost of wood. We have like all our calculation statements with all the 4 timbers: Sisam, that is Dalbergia Sisu, then teak, then eucalyptus, and one more Sisam, Kikar, eucalyptus. These 3 only we are mentioning. And cost of fixtures, this is also fixed. We purchase through open tenders, and there is a middle level slab which we charge from our purchasers. Then the labor expenses. Labor varies depending upon the quantity of order. If order is very big, definitely the labor component will come down. Then around 23% are the overheads we are charging, but when we are required to compete with, say, private suppliers for a government order or any big order, we are at our liberty to reduce this last 23% component. But of course, all others will remain fixed. This I have added detailed calculation statements of few items, and I'll be sharing my slides. It can be seen. I have already explained the major components of these calculations. Same thing. These are certain photographs. All the units have well-established showrooms, but we are trying our best to have one showroom at least on the national highway. Again, the problem is space. This is Yamunanagar sawmill, oldest one. The left figure is Haryana Institute of Public Administration. They had given earlier to a private supplier. He could not complete, and he could not complete rather to their satisfaction. Finally, it was given to us. Incidentally, the institute was added by MD Sinha ji, an IFS officer, 89 batch. And another important thing, आजकल maximum orders we are getting from internet. People come with pictures on their phone कि हमें ये item चाहिए. तो the booklet which we have made is more or less meaningless. Abhi, like we have supplied to Haryana Police Housing Corporation more than 10 crores. All of their orders were from internet pictures कि हमें ये item चाहिए और ये हमें बना के दीजिए. So ठीक है, calculation method is same. Whatever they give, we are able to do the costing and we send them invoice, they make payment, and we start our manufacturing. This is a picture of horizontal sawmill and a vertical one. Few more pictures of working areas. This was established by FRI, and as of now only 2 sawmills have functional seasoning units. All others, as I already told, they hardly need it because timber is more or less dry. Diversification, ecotourism. One unit is likely to be outsourced very soon on the national highway, Delhi-Jaipur highway. 2 main areas which have some scope of ecotourism is Aravalis and Shivaliks. Shivaliks, we have very good facilities and clientele is available from Tri-City, Chandigarh, Mohali and Panchkula.
And of course, Aravali's, there is no dearth of visitors, Delhi. So if that unit gets outsourced, then we will try to outsource another activity which is in Bhondsi, earlier form of the then Prime Minister Chandrasekhar ji. And e-auctions I have already told, but e-auction platform will be further extended for further linking it with our accounting system. Then timber certification, of course, this will be presented by Vasudeva sir. And timber trading, which we have already negotiated, being deliberated with Maharashtra as well as UP. Then we are planning some house plants nurseries also in the NCR. That's all. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Navdeep ji. And really, you, though your corporation is very small, but doing very innovative techniques. मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि जो है फॉरेस्ट एरिया के लिए जो आप लोग ट्री पिलर्स और बार्ब वायर सप्लाई कर रहा है. Actually, we have very huge requirements in UP. So this work really good for corporations, our corporation. And the other thing which you are doing is furniture hub. And not to say, we started once in 2012, but we could not take off from there. So this is also now going to be a big pathway for us. Thank you, dear. Now I invite Dr. Suresh Gairola sir, FSC Certification India Limited, to come and deliberate on it. Thank you. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को कम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा और बड़े सक्सेसफुली इसको ऑर्गेनाइज़ भी किया. और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया. क्योंकि समय की कमी है तो मैं बड़ा ब्रीफली आपसे अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा और अपनी ये शॉर्ट टॉक को मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ. पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी नया फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड रिलीज़ हुआ है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. एंड सेकेंडली मैं अपने कुछ सजेशंस देना चाहूँगा not only to UP Forest Corporation but also to other corporations in the country. So सबसे पहले FSC फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो कि 17 तारीख को ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है हमारे मिनिस्ट्री में एक फंक्शन में. बेसिकली फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल 1994 में इस्टेब्लिश हुआ और ये एक पायनियरिंग बॉडी है जिसने कि वर्ल्ड ओवर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन शुरू किया. बेसिकली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक एनवायरमेंटल, एक इकोलॉजिकल एंड एक सोशल. और तीनों कंपोनेंट्स को मिलकर के इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं. दो तरह के फॉरेस्ट सर्टिफिकेशंस हैं, एक जिसको हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन बोलते हैं जिसमें कि हम फॉरेस्ट को सर्टिफाई करते हैं, और दूसरा चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन जिसमें कि एक बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट के बाहर आ जाता है, वहाँ से वैल्यू चेन में उसका कन्वर्जन, प्राइमरी कन्वर्जन, सेकेंडरी कन्वर्जन, अल्टीमेटली वो ट्रेडर्स को जाता है, वो पूरी चेन को ट्रैक किया जाता है. दैट इज़ चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन. इसको मैं फ़िलहाल स्किप करूँगा समय की कमी की वजह से. सर्टिफिकेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं और तीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए इसका वैल्यू है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड सेटिंग करता है, जैसे इस केस में एफएससी एक स्टैंडर्ड सेटर है. दूसरी बॉडी होती है जो एक्चुअली सर्टिफाई करती है, सर्टिफिकेशन बॉडी. जैसे यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने सर्टिफिकेशन किया है तो उनका ऑडिटिंग एक पर्टिकुलर बॉडी ने किया है. उस बॉडी का एफएससी से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि एफएससी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिटिंग करती है एंड सर्टिफिकेट देती है.
लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन नहीं कर सकता, उसके लिए उनको एक्रेडिटेशन होना आवश्यक होता है। एक्रेडिटेशन के लिए एक थर्ड बॉडी होती है, इस केस में एक एश्योरेंस सर्विसेज इंटरनेशनल बॉडी है जो कि सीबीज को एक्रेडिट करती है। एफएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी हमने रिलीज़ किया, बेसिकली उसमें 10 प्रिंसिपल्स हैं, मैं प्रिंसिपल्स पे नहीं जाना चाहूँगा। इसमें तीनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। और एफएससी का वर्ल्ड ओवर अभी तक इतना एरिया सर्टिफाई हुआ है, 219 मिलियन हेक्टेयर्स द वर्ल्ड ओवर, तो ये ह्यूज एरिया है। इंडिया का एक एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया अभी तक सर्टिफाई हुआ है, तो और हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अराउंड 80 मिलियन हेक्टेयर्स है। तो हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन अभी भी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। इसके अलावा चेन ऑफ कस्टडी भी मोर देन 50,000 चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट्स दिए। वर्ल्ड ओवर पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्टिफिकेशन बहुत ही एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में इट इज़ स्टिल पिकिंग अप। ये जो नया स्टैंडर्ड बना है इसमें ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, तो एफएससी इसको खाली मॉडरेट या कहना चाहिए कि फैसिलिटेट करता है, और ये स्टैंडर्ड डेवलप किया जाता है बाय एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स। डॉक्टर सुनील पांडे हमारे बीच में, वो भी इस बॉडी के एक मेंबर थे। ये एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बॉडी बैठी और उसने स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। तो ये जो स्टैंडर्ड अभी रिलीज़ हुआ है, पिछले 5 सालों से इसमें काम चल रहा था, और इसमें 2 बार डिटेल पब्लिक कंसल्टेशन हुई है, ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है, 6-7 बार इसके ड्राफ्ट्स बने हैं। अल्टीमेटली ये इस साल मंजूर हुआ है। इसमें बेसिकली सारे फॉरेस्ट, प्लांटेशंस और नेचुरल फॉरेस्ट कवर्ड हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसमें क्या डिफरेंट है, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है एफएससी का, उसमें करीब 226 इंडिकेटर्स हैं। जैसे आपको जानकारी होगी, स्टैंडर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल, क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स। सो एफएससी के स्टैंडर्ड्स में प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया वर्ल्ड ओवर सेम है, लेकिन इंडिकेटर्स अब हमारे कंट्री स्पेसिफिक हैं। तो उसमें हमारी जो एसडीजी है, जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ग्रुप है, उसने कुछ इंडिकेटर्स एडॉप्ट किए हैं, कुछ नए इंडिकेटर्स लाए हैं, और कुछ इंडिकेटर्स को ड्रॉप भी किया है। ये इसलिए किया है कि हमारे कंट्री के जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल, लीगल, इकोनॉमिक या सोशल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए। एक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर से कि भाई हम तो फॉरेस्ट में वर्किंग प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब वर्किंग प्लान सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो हमको सर्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, या हमको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ये कहा जाता है। तो इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सर्टिफिकेशन के क्या एडिशनल एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड है वो खुद ही इस बात को बोलता है कि हमने फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो वर्किंग प्लान बेस्ड मैनेजमेंट है उसको सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड वो स्ट्रेंथन करता है। ये एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, अनलाइक जैसे हम खुद ही काम कर रहे हैं, अपने काम को हम खुद ही अगर मॉनिटर करें तो पब्लिक के नज़र में उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो आपके काम को मॉनिटर करे तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। और इसके अलावा हमारे कंट्री लेवल पर बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हमने साइन किया है, वो ट्रीटीज़ में भी देन वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट वी आर मैनेजिंग अवर फॉरेस्ट ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट दे शुड बी टेलिंग अदर्स, बट बेसिकली इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि आप ये मन बना लें कि आपको फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन करना है, इसकी आवश्यकता आपको क्यों है, इससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, दे विल गिव यू देयर डिटेल्स। उसके बाद यू डिसाइड वन सर्टिफिकेशन बॉडी, जो कि अभी यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन नेक्स्ट साइकिल के लिए अभी कर रहा है। देन दे विल ऑडिट। ऑडिट से पहले क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आपके होते हैं, आपको फुलफिल करना होता है। ऐसे नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया और आपको 10-15 दिन में सर्टिफिकेशन मिल गया, नहीं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा।
इसको मैं स्किप करूँगा। मैं बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह, उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्टैंडर्ड्स में हैं जिससे कि वो लोग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने टॉक दिया था तो मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस दिए थे कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन कंट्री में अगर पॉपुलराइज करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पॉइंट्स पे काम करने की आवश्यकता है। ये सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जिनको कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई खर्चा कितना आएगा, तो एक्चुअली इसका आंसर ये है कि ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इतना खर्चा आएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहला होता है एफएससी का ट्रेडमार्क लाइसेंस, आप एफएससी का लोगो यूज़ कर सकते हैं जो कि वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइजेबल है। दूसरा एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है एफएससी की, जो कि बहुत ही मिनिमल है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन के लिए। तीसरा जो ऑडिटर आपके हैं, ऑडिटिंग के लिए जितना आपको चार्ज लेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एरिया सर्टिफाई करना चाह रहे हैं, वो एरिया कितना एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल है, आपकी रेडीनेस कितनी है सर्टिफिकेशन के लिए। अगर बहुत सारे, जैसे अभी यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कर रहा है सर्टिफिकेशन, इनका मेरे ख्याल से 95% तो दे आर रेडी, बिकॉज ऑलरेडी एक साइकिल हो चुकी है, तो इनके एक्सपेंसेस बहुत कम होने चाहिए इस बार सर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है, आपको सर्टिफिकेशन लेवल पर आने के लिए अपने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने पड़ेंगे। वो इंप्रूव करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड सम मनी, सम रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू हो गया मेरा। बट couple of suggestions I would like to make for all the corporations, particularly यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के लिए बात हुई है कंसल्टेंसी की। आई विल सजेस्ट दैट यू टेक अप कंसल्टेंसी पर्टिकुलरली अबाउट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, बिकॉज आपको इसमें एक्सपीरियंस है, दूसरे कॉर्पोरेशंस को इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल्सो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के बारे में आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है एज नोडल ऑफिसर कि बहुत सारे एंटिटीज़ को पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है। देन सेकेंडली बैम्बू यूटिलाइजेशन के बारे में डीजीएफ ने भी इसके बारे में बोला है और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, ये एरिया आप दे सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स फार्मर्स के लिए, अगेन इसकी बात पास में हो चुकी है। इको टूरिज्म का नेक्स्ट सेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि वी हैव टू ट्रेड दिस विथ कॉशन, क्योंकि इको टूरिज्म के नाम पर वी शुड नॉट प्रमोट रेकलेस टूरिज्म। और इको टूरिज्म क्या होता है ये हमको जानकारी बड़ी क्लियरली होनी चाहिए। ये नेचर बेस्ड टूरिज्म है, ये लो इम्पैक्ट टूरिज्म है, और थर्डली लोकल कम्युनिटी शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस टूरिज्म। ये 3 कंपोनेंट अगर कंप्लीट होते हैं देन ओनली इट इज़ इको टूरिज्म। सो अगर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में हम इको टूरिज्म प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली कॉर्पोरेशन ने उसमें पहल लेनी चाहिए। एंड में मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा कि जितने भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशंस हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू एक्ट एज ग्रुप एंटिटीज़ फॉर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है दोनों के लिए, नॉट ओनली फॉर कॉर्पोरेशन बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल फार्मर्स who would like to get themselves certified. So enrolling themselves as group entity is another suggestion that I would like to give. So thank you very much, and I end my talk. Thank you, sir. Sir, I welcome our ACS sir to chair this session. Now I invite sir. Our previous speaker has rightly pointed out some points with regard to forest certification, and even Uttar Pradesh, though we are pioneers in forest certification, and now we are going to do the forest certification of outside forest trees, and we have already floated the tenders. And this is really a pride movement for UP Forest Corporation. And others, as you have suggested, we also venture into the consultancies. Definitely we will look into that one, sir. So now I invite Mr. Rahul Vora, CEO, CL Gupta Export Limited. And this Gupta company, furniture company, is very pioneer in using certified wood. So let us learn something from them. Please. Thank you, sir.
You can hear me now, right? First of all, I'm not the CEO of CL Gupta Exports Limited. I am the General Manager, CL Gupta Exports Limited, representing the CEO of CL Gupta Exports Limited. Okay, I haven't brought any of my presentations here. I'm just simply talking about what we are doing and what we can do. A small brief about our organization. We are almost 140-year-old organization, employing more than 10,000 workers in a place in Moradabad. And our annual turnover is approximately 1,000 crores of rupees. And we are into 100% exports as of now. Our factory is spread out in almost 75 acres of land, and we have huge possibilities and huge future perspectives in our existing business altogether. Now, moving forward and taking what Garala Sahab said, FSC, as I said, कि हम 100% एक्सपोर्ट करते हैं, तब जब हम 100% एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे आने वाले समय में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया में आइकिया आ गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर सप्लायर है, सबसे बड़े उसके स्टोर्स हैं, फिर टारगेट स्टोर्स हैं, फिर आपके वॉलमार्ट है। आने वाले समय में इन सबको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड मटेरियल ही चाहिए। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। हमको सबको अगर काम करना है और एक्सपोर्ट्स में काम करना है और अपनी आय बढ़ानी है, तो हमें सर्टिफाइड मटेरियल चाहिए। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे जितने भी MDs आए हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट वेरियस फॉरेस्ट कॉरपोरेशंस, it's only UP Forest Corporation which initiated earlier FSC certification, and I request every other corporation to do the same. I was looking at Maharashtra. Maharashtra has a huge amount of teak available, but it's not certified. So you are not viable for the exports industry as of now. If you go for certification, you have a huge opportunity for the export sector also. मैं सिर्फ थोड़ा सा डेटा लाया हूँ what as a country we are and what we can expect. Talking about Haryana, you said it's a small unit, but you don't have the seasoning, seasoning plants नहीं है आपके पास, right? I suggest you should have some good seasoning plants so that you can improve your productivity. I was reading solar seasoning. But solar seasoning, what do you mean by that? Solar seasoning. That is not the global standard. We have more than 40 chambers. We can season almost 5,000 cubic meter of wood per month. So we are a big giant for that. So we still consider small ourselves क्योंकि scope बहुत बड़ा है. एक छोटा सा डेटा देता हूँ आपको. Global export of wood products is $140 billion US. Can anybody give me a small answer? What is India's share in it? It's not even 1%. It's 0.42%. And that is $581 million US. The global leader in exports of wood is China. It is 10.9% of the global exports, amounting to $15.3 billion. मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे है हमारे पास अपॉर्चुनिटी. Our labor is cheap. The government is promoting policies. We have new startups. We have raw material availability. The best part, we have raw material availability, but they are not in synchronization with the global standards. Sir, correct me if I'm wrong. So if we can do that, we have a huge मतलब after the COVID, the world is looking towards countries like India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Why? Because they want to shift their focus from China to these countries. But अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी नहीं, तो हम कर नहीं सकते कुछ. It means FSC का 17 जून को स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है या जो भी है for the country. I haven't been inside. I'll see कि क्या exactly है. अगर ऐसा होता है throughout the country, the availability of raw material is there, certified. Export altogether is going to be huge. So this is one thing. We have huge opportunities in wood, MDF, particle board, but it has to be as per the global standards, as per FSC certified, the Title 6, the CARB requirements. These are what globally requirements are. उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं. तो कुल मिला के यही है, in nutshell,
we have the clients who are ready to confirm कि भाई हम तुमसे लेंगे, आज हम तुमसे 1000 करोड़ ले रहे हैं, तुम अगर कंफर्म करोगे 5 साल में 2000 करोड़ भी लेंगे. लेकिन क्या are we ready for that? We have a wonderful platform here talking about all this stuff, but really, if we collectively come together, the DG Forest was here, so many people were here, Madam is here. UP Forest was the only corporation in the country having FSC certified wood. Unfortunately, there was a break in between for this chain. And today we have lost a lot of business due to that. Because unfortunately, India में FSC certified wood बहुत कम है. और जितनी ज़रूरत है उतनी तो है ही नहीं. PFC is there, but it is not acceptable to global players like IKEA. So there are things. So we can have a good session, we can have a round-the-clock session for this. Opportunities हैं, सारी चीज़ें हैं, but intention चाहिए, that's it. The players are ready to promise business to us. So as I said, our global share is only 0.42%. If we make it even 5%, that's going to be huge. That will be $7.5 billion. So that's the only submission I have to say, and let's see what comes out of it. Thank you. Yeah, please go ahead. Sure, if it's viable price-wise, see, when you talk about Kerala, you are coming all the way down from Kerala to north. My factory is in north. We are planning up a factory even in Dadri, so that we are close to the freight corridor. The only thing, maybe your raw material is cheap, but maybe the transportation might kill us. Obviously. I would like to tell you one more thing. When you're talking about Kerala, there are players in Kerala itself who are exporting to these clients. And they have been looking for avenues and opportunities. तो अगर आप वहाँ पे भी होते हैं, अभी तो ये अवेलेबल ही नहीं है. People call me. मेरे पास केरला से भी फ़ोन आया था अभी कुछ दिन पहले कि हमको FSC सर्टिफाइड वुड चाहिए, क्योंकि उसमें नाम हमारा भी आता है, लेकिन भाई हमने कहा we are manufacturer. तो people are there. Demand is there because it is not widely available. So people are, they fail to do that. To brief again one more thing, we are importing almost 800 containers in a year. One particular species, and that is pine. Pine, FSC pine, and that they are coming from Brazil, they are coming from Germany. Lot of pine, certified wood. Unfortunately, post-COVID, we are facing the freight problems. The freights have almost double what it used to be. For example, whatever I used to take for $250 reaching India, it is for $397. So again, it's an opportunity for the indigenous species in India. कि अगर यहाँ पे हमारे को लकड़ी मिलती है, so we have an opportunity, we can do that. So these are the only things. Please, sir, please, thank you. Fantastic, sir. Fantastic future. Unfortunately, we were discussing about the furniture policy in UP. There is no specific furniture policy in UP. So why don't you frame a policy? I did, sir. It's with sir. It's with sir. I framed it, sir. So we already bought a big plot over there. I am talking about basically espousing the cause of the industry as a whole. I know about CL Gupta Exports, and we should all give a clap to him. Single-handedly, in a very small town called Amroha near Moradabad, these exports have started, and really the entrepreneurship has gone up, and for him only 3 containers every day goes by railway to that town. So how we can make clusters of furnitures is another thing, because the whole gamut of climate change is to sequester carbon, wood is good, to convert into furnitures, to have wooden houses, more wood use, and more exports. Okay. And one thing that we have in UP is the carving skills, which is not there in other part.
and especially in Western UP, which is a low-cost carving skills, where any low-value item can be changed into a high-value item. So we will soon see a furniture policy, that rest assured, and we will also espouse the cause for industry as a whole to bring, because in Dadri, both east-west and north-south freight corridors are meeting, and there immense opportunity is there. This is what I wanted to say. And with regards to import, I would have, you would have again taken this issue of raising the import duty when DG Forest was here, because if we raise slightly import duty, our imports will be less, the demand will be more agroforestry species can come up. Yeah. And that's how we should move ahead. Okay, thank you. Before coming to this place, sir, I had a discussion with my chairman. The cluster which you are talking about, we have been ready to develop that cluster. If things are provided with the government, we are ready to give our experience into that. We can develop that cluster for the whole state of Uttar Pradesh. So if that can be done, we are open for that. So it can be done, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Rahul ji. Thank you, sir. Before we end the session, we have another panelist, Mr. Tushar. He has developed the e-auction site for the state of Haryana, which Haryana government is using. He want to deliberate on that one, which can be useful to all corporations. Hello everyone. Thank you for giving me the opportunity to speak in front of this forum. My name is Tushar. I am the business executive of Spurs Technologies. I give the walkthrough of e-auction system. About Spurs Technologies, quick details about Spurs Technologies. We established in 2009. We are having offices in Pune, Ahmedabad, and Nagpur also. This is the IT providing services company. We are working with the government sectors as well as in the private sectors. The company major revenue comes from the government side. We are working with forest department. We are working with the APMCs. We are working for municipal corporations and ZPs. Now we are here for giving the whole demonstration about the e-auction system, but this is not possible due to the lack of timing. That's why I'm giving you the small brief introduction of e-auction system. ऐसे तो मार्केट में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है ई-ऑक्शन सिस्टम के लिए, बट व्हाट वी आर गिविंग टू अस. हमारे सिस्टम में अगर मैं आपसे ई-ऑक्शन सिस्टम की बात करना चाहूँगा तो हमने अभी रिसेंटली ई-ऑक्शन सिस्टम को हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ लॉन्च कर दिया है. Now we will start the transportation system within 2 months with the Haryana Forest Corporation. अगर अब कोई बायर महाराष्ट्र में बैठ के अगर यूपी या हरियाणा का लकड़ा परचेज करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कत है कि हाउ कैन दे ट्रैवल देयर गुड्स टू हियर एंड देयर. नाउ स्पर्श टेक्नोलॉजी इज गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट. दिस इज द मेजर पार्ट. हमारे सिस्टम का ये मेजर पार्ट है कि अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद द इंश्योरेंस हम लोग बायर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. नॉर्मली ई ऑक्शन सिस्टम के साथ में बीडर का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे, देन बीड वैल्यू एंटर होगी, ईएमडी. सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग फेजेस में जब हम महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे थे कि हमारे पैसा जो ऑनलाइन चैनल से आना था वो किस चैनल से आएगा. स्टार्टिंग में हमने महाराष्ट्र के साथ में आरटीजीएस एनईएफटी के साथ स्टार्ट किया. देन नाउ आज हम लोग यूपीआई पेमेंट इवन गूगल पे फ़ोन से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं. हरियाणा के लिए हम लोग गूगल पे फ़ोन पे से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द मेजर बेनिफिट फॉर द परचेसर. नाउ आपका जो छोटा परचेसर है वो भी इस सिस्टम पे आप परचेज कर सकता है. दिस सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन. नाउ द रजिस्ट्रेशन, द पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम से
कुछ ये हमारे एक मेजर क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, महाराष्ट्र वन विभाग एज वेल एज कॉरपोरेशन एज वेल एज HFDC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड बैंक्स. System, without wasting a time, we are talking about only the e-auction product. The e-auction system process, परचेसर से बीडर से हमें सिर्फ ये बीडर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, देन बीडर कैन एक्सेस द साइट. जैसे ही बीडर ने वो साइट एक्सेस कर ली, अगर जैसे उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया फ्रॉम अनदर साइट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन वो बीड हॉल में अंदर जाके लॉट सर्च कर सकता है. वहाँ एक ऐसी फैसिलिटी हम लोगों ने दे रखी है कि एक स्पेसिफिक बीडर के पास स्पेसिफिक एरिया होता है परचेज करने का. इट मीन्स बाम्बू बीडर कभी आपके यहाँ पर आके फायरवुड में नहीं जाएगा या कीकर का शीशम नहीं खरीदेगा. तो दैट्स वाई दे कैन सर्च इज ओनली देयर इंटरेस्टेड लॉट ओवर देयर. लॉट सर्च करने के बाद वो आएगा, अपना इंटरेस्ट एरिया कंसिडर करेगा, देन बिड हॉल के अंदर ओपन करेगा, बिड हॉल में जाएगा. बिड हॉल में जाने के बाद वो बिडिंग करेगा. दिस इज अ टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम. हम बिड हॉल में माइक्रो सेकेंड्स मिनट्स जो बिड्स वैल्यू है और बिड्स का टाइमिंग कैप्चर करते हैं. और अगर आप ये सिस्टम के साथ में अगर ये पूरी टाइमिंग्स और मैच देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक ब्रीफ डेमोस्ट्रेशन एज पर योर रिक्वेस्ट मैं आपको पर्सनली आके 1-on-1 दे सकता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्क. सो कोई भी एलिगेशंस आने का कोई सवाल नहीं होता है कि मैंने बिड पहले लगाई थी, जो पहले हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि मेरी बिड एक्सेप्ट नहीं हुई और मेरी बिड बाद में एक्सेप्ट नहीं की गई, किसी और की एक्सेप्ट की गई. इसलिए वो सारा माइक्रो सिस्टम बनाया गया है. देन डिपार्टमेंट साइड से जितने भी रिपोर्ट्स आर GST रिपोर्ट्स, TCS रिपोर्ट्स एंड ऑल कलेक्शन रिपोर्ट्स यू कैन गेट ओवर हियर. नॉट अ सिंगल रिपोर्ट आपको बनानी नहीं पड़ेगी. एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हम लोग आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा के देंगे. फाइन. सर वंस यू विल यूज द सिस्टम, अगर आपने जब ये सिस्टम हमने जब बनाया, वी हैव 7 years एक्सपीरियंस. सर हमने बिडर साइट से जाकर भी इस सिस्टम को डेवलप किया है और ऑफिशियल साइट से जाकर भी इस सिस्टम को डेवलप किया है. जो जो परेशानियां हमें आई या जो जो परेशानियां ऑफिशियल साइट और परचेसर साइट से हमें आई, हमने उसको डेवलप किया है. और बेस्ट इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि बेस्ट सिस्टम हमारा इसलिए कि आपको कोई भी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नहीं देगा. तो ये एक मेजर बेनिफिट है हमारे साथ में सिस्टम में आने का. अगर आप हरियाणा का डेटा अगर कैप्चर करेंगे तो पहले उनके ऑक्शनों में 20-25 पीपल्स अराउंड उनके ग्राउंड ऑक्शंस में होते थे. आज 50 to 54 परचेसर बायर्स ऑनलाइन हमें प्रेजेंट होते हैं और हम ये सारा डेटा दिखाते हैं सिस्टम पे कि इस ऑक्शन में कितने बायर्स प्रेजेंट थे. हमने हरियाणा के लिए एक दिन में लार्जेस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है. हेलो, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर. अभी जैसे धनंजय मोहन साहब ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी, इनको कितना पैसा पे किया हमने. दिस सर्विस इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड टू दिस इफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटर इशू हो रखी है कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने डेवलप किया था, उसी वक्त वो जारी होगी थी. जो भी स्टेट लेना चाहे उसको ये फ्री मिलेगी एंड दे विल कस्टमाइज एज पर योर नीड्स. जहाँ तक पैसे की बात है, 0.039% ये चार्ज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से. तो 1 लाख पे 400 रुपये कॉन्ट्रैक्टर के कटेंगे. वो दैट इज़ नथिंग फॉर देम. उससे ज़्यादा तो वो हर ऑक्शन में जब पार्टिसिपेट करने जाते थे, उससे ज़्यादा खर्चा तो उनका उस चीज़ में हो जाया करता था. तो दैट वे एटलीस्ट हम बहुत सुख में है सर. जब से ये शुरू किया है, हमारा हरियाणा कॉरपोरेशन में शुरू किया. अर्लियर दे वर डूइंग फॉर महाराष्ट्र, और अभी आई थिंक इनका गुजरात या 2-3 स्टेट्स का ऑलरेडी पाइपलाइन में है सर. हमारा लगभग 35% रेवेन्यू एक साल में इंक्रीज हो गया है. मतलब इफ़ वी कंपेयर विद द रेट्स बिफोर ई ऑक्शंस एंड आफ्टर ई ऑक्शन सर. तो अच्छी चीज़ है सर, करनी चाहिए. इसीलिए इसको बुलवाया था मैंने कि पता लग जाए सभी को. थैंक यू तुषार जी. सर हमारा उत्तर प्रदेश में भी ई ऑक्शन है, बट गुड थिंग व्हाट ही वाज टेलिंग इज auction with transport. We don't have transport in that. We should learn from that. We can incorporate, definitely. We will invite him. Sir, now I request Chairman sir to say a few words
before closing. It's very nice that lots of suggestion, and I hope somebody is jotting down the minutes of the whole thing. So we will prepare a compendium of each session and then come with a concrete suggestion. The good thing about is that whatever innovative policies, changes, processes has been adopted in other states, we have this with us also now, and we have to see how we can prepare a roadmap for Forest Corporation of UP. Forest Corporation can play a big role. And the next 10 years, I feel, because we have signed the Paris Agreement, because we have signed Glasgow, because we have signed now 2070 net zero, and we have a target of 2030 of 2.5 billion tons of carbon sequestration and emission reduction targets. Lots of things can percolate down to the Forest Department now. Now, the onus of taking cudgels on behalf of carbon mitigation strategy and how we can sync that strategy into the forest policies and afforestation programs. This is a grand opportunity for us, for all of the forest officers, forest bureaucracy all over India. And we can see that the whole forestry could have a wide ramification, not only on carbon reduction side, but also in terms of enhancing the farmer income, enhancing the exports of wood-based products, and also usability of those projects in day-to-day domestic life. So this is what the objective is, and all the corporations should adopt and reshape their policies, their strategies, so that they can be harbinger in this role, and we can all work together by exchange of knowledge and see that we not only meet the carbon sequestration target, but also afforestation target. In UP, we are only 9% forestation. We have taken a huge target of increasing it to 15% in next 5 years. So agroforestry is one of the area where we definitely want to go deep dive into it and see that we can do these plantation in coming 5 years. And the government also wants that we should work hard on this. And then subsequently, the forest product which is raised, the standing crop of the trees is not only the objective of even the wood, which is used for plenty of purpose. The wood availability should increase, and the corporation has a huge role in that. So thank you very much, and it's delightful that all of you came, and all of you are highly seasoned, knowledgeable, having sharp acumen and perspicacity to see what will happen in next 10-15 years with regards to forestry and with regards to afforestation. So I wish you all best of luck also, and let's join hand. Even off the cups, telephonic exchange of ideas could also be welcomed, and we can see how we can enmesh that, incorporate that into our policy. Thank you very much. Thank you, sir. Before closing, I thank all the panelists for giving new ideas to UP Forest Corporation, and we hope we will be implementing your ideas in our corporation new strategies. Thank you. Now I hand over stage to Malika.
Thank you so much, sir. And before we conclude, we will take this moment to express our gratitude to our respected panelists who joined us with this technical session. So I humbly request Shri Sunil Chaudhary ji, AMD Certification, UP Forest Corporation, to please join us on the stage and extend this humble gesture of gratitude to all our respected panelists who joined us from far-flung corners of the country, just to share their thoughts and ideas for this technical session. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी panelists के लिए. I humbly request Shri Sunil Chaudhary ji to please present this humble gesture of gratitude. First up to Shri Dhananjay Mohan ji, Managing Director, Uttarakhand State Forest Development Corporation. I request sir to please present another humble gesture of gratitude to Shri Vasudevan, Managing Director, Forest Development Corporation of Maharashtra Limited. With a continuous loud round of applause, ladies and gentlemen. Shri Navdeep Hoda ji, who joined us all the way. CGM Haryana Forest Development Corporation. I request Sir G, General Manager, CL Gupta Exports Limited. Thank you, sir, for sharing your valuable insights on this technical session. And Mr. Tushar Funde, Sparsh Technologies, Pune. Thank you so much, sir, for joining us today and being a part of this prestigious event. Thank you so much, gentlemen, for being a part of this important technical session. With this, we will now proceed for lunch. Thank you for joining us today. Once again, ladies and gentlemen, I request you all to please join us. This is a half-an-hour dispersal where we'll join again after 30 minutes, again in this very hall. Ladies and gentlemen, our technical session 2 is about to begin, and it is absolutely important and vital for us. So I request you all 30 minutes, and we will join us again in this very place. So we please request you to please join us for lunch, and a sumptuous meal is waiting for all of you out here. Thank you. So once again, thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of this very important technical session. We have 2 more technical sessions to go, technical session 2 and technical session 3, which await on the other side of lunch. So 30 minutes and we'll join again.
Check. So with this, ladies and gentlemen, and now we are proceeding towards the technical session 2 today, which is on the topic development of ecotourism sites and activities. I humbly request you all to kindly settle down. Once again, I am your host. My name is Mallika Yash Asthana, and I welcome you to the next technical session, which is again going to bring forward some game-changing ideas and we are going to make sure that this goes on to develop our issues today. So yes, ladies and gentlemen, moving forward, our chairman for this technical session is none other than Srimati Mamta Sanjeev Dubey ji, PCCF and Head of Forest Force, Uttar Pradesh. I warmly welcome ma'am. Our chairman, श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, एक बार प्यार भरी तालियां हो जाएं मैम के लिए। और इन्हीं सम्मान भरी तालियों के साथ मैं मंच पर अनुरोध करती हूं हमारे को चेयरमैन अंजनी आचार्य जी से, APCCF projects, to please join us. And our moderator for this session is going to be Mr. Sunil Chaudhary ji, AMD Certification, UP Forest Corporation. And our panelists for technical session 2 are Shri Manoj Kumar, CEO, Jungle Lodges and Resorts, Karnataka, 1997 batch IFS officer, additional principal, chief conservator of forests and managing director, Jungle Lodges and Resorts, Bangalore. We also welcome our panelists, Shri Prashant Baghel, Joint Director Planning, Madhya Pradesh Tourism Development Corporation, an engineering graduate and MBA Finance, heading Planning Vertical of MP Tourism Board as a Joint Director Planning, looking after planning of tourism infrastructural projects, master plans, relevant schemes of Ministry of Tourism and State. We also welcome our next panelist for this technical session. Please give it up and welcome Shri Anil Kumar Sahu ji, MD, Chhattisgarh Tourism Board. A very warm welcome, sir. We also welcome our next panelist for this technical session, Shri Ashwini Kumar Pandey ji, Managing Director, UP State Tourism Development Corporation Limited, Engineer by Education, IAS Officer of 2016 batch. Previously, he was posted as a Joint Magistrate and Chief Development Officer. He got posted as Special Secretary Tourism, Government of Uttar Pradesh and MD, UP State Tourism Development Corporation Limited in May 2022. And ladies and gentlemen, our next panelist for this technical session is Shri Manish Mudgal ji, Vice President, Make My Trip. He has over 17 years of rich experience across banking, insurance, and hospitality. He has played an instrumental role in building Make My Trip from the initial years. He has done various roles spread across building domestic hotel business in North to international to his present role as Vice President and Head Domestic Independent Hotel Supply and Business Intelligence for Central, North, and East. Please welcome him. And we also welcome Shri Puneet Chaturvedi ji, Extreme Adventures, Bhopal. Shri Puneet Chaturvedi has a rich 22 years of experience in adventure tourism and ecotourism. He trains in rope adventures, trekking, parasailing, rock climbing, water sports since 5 years, and he is also working to train NCC cadets as well. In 2011, he trained tribal kids in Sundarban, and he conducts various school adventures for kids to remove the fear of adventure sports. Please give it up for them, and I request humbly to our moderator for this session to please proceed. Good afternoon to you all, and a very warm welcome to this esteemed panel chaired by our PCCF and Hoff ma'am, and a vice co-chair, Dr. Anjani Acharya sir. The session after lunch is normally known as the yawning session, and I can really make it out from the faces and from the body language
कि we have really lived up to a tradition of Atiti Deva Bhavo, the vision of our Honorable Prime Minister, by having this sumptuous lunch. So we'll try to make this session more livelier, more interactive, so we do not really fall asleep. So I'll try my level best to moderate that. Ecotourism as a topic has really developed over a period of time. And in India, it was probably in the 70s and 80s that this movement took off. It is the volume of tourism is really staggering, of ecotourism. And if you compare the CAGR, the compounded annual growth rate also, from 2019 till 2027, the proposed jump is from $188 billion to $330 billion. So that's a quantum leap, which we are talking about. So we'll, over discussions, we'll keep on taking the issues, taking different opinions as well. We have a panel of 7. So we'll try to restrict the timings to around 7 minutes. So we wind it up well in time because we got one more session ahead. So firstly, I'll likely to invite Shri Manoj Kumar, an IFS officer of the 97 batch, who's at present he's the managing director of the JLR, the Jungle Lodges and Resorts, for his opinions and viewpoints regarding ecotourism and what exactly the government is promoting. Thank you, and at the outset I thank the UP Forest Department for having taken this wonderful initiative of calling all the MDs of the corporations who are involved in various activities including timber and of course the ecotourism. So I am representing the Jungle Lodges and Resorts, and Jungle Lodges and Resorts is a company owned by the government, where the government of Karnataka has a 34% share, and the Karnataka State Tourism Development Corporation is having 35% share, and the Karnataka Forest Department is having 31% share. So these three shareholders put together have made this into a company. Ecotourism has to be shown through movies. I have some 2 minutes small documentary. Can I have the first video, please? This was the last year's theme, Script or Adventure, and then most of the things. Jungle Lodges today is a brand actually. Jungle Lodges, we don't own any properties, we are a brand. The moment you say Jungle Lodges Resorts, everybody thinks that it is some private company. That's the brand we have created in the state.
This was way back in 1980 when our Chief Minister of Karnataka, Mr. Gundu Rao, he had visited tiger tops in Nepal. When he came and he invited tiger tops to come to Karnataka and then gave a small property in Kabini to start tiger tops. As we all know that 80s there was not much emphasis on wildlife tourism, so they could not run it and they were under loss. And in 87 they sold all their shares to the Karnataka government, and government took over, and now, as I said, it's a company owned by the 3 different players. Today we are the only players who have got the exclusive rights on the wildlife tourism through a policy called Karnataka Wilderness Policy. That's how most of the activities in Karnataka are run through jungle lodges. We also got in the process a lot of awards. And state recognized this as one of the industry and company, and then gave the Ratna Award, which usually given to the industries in the state who perform some of the excellent works during that year. As we all know, this ecotourism is we have this promoting the ecotourism activities like wilderness tourism, and basically trekking and camping also part of our activities. In Karnataka now we have 24 properties spread from the extreme north, that is Bidar, in the scrub jungles, to the western Ghats, and also we have somewhere in the eastern Ghats in Ballari. I'll just quickly go into some of my properties. This is Bannerghatta, very close to Bangalore city, just an hour's drive, and then we have the wildlife safari and butterfly park and zoo, and then this is our typical structures, log huts, and then the tented accommodations. And we also have this something called Golghar. Golghar is our brand, like kind of an associated jungle lodges. Basically, it's a dining area which is having a circular structure, and we have some conference facilities, meeting, where people can come and then have some small meetings, get-togethers, and also the events. This is Galebore. This is close to the Kaveri River, and then it used to be a fishing camp in the past. Now, after having declared as a wildlife sanctuary, we are not doing any fishing activity, but still attracts a lot of tourists. Bhimeshwari is another beautiful nature camp, which is close to, again, Kaveri River. You can see the river Kaveri, and this also attracts huge number of guests because it's just 2.5 hours drive from Bangalore city. Kegudi is located right in the tiger reserve, which is the BRT tiger reserve. Part of the area is notified as a tourism zone. In that tourism zone, this particular nature camp or our resort is located. And we have no boundaries. Your tents are just located in the forest area. And here people come to enjoy the beauty of the nature and just for birding. Bandipur is tiger-based safari, tiger tourism-based safari lodge. And then it was KSTDC property we have taken over, and then it's being run as a tourism resort. It was earlier a KSTDC property, now we have taken over. This is our star property. Actually, out of total revenue, I get 20% of rather 30% of my revenue comes from this one property. That is almost like a 20-25 crores comes from one property, that is Kabini River Lodge. This was the one which we started earlier. We have some different categories, like from tents to the Maharaja cottages. We charge a bomb actually. In Kabini, everybody for person per day, we charge 16,000 rupees. But still today, my property, even if it's a weekday, I'm running 98%. That's the occupancy rate. And usually what happens in government sector, government properties are given out to the private enterprises. Today, private people have come forward to give their property to us. This is one such example. King Sanctuary is a private resort. He was running under loss. He has handed out to us. Now we are giving him profit. We are not only making profit for ourselves, we are also giving him profit. This is Dubara Elephant Camp. This is very close to the Coorg, that is Madikeri. And then this is again located by the side of the Kaveri River. And we also have the elephant camp. So main attraction is the elephant camp, and of course the Coorg has its own beauty. This is a typical our dining hall and then the cottages. This is another very picturesquely located resort. It is in the backwaters of the Bhadra reservoir,
and that's a part of the Bhadra Tiger Reserve also. This particular property also attracts huge number of guests, and every cottage has a view of water body. Sharavati Adventure Camp, it's also located by the side of a water body. It's like a balancing reservoir in the next close to the world famous Joke Falls. We mostly indulge in water sports activities. Devbag is the only beach resort as on date today with us, but we are now, with the relaxation in the CRZ norms, we are going ahead with few more properties by the side of the beach. Beach related activities only. Then Om Beach Resort was a fisheries department, had some structures, 4 buildings, residential buildings given to us. Now we have converted that into a resort kind of thing. Though the Om Beach is a kind of, says that it's close to beach, but it is not that close to the beach. Here we mainly indulge in wellness tourism and the temple tourism. Kali Adventure Camp is located by the close to the Kali River and also Kali Tiger Reserve. Here our main activity is rafting. This also attracts huge number of crowds. Rafting alone gives us 2 crore rupees. Just one activity called rafting gives us 2 crore rupees annually. This is old magazine house. This is a very niche area. Means we have only 4 cottages and 1 dormitory. You won't believe this runs full only because the bird life is so rich, and then it's quite easily visible. People come with big cameras and lenses, stay there for days, weeks, only to photograph birds, including Malabar trogon, which is endemic to this area. This is how we have created a hide, and you will find them running full. This is a Falguni River Lodge. Is a lodge basically not close to the Mangalore city. It was actually the property of a district administration given to us. Now we had leased it out. That fellow is not running properly. I am taking it back soon. There the activities mainly the science center. There is a zoo and other activities like this kind of traditional sports. Hampi Heritage and Wilderness Tourism. We have both here, heritage as well as wilderness. Sloth Bear Sanctuary is close by, and also we have the zoo. So mostly we take the guests to the Bear Sanctuary and indulge in the heritage tourism. This is our UNESCO World Heritage Site, very close to this property. Black Buck Resort is the extreme north, that is in Bidar. We have this plenty of black bucks there in the open lands. There we have created, and our clients are mostly from Maharashtra and Hyderabad. This is another area where we have the fort, Bidar. We show if the clients are staying there for 2 days, we take them for heritage tourism also. Bhimgad Adventure Camp is located wrongly, I would say, because it was thought that the golf course is close by and the people who come for golf will stay with us. But unfortunately, it is close to the city as well, 13 kilometers from Belgaum city, and hence I am not running that well in this particular property. Now we are working on how to convert that into a profitable venture through other activities. Kembangundi Hill Resort was run by the horticulture department, but we have taken over last year. They were running under loss. Last year we have taken over, invested 21 lakh rupees, and we made 2 crore business last year. As I said, Jangalogist itself is a brand. Somebody other day on minister, and then some committee came to Kembangundi and they were asking the visitors there. They said, sir, since it is with the Jangalogist, I'm sure they are going to make it the best. So that's what the Jangalogist is all about. And because of that name, Jangalogist, which has earned over a period of time, whenever any property is not running properly in the state, they will hand it over to the Jangalogist. Though this is not my core area, so now 2 hotels are also with me. Now third hotel has also been given. It's a Hotel Metropole, which is right in the Mysore city. Nothing to do with wilderness or ecotourism, but because it was not run properly by the other agencies, handed over to us, and we are making good business. There's another property near KRS Brindavan Gardens, close to the, not only close, it's just right in the Brindavan Gardens. One of the beautiful properties that has also been given to us, and then we are doing a good business out of that. This was the recent one, which is given to us. ITDC was running under loss. You won't believe we have taken over recently, and then we are showing the profit. It's now under profit. However, the government has some other things in its mind that they want to give it to some
big players anyway. But whatever property is given to us, we have shown them that we can really do a good business. We were always blamed that, jungle oasis resorts is only for rich, not for the common man. So we have taken over some of the camps from the forest department that like tented accommodations, some 10 to 12 tents, and that we charge around 1,500 to 2,000 rupees. And then they are now a big attraction among the youth and also the other families like Sita Nadi. Most of them are located by the side of the sanctuaries, some of the fantastic locations actually. These are some of the nature camps. These are some of the activities which we indulge in. We have a huge social media presence, be it Facebook, be it Twitter or Instagram. And we also have our own JLR Explorer blog, one of the finest blogs for natural history articles on, from Karnataka at least. This is my staff sense. This, as we said, ecotourism is for the people, especially for local people. Most of the people out of 851 whom we have employed are the local boys and girls. And that's the core strength we have. This is my overall financial statement. In spite of COVID, we really made some good business, and only last year we were under loss. That was also notional loss because our interest was not taken as an income. That's how we had to show officially the loss of 97 lakhs. Otherwise, we made good business. I have one more small clipping of 2 minutes, last video, and then I'll close with that. This is wild Karnataka. Thank you so much. What a way to end the famous David Attenborough. Come be born again. Wonderfully done. You really worked as a true ambassador for the ecotourism, showcasing the ecotourism activities of Karnataka, Mr. Manoj. Wonderfully presented. Now I'll request Mr. Prashant Singh Baghel, an engineering and graduate, head planning vertical of MP Tourism Board as joint director. Thank you, sir. Respected Chairperson, Madam Dubey, respected Co-Chairman, Mr. Acharya, and Mr. Chaudhary, respected other panelists and other delegates. I am Prashant Singh Baghel. I am looking after planning as Joint Director Planning in Madhya Pradesh Tourism Board. Actually, I am keeping focus on eco-tourism activities and making it how we are trying to make it sustainable and responsible.
First of all, I would like to mention the organizational setup of MP Tourism. There are two main organizations working under Department of Tourism. One is MP Tourism Board. Chairman of the MP Tourism Board is Honorable CM, and Vice Chairman are Secretary, Chief Secretary, sir, as well as Minister Tourism. And Principal Secretary is Managing Director of MP Tourism Board. It is not-for-profit organization and involved in policy making, inviting investment promotions, planning, rural tourism, marketing, etc. And another organization is commercial organization, that is MP Tourism Development Corporation. And this is involved in looking after hotels, operation and maintenance, as well as boat clubs and other commercial activities. As we are tiger state, and we have beautiful national parks and wildlife sanctuaries. Hence, there was a flagship scheme of Ministry of Tourism that was Swadesh Darshan scheme. And looking at our beautiful national parks and tiger state, it was very obvious to go for वाइल्ड सर्किट। जो भी मध्य प्रदेश में आता है वो सबसे पहले टाइगर देखना चाहता है, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इट इज़ अ थ्रेट। जो टाइगर नहीं देख पाता वो कहता है कि हमारा आना ही बेकार हो गया। दैट्स वाई वी टुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड। हमने उनसे तुरंत ही कोऑर्डिनेशन किया and we started preparation of this wildlife circuit, and we selected 5 national parks, prominent national parks, as well as 1 zoo safari for intervention. And with coordination of ecotourism board of MP as well as entire forest department, we identified the main components to be included in the wildlife circuit. The main motto, main emphasis was to create ecotourism activities around national parks. These are some components created. Actually, after getting approval of the project, we shared our responsibility. Forest department opted some components to be executed, and MP Tourism selected some components for execution. These are booking office Tala, which now it is being operated and run by forest management, and canopy walks, log huts at Panna National Park, created under this project. We created beautiful forest information centers, machans, cafeterias. This is a video of information center at Panna National Park. Even in Sanjay National Park, Forest Information Center, there is a video showing entire corridor of elephant, how they are arriving in Sanjay National Park and how they are using corridor for going to Bandhavgarh National Park. Some components executed by Forest Department.
as I was talking about some threats, सब वाइल्ड लाइफ तो देखना चाहते हैं, बट अगर अनप्लान्ड डेवलपमेंट अराउंड वाइल्ड लाइफ हो गया तो क्या होगा? इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन किया है, बट प्रोविजंस आर लेड डाउन इन नोटिफिकेशन. वी डोंट हैव master planning of that eco-sensitive zone. And eco-sensitive zone is supposed to be work as shock observer between boundary of national park as well as urban development. But how anybody, any responsible person, competent authority can give permissions if they don't have any master plan of that, land use plan? And that's why we took the responsibility and started preparation of eco-sensitive zonal master plan. The one thing more, these are some features regarding eco-sensitive zonal master plan. Satpura National Park, we submitted the proposal to UNESCO, and it has been included in tentative list of UNESCO World Heritage Site in natural category. Now, we are doing it with Wildlife Institute of India. Former director is with us, and during his tenure, the project was started. And now, Wildlife Institute of India has started preparation of nomination dossier to be presented to UNESCO. These are the 6 clusters we divided entire national parks of Madhya Pradesh and started preparation of zonal master plan. Some very interesting maps I am going to show you. This is example of page, land use and land cover map. This is proposed land use and land cover map. We identified recreation zones, ecotourism zones, camping sites, and now anybody can give permissions according to, it is entirely prepared on the basis of notification, and monitoring committee can give permissions for that. This is tourist activity around Sakta cluster. These are the safari routes proposed around Sakta cluster of Pech National Park. These are some ecotourism based activities. This is very interesting. I wanted to just mention it. This is dark sky, Bortles dark sky scale. If sky is darker, then it is rather pollution free. The Pech National Park's sky is at scale 3, which is very suitable for stargazing, and it shows lesser pollution there. Another big project is that is Eco Circuit. These are some components. Sir, just I am running it very, very fast. This is Jal Mahotsav, well known at Hanumantia, Indra Sagar Dam. These are some ecotourism activities developed through private partners. 16 boat clubs are running by MP Tourism. We are the competent authority for providing license to private for water tourism activities. Just some activities. Social media presence. Thanks. One more thing I just wanted to mention. WTO has mentioned, we are just involved in making our tourist destination safe for women. And it is WTO has identified this project, and they
kept in category of wants to watch category. And another thing I just wanted to mention, as taking community in as partner, we are providing trainings to local community, and 100 villages are identified for preparation, making home stays around wildlife as well as other tourist destinations. Thank you very much. Thank you, Baghel Saab. Particularly, I like your events regarding the stargazing, probably reflecting the pollution-free environs around the national park. And the way you mentioned about 100 homestays, so we'll definitely work on a project with you. We'll talk to you about this because we want to promote homestays in our state as well. Thank you very much, Baghel Saab. Our next panelist today is Mr. Anil Kumar Sahu, an IFS officer of the 1990 batch. He is presently the Managing Director of the Chhattisgarh Tourism Board. And he has held various postings all along. He was the Commissioner, Department of Culture. He was in Ayush and the department as well. I had requested for a small, brief from the various panelists. कि मुझे थोड़ा सा brief आप दे दीजिएगा. So what I got was a long biodata from Mr. Anil Sahu. So I told him, since he's my batchmate also, I can take the liberty. I told him this is not for a wedding. So we all are going here. I'm one of the panelists. So just in lighter sense. Anil. Respected Chairman, esteemed dais, senior officers, colleagues and dear friends. So, I'll first touch upon Chhattisgarh tourism. And let me clarify that we don't have an separate ecotourism board in Chhattisgarh. Earlier, we had envisaged to set up such a board, but since Chhattisgarh, more than 50% of the state is forested, around 50% state is forested, so it was a kind of overlapping thing that came to fore, and that's why the idea of setting up a ecotourism board was shelved. Also, in the Chhattisgarh Tourism Board, since its inception in the year 2002, after the division from Madhya Pradesh, almost I think till now more than half of the officers manning CG Tourism Board are forest officers. So any activity that we undertake in Chhattisgarh tourism is in some way or other kind of ecotourism activity, and our resorts, our motels, hotels, they are also mostly spread across the state, and you'll find them on either on a riverbank or in a forested hilltop near a lakeside. So they are in some way or other, they are ecotourism sites. So this is what our USP is, the tribals of Chhattisgarh. We take pride in the tribals, our tribals, their culture, our cuisine. Tourism cannot be an abstract thing. When you talk of tourism, it's art, culture, tribal people, cuisine, festivals, textiles, handicrafts, everything. So I'll touch upon these issues very quickly. So Chhattisgarh, our capital Raipur is connected with direct flights almost with the whole of the country. You have easy access to the capital city Raipur. Now, the offerings that we have to, we give in, we adopt in our management practices. One is ethnotourism, religious tourism, water tourism, textile tourism, sports tourism, and there are many, as you see, medical tourism, wildlife tourism. We try to address all these in our management practices. MICE is meetings, incentives, conferences, exhibition. So we facilitate like this. This can be called a MICE tourism also. So जहाँ हमारे वैसे फैसिलिटीज़ हैं
we say host conferences, even weddings also, say workshops. So they can be called MICE tourism. Yes. Nice. It's very common in tourism parlance. Say I saw some snapshots. This is Indravati, say on the river Indravati is called Niagara of Chhattisgarh. As he said that UP also has a very beautiful waterfalls. So this is one of the most prominent waterfalls and which attracts people from all over the country. Yes, say that's in lean season. This is another waterfall in Bastar. Tiratgarh is cascading nature. I'm showing this because all these are in forested areas and they are ecotourism sites. And all the development works that we carry out here, either be a nature trail, say, or any other passenger amenity, tourist amenity, we get it done by Forest Department. This is, I can say, is a prehistory stalactite and stalagmite caves, and 3 more are there in Bastar. It's one of the oldest. This is what he boasts of the tribal culture. It's the Bastar Dasera, and as most of you must not be knowing, that it's the longest running festival, say, tribal ritual in the whole country. It goes on for 75 days, starts in the month of July and goes up to October. And it's state-sponsored. And these are some of the major destinations, tourist destinations, which are located, say, in, you can say, either near the forest or, say, in rural settings. Yes. जी अच्छा बीच वाला ओके ओके ठीक जैसे छत्तीसगढ़ I'll say this is a land of say harmony, all religions, all panths, they thrive here. First you see it's a seat of Kabir ji, and in Damakheda we have Kabir Panth, where Kabir Panthis they have their seat. And say Kabir Panthis from all over the country, even from abroad, they congregate here once a year. And the bottom one you see Sant Guru Ghasidas. You see the tower as it's a very fine example of modern architecture, and it's taller than what Qutub Minar is. मुझे प्रॉब्लम आप वहीं से नेक्स्ट करो अच्छा हाँ another ये tourism again is very integral and it can be integrated with say the archaeological sites. In our state we have around 56 sites, archaeological sites managed by state archaeology, and around 42 sites which are managed by the Archaeological Survey of India. And this is one of the say archaeological wonders, 7th century Lakshman temple. It's a Lord Shiva temple, but popularly known as Lakshman temple. And it's one of the very rare brick temples that you find anywhere in the country. How do you yes, eco-circuit, because as I said, tourism cannot be viewed in isolation, be it ecotourism or say urban tourism or traditional tourism. This is, as I said, is part of the Buddhist circuit. And again, Sirpur, as I said, this place Sirpur, you find the remains of say 7th, 8th century Buddhist stupas, Buddha viharas, and say ancient sculpture. So this is also, it's all close to forest. You have the Barnavara Wildlife Sanctuary very close to this place. And as I said, still there are many more stupas and say deposits waiting to be unearthed in this area. So it can be very well, say, it's of course an ecotourism site. And many, many activities, almost say any construction activity, any say urbanization activity, they're all restricted in these areas. So you can, they fall in the category of ecotourism if you say go for the mandatory definition. You see one of the say excavated areas. This is an say marketplace of the ancient era, and behind you see River Mahanadi. So these used to be a trade route and the ancient say it's Gupta dynasty. And you have around 10 more such excavated locations in this area. And
that's why Sirpur, say popularly is known as Nalanda of Chhattisgarh. And again, I said it's very close to Badmafara forest, and say when you have elephant population coming into these areas also. You see, it's 10th century Lord Shiva temple, and it's a precursor of the Khajura group of temples in Madhya Pradesh. And it's also in just in the vicinity of Voramdo Wildlife Sanctuary, which is a satellite sanctuary of Kanha National Park, you can say. Say now I'll say come to some of the say sustainable and responsible tourism practices that we try to follow in our management practices. You know, all the say almost 8 SDG goals, they address to tourism management in some way or other. And they can be, say like gender equality, empowerment of local people, clean energy, say providing employment to local populace. So we, by our management practices, we try to address all these so that it can be categorized as a say an address to the principles of ecotourism and also to sustainable and responsible tourism. ये तकलीफ दे रहा है हाँ नहीं कुछ ये मुझे बताना and these are some sport activities I skipped. Actually, that's a very important slide I missed. I'll just go back a bit. Kindly give me some. This is an example of religious tourism that we have recently embarked on. And in many states, including Madhya Pradesh and I think in Uttar Pradesh also, must be talking about Ram Vangaman Paripath. This is a religious circuit. It's not nothing to do with religion, but it's as you can see the say map of Chhattisgarh. It's almost 1,300 kilometers stretch, and it's believed that Lord Rama during his exile in forest spent considerable period of time in the forests of Chhattisgarh. So we have taken up development works in the areas. Almost 9 locations have been identified in the initial phase, and we create we have creating infrastructure for say passenger amenities, say temple upgradation or innovation, light and sound. So we are say putting up interpretation centers, and till now almost around 4 locations have been developed under these scheme, and it's entirely state funded, and we get some central assistance like soft loan to the tune of 30 crores we had got last year. Otherwise, it's totally centrally funded, state funded. Now you see some of the say creations that have come up, some of the say infrastructure that have come up in say Ram Vangaman Paripath. This one is near Raipur. The temple that you see is believed to be the birthplace of Mata Kausalya. Second, the deep stamp that you have say constructed is see the flurry of tourists there. That's the welcome gate. This is all in near Raipur, 20 kilometers Raipur. And this one is in Sivri Narayan. It's placed again in the banks of River Mahanadi. You see, Savari she fed say way to Lord Rama and Lakshman when they were in exile. And these are the one structure that you see on the left is Ramayana Interpretation Center, and on the right is the upgradation work that they carried out in a temple. Yes. Again, I won't enter into this, those say disputes, but yes. Particular area can be developed into a nice ecotourism spot. As I said, again, these all say out of these say 9 places, around 6 places are either in forest or in the forest fringe. So all the activities that you do here can be termed as ecotourism activities. And as a golf tourism, as in say urban areas, as near Raipur, I want say. Then water tourism. We say in Chhattisgarh, we have notified around 9 water bodies, and again these water bodies are
in forest areas or in the forest fringe areas. And say we have come up with water tourism, water sports guidelines, and around 4 locations they are already operating water sports and adventure sports. I'll quickly go through it. This is one of the very the largest water body in Chhattisgarh. It's around 250 square kilometer in the stretch. So the Hasdo Bangwa, and you see all around is forests and forested say locations. So we plan to, we are already working on say operating a day cruise in this area, and tenders are already on, and shortly we'll be operating a day cruise in these say backwaters of Hasde Bangwa River. And sports tourism is not very important. And say, as I was say mentioning, on the left side is the Chitrakot waterfalls. Recently, we have many filmmakers visiting this site, and many film shoots have already taken place, and many more are in the pipeline. So, film tourism is also say getting say openings in our ecotourism sites. And on the right hand, you see is a transgender and see espoused our say brand campaign, our branding of Chhattisgarh tourism for quite some time. She is a trans queen. So that again indicates our commitment to gender equality and gender indiscrimination. And you see one of the film shoots going on is in Chitrakoot only. The famous action director Parvez Ahmed, he was shooting a sequence there. And this all happened with close cooperation and assistance of the local people, local tribals, local samitis who helped out in these shoots. And astrotourism, moonlight camping, again is a ecotourism activity, as our say colleague officers from Madhya Pradesh was say presenting. You see camping place near Chitrakoot, and night sky watching, say stargazing experiences. So we work closely with NGOs who provide say infrastructure for such activities near our ecotourism sites. Yes, it's almost, I'm nearing the end. And local cuisine, we have an Institute of Hotel Management, and in this month we'll be having our monsoon food festival in almost all our resorts in the month of July, and we'll be involving this say students of IHM who will be later absorbed in the services of our tourism site, say motels and hotels also. Again, MICE tourism, I said, this is one of MICE activities. And during COVID, our state hosted many such say events, and MICE tourism took place in a very big way in our state. Then medical tourism is a very thing I'll say. Right one is Satyasai Hospital, where you have heart say care facilities are provided absolutely free of cost. The Malko Medical Center, you get persons from all over the country who come for say their treatments here. It's a one plastic surgery. And one thing I'll tell you that we are say in talk with these hospitals, because the patients of these hospitals they need say recuperating time and say convalescing time. So after treatment also they need to stay Anil, for some time. Let's stick to the time schedule, yes. please, because So, we are deviating we are from the main tourism, and probably we're going into heart surgery. This so is the somehow last it is slide. not, somehow I don't know, personally feel it is not. Okay. And this is wellness tourism. Because So we are in talks with say these hospitals to house their patients for say recuperating and say getting well in our resorts. So I'll just skip the slides. Yes. कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बस दिखा दूँगा. Yeah, हो गया थोड़ा. And these are policy guidelines. Say, I think I'll have to stop you there. Yeah, I'm through. Because we were talking about ecotourism, and I think we got so tired we went to medical tourism. I hope we don't do that. No, actually, our ecotourism sites provide ideal No. Thank you, Anil. I hope the Honorable CM will be proud of you. And you linked the sites very well, the eco sites, and you also spoke about the religious tourism, which is an important component. And what do we think beyond a particular site? How do we attach our ecotourism sites? For example, a tourist is visiting to a particular temple. Can we really, get him to an ecotourist site?
Is he that, sensitive? So these are many things which have to be looked into. How do we tap that particular tourism? For example, Agra is catering, ma'am, to around 12.5 lakh tourist Indians and 5.5 lakh visitors, foreign visitors. Lagbhag 4,500 crores. This was just the day COVID started. This staggering amount. Even if we encash around 2% of those tourists, the high-end foreign tourists, it's a big amount for the Chambal Safari. We have 9 circuits. In UP, we have 9 eco-tourist circuits. So the Agra Chambal ecotourism circuit can be really, with that kind of sensitive tourism, who are able to pay also. So it can really, we can encash on that. We have to, ma'am has got a flight. So I'll request our chairperson, ma'am, Mamta Sanjeev Dubey, ma'am, to, just give us a small brief and her opinion. She has been instrumental in setting up UP has got our own forest ecotourism policy. That was made in 2014. I don't know probably which state does have it, but UP is the only state. And ma'am was instrumental in its creation along with sir also. So I'll request ma'am to just take over because aapka flight bhi hai. Thank you. Thank you, Sunil. It has been a very good session. I mean, we had very good insights from JLR and from Mr. Baghel as well as Mr. Sahu. One thing that I found missing was when I look at ecotourism, I look at 3 components. There is a tourism destination, there is a tourist, and in between there is a community that is somehow directly or indirectly either dependent or linked to this destination. Now what I see missing is that community. Of course, you have shown us a photo of a transgender model and you talked about 100 homestays, but 100 homestays in a state like MP. No, it's not 100 homestays, it's 100 villages. Okay, 100 villages, but how? 10 to 20 multiplied by 100. Fine. I mean, that is a good start. But I personally feel that when we are talking about ecotourism, the 3 components are important. And the 4th component is low impact. Because when this whole concept of ecotourism came about, we all have gone through the definitions. Ecotourism essentially means low impact, low carbon footprint. Now we are talking about big ticket cruises and all that. I do not know how we classify them as low impact. Because we were also told that you run a cruise in Girva River, a 3-deck boat, that does not qualify as ecotourism. So when we are talking about yes, JLR, of course, I mean, that is a good idea. But again, that is a very high-end tourism. And I would like to ask you, how do you balance out or resolve this conflict of ecotourism being a non-forestry activity, Supreme Court issuing guidelines against ecotourism, and you having ecotourism facilities in the forest area? So if you can give me that. We had that issue till recently, ma'am. Now the government of India has given a clarification stating that temporary structures established by the government in the name of ecotourism are not non-forest activities. Okay, so with that clarification, there were a case against the jungleologists in the court also, High Court. Court was also dismissed. And as far as the impact is concerned, madam, I said I am not running 100-room hotels. I am only running 10 tents or for that matter, 12 tents or maximum 20. And where there is no forest area like Kabini, there I have something like 36 rooms. Otherwise, most of my camps are 10 to 12 rooms. That's all. Right. So what essentially I would like all of us to look at is that when we are talking about ecotourism, our main focus should be the forest area, its conservation, and the community that is dependent on this forest area for its various needs. How we integrate the requirements of both, and then we present an experience to the tourist also, without hampering any of these 2 elements in any adverse manner. So that is, for me, is ecotourism. Because ecotourism is not just tourism to a wild area. It is not tourism to a wildlife area, seeing a tiger. As you rightly said, the tourist says, oh, tiger to dikha nahi. Let us not market the tiger. If we have to market, let us market the experience of being in a forest. Around that, you can devise a number of activities as we all are doing in our own way. And with that, we can include culture and we can include religion also. Religion, not as religion,
but religion as part of our culture. Because religion and culture are not very separate from each other. I mean, whatever we call culture today also has some religion in it. Whatever we call religion also gives us some of our culture. And when we talk about culture, we are essentially also showcasing our local communities, our tribes and everything. But for me, ecotourism would be successful if the local community is an active, not only an active participant in the sharing of benefits, but also an active participant in decision-making processes. How many homestays do they want? How many guides do they want? What kind of activity do they want to get involved in? That is also important. And I think in UP, when we conceived ecotourism, we only conceived with that idea in mind. And that is why maybe we have been slow, but we have made some progress and we are going ahead with that. Our nature guides are taken from around the villages. Our safari operators are taken from around the villages. And that is very, very important. So I believe that our next speakers or all other speakers will be helping us in that. Thank you. Thank you very much, ma'am. Ma'am, with your permission, Anjani sir will now chair the session. Janu, up, ma'am. Thank you, ma'am. Our next eminent panelist is Mr. Ashwini Kumar Pandey. He's an engineer by education and is from the 2016 batch of the IAS. He was Joint Magistrate and Chief Development Officer earlier, and present he is the MD of the Uttar Pradesh State Rural Development Corporation. Thank you very much, respected Chair, esteemed panelist, and the honorable gathering. I have joined as MD UP State Tourism Development Corporation and Special Secretary Tourism very recently, so I am very new to the sector and the area. So I will not take much time. And to begin with, if we see, as since the morning we have been going through many discussions, and we see that post-pandemic we see a trend that people are going for in more close to natural area. वो जाना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से दूर natural area में अपना vacation मनाने के लिए. So we have seen a trend that people are moving towards lesser known destinations, away from the hustle and bustle of the cities, into the nature, and they want experiential tourism. So there has been a CAGR of 14% towards the ecotourism sector. So when we had, as Madam has just told about, what are the guidelines on which we have to base or develop this sector? If we see, the ecotourism has to be developed as per scientific planning and rational planning. It has to be based on that. We cannot just rush in a way where we are bringing more and more tourists into the ecological or eco-fragile zones. We want to work on a planned basis and considering the carrying capacity of the natural resources, nature and our forest resources. And definitely we have to involve our local community because they are the centerpiece of the ecotourism sector. Second is we have to follow scientific ecotourism zonation and develop our ecotourism products or tourism activities or sites as per that zonation zone policies. We have to resource mobilization and community. We have to ensure that local community is the key stakeholder. The framework shall ensure that equitable benefits should flow to local community from ecotourism. As Madam just said कि हमको ये इंश्योर करना है कि जो हमारा लोकल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो उस फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, जो उस नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करता है, उसको हम सेंटर पे रखें, उसको मध्य में रखते हुए अपने सारे एक्टिविटीज़ को, अपने साइट्स को उन्हीं के बेनिफिट्स के हिसाब से उनको डिसीजन में लेते हुए हम डेवलप करें. Ecotourism site development, we have to only according to the ecotourism zone.
If we have decided that this particular zone is eco-sensitive and we cannot allow human interference or particular activity in that, we should not allow that, or we have to prohibit that. Next is we have to work in synergy between the stakeholders. All the stakeholders which are involved in the ecotourism sector or activities, they have to be work in synergy. It becomes, for example, if the departments between tourism department, forest department, center and state, local community, panchayat, tribal community, all have to work in synergy. As well as we have to promote ecotourism entrepreneurship. For example, the players which are coming with the products or activities, they have to be sensitive to our ecological aspects, ecosystem. They have to be ensured that they are promoting responsible and sustainable tourism, and not just running behind bringing more and more tourists for economic gain. Definitely economic gain has to come with it, and employment generation for the local community has to come with, but we have to tread with caution in this sector. If we talk about the tourism sector of UP, we see that in 2019, pre-COVID era, the state was ranking #1 in domestic tourist visits and #3 in foreign travelers. And definitely we have seen a hit in the sector during the COVID. If we talk about what Uttar Pradesh has to offer, we have मेजर रिवर्स, बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं, गंगा, जमुना, बेतवा, चंबल, जिसमें कि हमारे इको टूरिज़्म के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मेजर लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जलाशय हैं, जहाँ पे कि इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट के साथ इंटीग्रेट करके इको टूरिज़्म को बढ़ाया जा सकता है. डेफिनेटली वी हैव ए लॉट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑल्सो, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व. And we have defined also 9 eco-tourist circuits have been already defined in the tourism policy also. Western Wildlife Circuit, or for example Ganga Basin, Center Ornithology Wetland Circuit. All these we can take up and develop further. If we talk about in general the tourism policy of 2018, we have 12 circuits along which we give different benefits to the investors and stakeholders. For example, we have a capital investment subsidy for developing wayside amenities, dhabas, motels, hotels, tourism resort, wellness tourism resorts, or eco-tourist camping sites, caravan tourism, wellness tourism. All these benefits government is giving under 2018 policy. As well as along with that, we are also providing interest subsidy, stamp duty, giving development charges, other benefits also we are giving. And we are also under the process of coming up with the next policy for 2023, and we are going to be circulate that policy very soon, so that we can get the feedback from all the stakeholders. If we explore the possibility of ecotourism is definitely a major important part in tourism policy of the state. We are recognizing ecotourism primarily as an activity which is undertaken as the forest area, protected and non-protected area. Here we have to work in the synergy with Department of Tourism as well as the Forest Department, so that we can develop amenities and infrastructure around forest, so that we can promote ecotourism. As we have discussed earlier, we have to build packages or design packages which involve different kinds of tourism. If, for example, UP has a lot of potential and has seen a lot of tourists visit because of its spiritual and religious activities. So if we design our products by mixing these different sectors of the different niche areas, then we can promote tourism sector in the state. With that, I thank you. Thank you very much. Thank you, Ashwini Pandey. Two things which he clearly pointed out was the basic guiding principles of ecotourism. Whenever we conceive a project based to ecotourism, we should keep in mind those guiding principles. Otherwise, the project will go out of hand and it will become a routine tourism project. Number two, in the end,
Ashwini ji pointed out that basically we look for gains. But you see, at the long run, in the long run, gain is not the only option. It is a fallout. It is basically a fallout of the event which you're organizing. So it should never be kept in the mind that gain is your main motive in an ecotourism activity. This is what I personally feel also. Thank you, Ashwini ji. Now, we have with us Mr. Manish Mudgal from Make My Trip. He's the Vice President of the group. And over the last 17 years of work experience across banking, insurance, and hospitality, he has played an international role in building Make My Trip from initial years. So we are very lucky to have Mr. Mudgal with us. Mudgal ji, please. Thank you. Good evening, everyone. Hi. Am I audible, loud and clear? Yeah, perfect. Perfect. Thank you. Thanks a ton. Perfect. Thanks, Uttar Pradesh, One Vibhag to give for allowing us to come and present, talk about GoMMT as an organization, what we are bringing onto the table for tourism, ecotourism, and otherwise. So, in next 5 to 7 minutes, that's a timeline given. So, I'm going to cover a couple of aspects to it. What are we bringing to tourism, and how can we play a vital role in the new scheme of things, which is ecotourism, and some bits of UP, where are we headed in UP specifically, and then I'm going to talk about CSR activities, which we as an organization have initiated to build ecotourism and sustainable tourism. So with that note, moving on to, this is something which I have covered. So talking about GoMMT as an organization, we proudly call ourselves a travel super app. So we cater to all kind of travel requirements out there in the market. It starts from air to accommodation, which is hotels, and now alternate accommodation, which is, so to say, eco-tourism comes into the play. And then we have holiday packages. We do provide ground transport, which is bus, cab facilities, and we also solve for railway requirement, on our funnel. All these options are available. The beauty of, being with us or being on our platform, our platform attracts 69 million unique, shoppers coming on to us, out of which 45 million transact with us. So that's the kind of number. On an average daily basis, there are some 85,000 odd accommodations which we sell on our platform. So that's the kind of brand strength we have. 177 million app downloads. That's our brand, and that's what we do to solve for tourism. Moving on to the new initiatives, new development in recent past, which we have been able to do. Till 2019, or maybe say pre-COVID, we were known as a OTA online, platform wherein you go get products. So, but within the pandemic era or COVID era, what we realized we need to solve for the Bharat, the long tail of India, and to reach out to that level, we may need to dial up our non-B2C channel, which are more B2B in nature. So what we started doing, we started dialing up our My Partner business, which is to work with small agent networks out in the small towns to cater to their own client requirement. Basically, what happens, the agents struggle to get the right kind of property for their clientele. And on our platform, in the previous slide, I don't think I mentioned, but yeah, just to tell you that we have 80,000 plus accommodations listed on our platform to solve for Indian consumers, basically people searching for accommodation in India, and for overseas, some 7 lakh plus accommodations. So that's the kind of, accommodation solve which we build. So My Partner is a channel which we, build to solve for offline piece. Then again, to solve for Indian consumers traveling overseas, GCC is the new circuit which we have been dialing up. Corporate requirement, we invested quite a lot to solve corporate requirement on MyBiz. Then some affiliate programs, brands like Amazon, Indigo. All these players are using our hotel feeds. That's what we have been working on. These are some
or tourism partners, tourism boards which are associated with us. Few names have been, are in pipeline. We will be adding very, very soon. So these are our partnership alliances. Talking about Uttar Pradesh, 267, census cities, out of which we are already having some or the other, or we are doing some meaningful numbers in 129 cities. So that's our, coverage or depth in Uttar Pradesh, so to say. Moving on to the traffic numbers, which is, I would say this is something which should get attention from all of us. You see the bar graphs, these are pre-COVID and month-on-month growth numbers. When I say Y03Y means pre-COVID 2019 numbers. And these numbers have been growing for top cities and top 2 emerging cities. That's the way traffic is trending for Uttar Pradesh on our platform. This is the way recovery numbers are, and there are month-on-month growth trends. So which is quite promising that wherever we build ecotourism, wherever the new travel opportunity comes, people are already searching for it. It is just that it has to come onto the portal. Okay, moving on to how can the brand building work with us, what all we do to solve for unseen, unheard destinations, which are like, ecotourism specific destination, because all of this, most of it will be new destinations, which people have not heard about. So these are the avenues available with us, wherein you can brand your product, you can, show it to the consumers. Like we have traffic, but yes, how do we promote it? On our website is by sponsored listing, by overall packages, offering some marketing avenues, again, some, detailing of it on what do we do on app, what do we do on web, and so on and so forth. So this is some images around it, like it is clearly coming out. We promoted gateways near Kanpur, you see in the middle screen out there, and then we classify, specific, and maybe, yeah. So this one is to do with Dubai tourism. Dubai tourism did a campaign with us to promote Dubai tourism in India. So all these options, facilities are available. That's how we market. Again, some campaign which we have done for Dubai tourism with, bank alliances and all. So that's how you can promote, and not only on our website, we do some social media buzz on Insta and on other social media platforms. So this is one. Maybe I'll quickly run through all of this. Then what do we do is we also do mass mailing activities given the client base which we have. We we kind of share that this is the new destination and you must explore if you want to, with some imagery. And this is the channel which I was talking about, my partner. We have 30,000 plus travel agents across country solving for, let's say, somebody coming from southern India to North India. He may not be aware of, Dudhwa National Park. But yes, the travel agent network may be able to solve because we are supplying rate inventory and we are building up this business. So my partner is one among those. Now talking about what Make My Trip Foundation or CSR initiatives around ecotourism, what we have been able to solve, and this is a continuous journey. We are doing quite a lot around it. 2013 is when we started and where we have reached till 2020. I'll quickly run you through that also. So small little steps to solve for, some employment and being a sustainable tourism. What we did, these are the activities from Ladakh to Andamans and in various parts of the country we have been solving some or the other way. That's where we have been able to reach so far. We did, some beach cleaning activities, and in some locations we did solve for water waste management. We did install from our foundation money, Make My Trip Foundation money, we got 3 water ATMs installed and we made it sustainable. I'll show you maybe this picture. So this has been allocated to the population based out of Andamans. They are running it. They ensure the washrooms are neat and clean. Single waste plastic is no more there. Those kind of initiatives have been taken. All our employees went there. They did beach cleaning activities.
and then similar other projects in, various other part of the country. Yeah, sorry. Just running time. Sorry? Running time. Oh, yeah, okay. Okay, perfect. And maybe Ladakh, another similar project, we kind of build this at, foundation money investment and give it to the localites there to run. And so then the foundation education scholarship for kids. So similar initiative, that's some eye test campaign for ground transport and all of it. So, and way forward, thanks for this opportunity, whenever you are coming up with new properties across, there is a well laid out plan, onboarding to promotion to launch, to creating visibility, digital marketing, whatever I have covered. There is a concrete plan, and we are happy to solve for your visibility and business requirements. Thank you. That's that from me. Thank you, Munish. Wonderfully, we just all came to know what exactly is the inside of working of Make My Trip. Probably if you add some sites, these are the ecotourism sites. These are ecotourism destinations, eco-safe sites. Unme aap, for example, your Make My Trip, just add those sites. If somebody types on it, eco-friendly sites in India. Yeah. So that comes up, and you just try to promote those particular sites, offer something more with those sites. Yeah, so do you have a fixed data for that? How do you classify? Are you working with the state governments for that? No, that's the initiative which we are getting into. So, yeah. Specifically banners to be created, all those options is what I was trying to show you. Absolutely. That those options are available if you want ecotourism to be showcased. Because that will help us in a very big way. And number two, as the tourism rush which you had pointed out, you see post-COVID, now that is a rush which is occurring everywhere. Now probably one of my colleagues had gone to Ladakh, had gone to Goa last week. That is in the form of tourism which is known as revenge tourism. Yes. You see, people are nice and fully fed up after COVID, and they're least bothered. When I was in Goa, I saw around 100 kids jumping in the pool without any basic safeguards. So this is the kind of tourism which is totally unsafe. But anyways, thank you. Now we have with us Mr. Puneet Chaturvedi, who's from the Extreme Adventures Bhopal. He's the director of this group. He started adventure sports in 1999 and started first time commercial parasailing in India. In Madhya Pradesh, sir. In Madhya Pradesh, I'm sorry. हॉल में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत, मेरा अभिवादन। एक्सट्रीम एडवेंचर ने जब 99 में फर्स्ट टाइम पैरासेलिंग स्टार्ट किया, उस समय पर काफ़ी मजाक बना मेरा कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, शायद कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी भी या नहीं। लेकिन आज 23 साल के सफ़र के बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने अपना काम बखूबी निभाया और पर्यटकों के लिए एक अच्छे साधन उपलब्ध कराए। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, उसमें जो है मेनली ये 99 से मेरा अभी तक का सफ़र है, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ भी मैंने काम किया, इको टूरिज़्म बोर्ड के साथ भी काम किया। इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी और स्कूली बच्चों के लिए भी हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। और अब हम लोग जो कैंपिंग करते हैं वो मैक्सिमम वन क्षेत्रों के आसपास ही करते हैं ताकि उसका एक इम्पैक्ट रहे। प्लस जो कैंप फायर होते हैं, ख़ास तौर पर कैंपिंग का एक बेस तैयार करने के बाद, दिन भर एक्टिविटीज़ होने के बाद, पहला इन्वॉल्वमेंट जो होता है वहाँ के स्थानीय छात्रों का होता है, स्थानीय लोगों का होता है, जिनसे हम लोग खाना बनवाते हैं और उसके बाद उन एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं ताकि वो उन चीज़ों को समझें और उसके बाद इन्वॉल्व भी हों। क्योंकि हम लोगों का एक समय के बाद कैंपिंग करने के बाद सारा माध्यम उन बच्चों के ऊपर आता है जो स्थानीय हैं और उन्हें ही आगे काम करना होता है। रात का समय जो हम लोगों का कैंपिंग का होता है वो होता है कैंप फायर, जो पर्यटक भी इन्वॉल्व होता है उसमें, साथ में उन पर्यटकों के लिए स्थानीय लोक संगीत, लोक वाद्य, इन सब का जो है इन्वॉल्वमेंट इसके साथ में रहता है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक रोज़गार का साधन भी है। और उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी वो लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। जब प्रशासन अकादमी के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप रखा भोपाल में,
और वहाँ से पचमढ़ी लेके गए थे उनको हम लोग। और उसके बाद जब उन लोगों को हम लोगों, चूँकि सभी लोग शहरी थे, जंगल में जाने के बाद जब पूछा गया कि भाई इसमें से इमली का पेड़ किसने देखा है, जबकि सभी बच्चे इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, किसी ने हाँ नहीं बोला। जब उनको बताया कि आप इसमें से इमली तोड़कर खा भी सकते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने उसको इन्वॉल्व किया अपने आप को, तो उन्हें बहुत आनंद आया। पानी पीने के लिए हम लोगों ने उन्हें अंदर मिनरल वाटर की बोतल्स अवेलेबल नहीं कराई थी, उनको ये बताया कि भाई जंगल में आप पानी को कैसे सर्च करते हैं कि आपको अच्छा पानी कहाँ मिल रहा है जिसको आप ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हैं बेसिक नॉलेज की होती हैं जो सबके काम आती हैं। ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें अब ये लैडर वॉक है, ये बच्चों के अंदर फियर कम करने का है। और इन एक्टिविटीज़ को हम जंगलों में नदी पार करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब गांव में आपदा आती है उस समय यदि यहाँ का स्थानीय आदमी ट्रेंड है तो उसकी प्रशासन के ऊपर से अपनी निर्भरता जो है वो कम हो जाती है, और वो स्थानीय लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को बचा सकते हैं। पैरासीलिंग एक्टिविटी, यह भी एक बच्चों के अंदर से हाइट फियर कम करने का माध्यम है। और बच्चों को हम लोग जिस तरीके से ट्रेंड करते हैं, हम लोगों का जो सबसे जूनियर मोस्ट है वो 3 साल का बच्चा है, और सीनियर मोस्ट जो हैं 75 ईयर्स के हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ पैरासेलिंग किया हुआ है। तो बेसिक एम ये है, सब लोग उसको जाइंट व्हील से कंपेयर करते हैं कि भाई हमको ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन उनके अंदर से भी उन चीज़ों को निकालना और इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना वो ज़्यादा बेहतर माध्यम हम लोगों के उससे रहता है। ये वैली क्रॉसिंग, ये आप नदी नालों को क्रॉसिंग करने के लिए भी आप उसको कर सकते हैं, इसी को जिप लाइन भी हम कह सकते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल विलेज में यूज़ करके उनको पर्यटन को बढ़ावा देने के काम आती हैं। ये पेंट बॉल की एक्टिविटी है जो कैंप साइट पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक कलरफुल बॉल्स होती हैं जिसको हम एक दूसरे को फाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधे सीधे रूप में आता है। और नेचुरली जब विजय पताका फहरती है तो सभी को एक अच्छा महसूस होता है कि हाँ, हमने कुछ काम किया यहाँ पर आकर। मध्य प्रदेश में कई जगह पर इस हॉट एयर बैलून का भी प्रयोग नेशनल पार्क और उसके सराउंडिंग किया जा रहा है, जिसमें नेचर का और बाकी चीज़ों के लिए देखने का आनंद रहे। ये स्लीदरिंग एक्टिविटी कहलाती है, जिससे हेलीकॉप्टर से एक रस्सी के सहारे कमांडोज उतरते हैं। उन चीज़ों को भी हम लोग सिखाते हैं सबको। ये वाटर बेस्ड एक्टिविटी है, बनाना राइड, जेट स्की के साथ बम्पर राइड का है। ये मध्य प्रदेश के सागर में स्पीड बोट हम लोगों ने किया था। ये कैंप साइट पे की जाने वाली सामान्य गतिविधियां हैं, जिसमें टारगेट शूट है, आर्चरी है, टीम बिल्डिंग गेम्स हैं। इनको हम पर्यटक को जंगल में जब लेके जाते हैं तो वहाँ इन्वॉल्व करने के लिए उसको इन गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं, ताकि वो इस तरीके से इन्वॉल्व हों और अपना काम आगे करते रहें। उत्तर प्रदेश में मैंने रेणुकूट के आकर जो है जायका प्रोग्राम के अंतर्गत 15 ट्राइबल बच्चों को ट्रेंड किया था, जिसके बाद उन बच्चों ने काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट भी किया और स्थानीय स्कूल के बच्चों को उन्होंने उन गतिविधियों में इन्वॉल्व किया। तो ये चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा जो अपना उत्तर प्रदेश में वाटर बॉडीज़ और धार्मिक पर्यटन के अलावा जंगल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अच्छे इको टूरिज़्म सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं, जिसमें जंगल ट्रैकिंग के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हों और स्थानीय आदमी को रोज़गार रहे। जब पर्यटक अपने घर वापस जाए तो कुछ ऐसी यादें लेके जाए, और एक स्थानीय जो भी चीज़ें रहती हैं उसको स्मृति चिन्ह के रूप में यदि हम जाके देते हैं उनको, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ होती है, जो हमेशा उनके लिए यादगार रहती है कि हम लोगों ने ये काम अच्छे तरीके से किया। उत्तर प्रदेश वन निगम ने जो ये इनिशिएटिव लिया है इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए,
मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे कम से कम इस चीज़ में इन्वॉल्व किया और भविष्य में मौका यदि मिला तो इनके साथ काम करके एक अच्छी डेस्टिनेशंस यहाँ डेवलप कर सकते हैं और स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं और गतिविधियाँ यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हों, ऐसी गतिविधियों को तैयार किया जा सकता है। धन्यवाद। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एडवेंचर्स, विभिन्न प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में जो वर्णन किया, एडवेंचर स्पोर्ट्स थ्रिल के लिए, और उसको जो आपने लिंक किया है फॉर सर्वाइवल, कोई दैविक आपदा आ जाती है, आप उसमें से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं, जैसे आपने इसमें दिखाया, तो एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। और इनमें से काफ़ी चीज़ें के बारे में हमें जानकारी नहीं थी जो आज पता लगी, जैसे वो ब्रिज वाला एक्टिविटी दिखा रहे थे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका हम इसमें सहयोग भी लेंगे अगर कुछ हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना हो ऐसी एक्टिविटीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सेशन को बंद करने के लिए मैं हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अंजनी आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा सम अप कर दें, और अगर किसी के मन में कोई मंशा, कोई डाउट या कुछ क्वेरी हो, वो भी आप अपने सर से लेने की कृपा करें। थैंक यू सर। Very good afternoon to everybody. It was very enlightening to listen to this STEAM panel. We had the experience sharing of 4 states of other tourism and other bodies, and then we had Make My Trip and Extreme Sports. So all Mr. Manoj Kumar, Mr. P.S. Baghel, Mr. Sahu, Mr. Pandey, Mr. Mugdal, Mr. Chaturvedi, they all have put their own ideas and views how we can go about the ecotourism activities. And probably few of the corporations are also doing this work, which we had some glimpses in forenoon session. Probably some of the corporations are doing that. In UP also we are doing that, as ecotourism policy says that Forest Department is the nodal department and Forest Corporation is the nodal agency for ecotourism. So there we have the opportunity of doing it, and we have been doing from say 15, 16 onwards. Some of the sites, ecotourism sites, we are taking up. So before closing, since there has been some talk about what ecotourism is, how to go about that, I will take a few minutes to summarize those things. Basically, the definition which we can have is the responsible tourism to nature-rich areas. Nature-rich areas and responsible tourism. So, taking care of the well-being of the nature and the people there, local people. So, taking care of the nature essentially means low impact tourism. So that summarizes how we have to go about the eco-tourism. And that we have to be careful so that we are not deviating and we are not say making something mess out of this ecotourism. Next thing is when we were doing ecotourism as a RM ecotourism, I was there in corporation. There are 5 words I had. That is how we developed the ecotourism. That was I shape. I for infrastructure, S for services, A for activities, P for publicity and all those things, and E for enabling in our environment. So as the time is less, I may not be explaining this, but these 5 words we take care when we develop the ecotourism activities in our state. Now the important question comes, what was the purpose of this workshop? How Forest Corporation can go ahead with these activities, and how we are going to make it happen. So one thing which we are doing, we are developing the destinations, and we are giving some services and some visitation to nature areas. We have to go beyond that. Probably corporations has now to look into the possibility of say clubbing with Make My Trip,
extreme sports or those bodies. Or we can work as, make my trip for ecotourism ourselves, the corporations. That is another opportunity, we can look into that. With those words, I stop myself, and if there is any query, everyone is welcome. Nothing? So, thank you all. Please. Association of India. We had the good fortune. We also had the good fortune in 2018 and 19 of interacting with the Ministry of Environment and Forests and Climate Change and the Ministry of Tourism when the ecotourism guideline was being framed. And we made a lot of suggestions for that, which we were really happy to see a few of them picked up. So basically, let me first quantify what is the potential. The American Adventure Travel Trade Association has quantified that eco-adventure natural heritage tourism is expected to touch about $1.64 trillion by 2026. And where does India stand? The World Economic Forum had rated India's natural heritage to be the 6th greatest, and the natural history to be the 10th greatest. If we quantify in a very ballpark manner, we possibly are looking at a sector which, if done well, sustainably, responsibly, and in an organized manner, could produce a business of close to about $40 to $50 billion for this country. Now, there have been challenges, of course. The August gathering here is well aware of all that. The same report of World Economic Forum had actually rated the utilization of natural heritage in India as standing at 112th position out of 148 countries. And the sustainability model followed for ecotourism till date at standing at 134th position. Having spent 5 decades of having explored India's natural heritage as an adventurer, a naturalist, and also eco-adventure and cruise tourism entrepreneur, I wanted to just present one thought, which is that to involve local communities and to do it sustainably, if the various states present here could take the guideline created by the Ministry of Environment and Forest to parcel land into conservancies, which would be a collaboration between the conservators, the local communities, and the professional ecotourism operators, and thereby create a 24-hour wilderness experience for the tourists, because that is missing in India, bringing in a higher level of the ecotourist into the country. That means ecotourists who's spending a lot more, the country earns a lot more, the forest earns a lot more, and not have mass tourism, and giving a substantial share of that to the local communities for conservation, and of course the eco-tour operator also earns out of that activity. This could encourage the local communities to actually bring in their agricultural land, which is peripheral to the forest, to give rise to private forests. Your question is now... No, it's more of a thought. I would put it not as a question, but as a thought. And of course, it's for the August gathering here to take it forward in whichever way it would like to. But it could increase the private forest coverage of the country and give those local communities a greater share in the revenue. So this is just a thought I wanted to put, and from my experience and knowledge and past interactions that we've had. Thank you very much.
Thank you. So I think it was more of, say, how we can go about the things rather than any question. Those big data, they are good. But let us be more careful about the path we are traveling. When we are talking about ecotourism, let us be very careful about the, ma'am was also talking about that. So let us take a good path, and the potentials will itself come out. So that is my thought about those things. Probably those policies and those all things, they have been in our policy also, as you suggested. So I think that satisfies. Anything else? Thank you. Thank you, everybody. Look wait. And rightly said, concluding with this technical session, once again, we'll take this opportunity to thank our esteemed panelists for joining us with this session. So to do the honor to express our gratitude to all our panelists, may I humbly request Shri N.K. Janu, CCF Meerut, to please join us and present this humble gesture of kindness and gratitude to all our panelists out here. First up, for Shri Manoj Kumar, CEO, Jungle Lodges and Resorts, Karnataka. Thank you so much, sir, for joining us today. Shri Prashant Baghel, Joint Director Planning, Madhya Pradesh Tourism Development Corporation Limited. Shri Prashant Baghel. आपकी जोरदार सम्मान भरी तालियों के साथ, let's hear it, ladies and gentlemen, for our respected panelists. Shri Anil Kumar Sahu, MD, Chhattisgarh Tourism Board. Let's hear it, ladies and gentlemen. A big round of applause. Thank you so much, sir, for joining us with this prestigious event. Shri Ashwini Kumar Pandey, Managing Director, UP State Tourism Development Corporation Limited. Thank you so much, sir, for gracing this event. Shri Manish Mudgal, Vice President, Make My Trip. And Shri Puneet Chaturvedi ji, Extreme Adventures, Bhopal. Once again, we'd like to thank all our panelists and our co-chairman and moderator of the session. Thank you for conducting it so well, sir. Can I humbly request all the gentlemen to please join us again so that we can capture this moment with a group photograph, please? We would like to take this opportunity with your kind presence so that we can capture this moment and preserve it in our memories. All the respected dignitaries who were kind enough to join us with this technical session, we'll have a group photograph with them. Thank you, gentlemen.
And with this, ladies and gentlemen, the most awaited moment where we are now proceeding with the technical session 3, which is on minor forest produce, collection, value addition, and marketing. The chairman for this technical session, I humbly request Shri Mukesh Kumarji, Managing Director, UP Forest Corporation, to please join us. With a big round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome him. Our honorable co-chairman for this technical session, please give it up for Shri Sanjay Srivastav ji, CEO, Campa. And our moderator for this technical session, Shri K.K. Singh ji, GM, UP Forest Corporation. And our esteemed panelists for this technical session, first up, please give it up for Shri Mukesh Singh ji, Chairman, IACC's Lucknow Desk. Mr. Singh is Chairman, IACC Lucknow Desk, as well as he is Board of Director. Mr. Singh is Advisor to Kocher and Company, Advisor to Trigen Technologies, Advisor to Anderson Global, Mazars, and many more corporates. We also welcome Shri Sanjay Shukla ji, Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce, Trading and Development Cooperative Federation Limited. We also extend a warm welcome to Srimati Prakriti Srivastav ji, Managing Director, Kerala Forest Development Corporation. अगर तालियों में वो कमी रहेगी तो वो ऊर्जा नहीं आएगी जिसके साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ सके. We also welcome Shri Pushkar Singh, Managing Director, Madhya Pradesh State Minor Forest Produce, Trading and Development Cooperative Federation Limited. Shri Pushkar Singh is 1987 IFS Batch Officer, PCCF and Managing Director, MFP Federation MP. We also welcome Shri Sunil Pandeji, Vice President, ITC Limited, Bangalore. He is an engineer and a forester from 1990 batch of IFS. Apart from serving a DFO and other forestry assignments in Tripura, he also headed technology mission on bamboo applications under Ministry of Science and Technology. I humbly request our respected moderator to please proceed with the session. Respected Chairman and respected Co-Chairman, I welcome you and all the participants in the last session today. This is a kind of situation we are having. In first session, we had full strength, then number kept on reducing, and now this is the fourth session. And I'd say that it is the privilege of those panelists to address the hardcore, participants available here, and all those who are sitting here, I will definitely say that they have lots of patience and they are really hardcore participants with us, and it is our privilege to have them here. Now in this last session, first of all, I request Sri Sanjay Shukla Sahab, Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce, Cooperative Federation Limited. This topic we have in this last session, minor forest produce, collection, value addition and marketing. This is a kind of topic which is very, very common, very interesting, and a kind of very volatile kind of topic across the country, particularly forest officers are concerned. So a lot of things would be coming in the mind of the participants here, those who have come, to know about other states, what is happening in other states. As now we have one Prime Minister's MP Yojana. This is also we are picking up very fast in our state also. So all those panelists, we are very eager to listen to them, that what is there happening in their states, particularly those dense forest area states like MP and Kerala, Chhattisgarh, like this. So I would request Mr. Sanjay Shukla Sahab to come forward. आदरणीय चेयरमैन
एवं को चेयरमैन साहब और मेरे साथियों, मैं अपने बहुत ही, वैसे तो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बट बहुत ही लिमिटेड स्लाइड्स पे ही मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे आखिरी वाला सेशन में हमें रखा गया है और सही कह रहे हैं, डाई हार्ड लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ मजबूरी में बैठे हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं और उनको तो बैठना ही है, और जिनको बोलना है वो भी बैठे हैं। तो उन दोनों को, मतलब ऐसे लोगों के बीच में मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जो फेडरेशन, छत्तीसगढ़ फेडरेशन है, वो मध्य प्रदेश फेडरेशन का पार्ट रहा, और 2000 में जब नया स्टेट बना 2001 में छत्तीसगढ़, तो देन छत्तीसगढ़ मैन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन रहा। बेसिकली ये फेडरेशन काफ़ी वर्षों से, मध्य प्रदेश के समय से, बेसिकली इसका जो फेडरेशन बना था इस फॉर द तेंदुपत्ता ट्रेड। जो तेंदुपत्ता जो है जिससे बीड़ी बनती हैं, जो इसको नहीं जानते हैं, बट चूँकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं सभी जानते हैं, उस बेसिस पे ये 20th सेंचुरी में ये फेडरेशन बनाया गया था। पिछले 30 साल से जब इसका 1990 में तेंदुपत्ते का ट्रेड में एक पैराडाइम शिफ्ट आया, और उसके बाद से इस स्टेट का पूरा स्वरूप बदला। आज का मेरा फोकस तेंदुपत्ता से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है, इट इज़ नॉट ओनली बेसिकली, जो तेंदुपत्ता जो समझते हैं, तेंदुपत्ता फॉरेस्ट एरिया से नॉर्मली 5-7% ही कलेक्शन होता है, बट कि फॉरेस्ट एरिया से बाहर होता है। बट फॉरेस्ट एरिया में जो अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसका बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी में है, जिसका जो बहुत सालों से नज़रअंदाज होता रहा है। काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से इसका ट्रेडिंग होती रही है, काफ़ी लेवल पे इसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है होता रहा है। सालों से बहुत प्रयास किए गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने स्तर से प्रयास करता रहा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत में इस पर प्रयास हुआ। उसके बाद देन ट्राइबल जो ट्राइफेड है उसके माध्यम से भी इस पर प्रयास किया गया। बट इसका जो मेन फोकस और मेजर जो शिफ्ट हुआ 2013-14 में, जब केंद्र सरकार ने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया। दैट वाज द फर्स्ट पैराडाइम शिफ्ट एज फार एज अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज कंसर्न। मैं अपने छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में मैं आपको फोकस करके बताना चाहूँगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है और कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और कितना इकोनॉमी में, अपने रूरल इकोनॉमी में जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो गांव हैं उसका इनका कितना डिपेंडेंस है इस पर, और अगर इस पर फोकस किया जाए तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये इसका मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने कुछ सालों से इस पर इम्पैक्ट देने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने बताया, हमारा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, 3 लेवल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। आई स्किप सर्टन चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पे मैं ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहूँगा, और ना ही इस पे आपको एक जैसे इस स्लाइड से पिक्चर देना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो वैल्यू एडिशन है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम बेचते हैं, उसमें लॉसेस होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिएम्बर्स करता है। वो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एक अलग इशू है, बट उसका जो वैल्यू एडिशन का जो पार्ट है, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगभग हमने 139 सेंटर्स खोले हैं, जहाँ पर 17,000 से मोर देन 17,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं जो इसकी वैल्यू एडिशन के काम कर रहे हैं। ये वैल्यू एडिशन का काम पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ लास्ट 2-3 साल में हुआ है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी स्टेट्स में कुछ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें भी वैल्यू एडिशन का काम होता रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जो इसमें जितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद में कुछ चीज़ें जो हैं वो उस पर फोकस देने की आवश्यकता है अगर इसको हमको लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल हमको ये बनाना है। बेसिक इसमें 2-3 चीज़ें कि जो है फोकस हमने छत्तीसगढ़ में लास्ट 2-3 साल में किया हुआ है, वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट हैं उसको हमें कोई भी अगर प्रोडक्ट हम मार्केट में ले आते हैं और इसको बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है, क्वालिटी हैज़ टू बी ऑफ अ स्टैंडर्ड। क्योंकि जब कोई भी आदमी बाज़ार में ख़रीदने जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता है कि किसी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है या कोई ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है इसलिए हमको ये चीज़ें खरीदनी है। उसको वो देखता है कि जो बाज़ार में जो दूसरी कंपनी की हैं, चाहे पतंजलि है या हिमालय है, तो उसके जो रेट्स हैं उसके हिसाब से वो कंपेयर करता है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी कंपेयर करता है एंड देन ओनली वो उसको देखता है। और तीसरा है उसकी जो ब्रांडिंग है कि वो वो जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे उसको लें। ये 3 चीज़ों पे फोकस करने के बाद ही इस प्रोसेस को हमने बढ़ाने की कोशिश की है और इन 3 चीज़ों को हमने फोकस किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सर्टिफिकेशन मतलब ऑल जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड करने के बाद दे शुड हैव ऑल द सर्टिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको हमने फोकस किया है छत्तीसगढ़ में एंड वी सॉ दैट कि सारे जो लाइसेंसेज हैं वो हों, उसकी जो सारी टेस्टिंग है NABL लैब से टेस्टिंग करके हम करें एंड देन हमने अपने खुद के लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं। पूरे स्टेट में हमने 6 लैब इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पर हर बैच का की टेस्टिंग करके वो सर्टिफाई होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया तो उनके प्रोडक्ट को आप उसको हम बेच पाएंगे अनलेस वी सर्टिफाई वी हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। आगे बढ़ गए दूसरी इसमें जो कि वंस वी हैव दैट प्रोडक्ट उसके बाद जो मार्केटिंग, किस तरीके से हमें मार्केटिंग करना चाहिए। क्या हम इसे अपने छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड या कोई भी मध्य प्रदेश में कॉरपोरेशन का अपने फेडरेशन का अलग ब्रांड है, कई अलग स्टेट्स में जो है वो अपने ब्रांड पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो क्या हम उस ब्रांडिंग को ब्रांड को हम उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ब्रांड नहीं है तो हम मार्केट उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई उसकी ब्रांडिंग करने की बहुत आवश्यकता है एंड जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लेते हुए हम उसको एक ही ब्रांड पे हमने इसको लाया और देन वी स्टार्टेड डूइंग द ब्रांडिंग एंड उसके लिए एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया में ब्रांडिंग है और हमने उसको इस्टेब्लिश करके वी इस्टेब्लिश दी छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। जिसके सेकंड है कि क्या हम ये जो उसका मार्केट है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो उसको प्रॉपर वैल्यू कैसे मिलेगी। उसकी प्रॉपर वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक कि उसका मास प्रोडक्शन नहीं होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के या हमारे स्टेट फेडरेशन के माध्यम से जो भी उस पर प्रोडक्शन हो रहा है उससे एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ये जब तक हम प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं तब तक इसका जो मास स्केल प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। वी हैव अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बीइंग produced in our state. We collect almost 180 crores worth of MFP जो हम collect करते हैं। उसके बाद भी we are only utilizing 5 or 7% of the entire minor forest produce we collect. बट जो दूसरे जो हैं मतलब जो शेष फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इट हैज़ टू बी प्रॉपरली वैल्यू एडेड। तो उसके लिए वी नीड टू हैव कि बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर लगें जिससे कि उसकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो वैल्यू है वो बनी रहे। इस पे हमने फिर देन वी हैव हैड एन इंटीग्रेटेड 110 एकड़ का हमने प्लॉट किया है जहाँ पर वी
आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द फेडरेशन, और हम ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को हम कर रहे हैं, जिस पे अगर हम आप देखें इस स्लाइड पे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट द आयुष जो है ये 45 करोड़ का टर्नओवर का प्रोजेक्ट है, 78 करोड़ का, ये केवल हम अपने अंडर में हम इसको रन कर रहे हैं, बिकॉज इसका सारे प्रोडक्ट हैं जो वो हमारे ऑलमोस्ट 80% गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए हैं। बाकी जो नीचे के हैं ये सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कुछ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ में हम इन्वेस्ट करके उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट में दे रहे हैं। इन 1 ईयर टाइम वी विल बी, मतलब ये 6 हमारे प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, जिसका ऑलमोस्ट 15,000 मेट्रिक टन्स जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका कंजम्पशन छत्तीसगढ़ स्टेट में ही होगा, जिसका टर्नओवर 345 करोड़ के करीब होगा। ये इससे जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्शन में जो सरकारीकरण की जो मतलब जो फेलियर्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए वी आर हेल्पिंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर इनटू द मार्केट, जिसमें प्रोडक्शन पे वो आए। एंड इसमें हमने एक लिया है कि जो भी उनका प्रोडक्शन होगा, जितना जो छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट के लिए हम उनको ले सकते हैं, -40% दी MRP, दैट डिसीजन वी हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट। लास्ट ईयर हमने लगभग 156 करोड़ का MFP प्रोक्योर किया था। इसमें 6 लाख परिवार, देयर आर 6 लाख परिवार आर एंगेज इन छत्तीसगढ़, जो कि अदर माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को में लगता है। एंड इट इज़ अ ट्रेड ऑफ ऑलमोस्ट 1200 करोड़। एंड इसको इम्पैक्ट डालने के लिए अगर मतलब जैसे नए स्टेट्स हैं जिस पे इस पे ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लिया गया है, मध्य प्रदेश या कुछ स्टेट्स में इस तरीके के अच्छे काम ऑलरेडी हो रहे हैं, बट जो नए स्टेट्स हैं लाइक जहाँ पर फॉरेस्ट भी है और इस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इस तरीके का फेडरेशन और इसका स्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर इफ़ वी वांट टू हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है जो कि इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ट्राइफेड, लास्ट 2 ईयर्स से लगभग 250 करोड़ का टोटल 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता है इन एंटायर इंडिया। एंड केवल हम छत्तीसगढ़ जो है 75% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट हम करते हैं ऑफ द एंटायर इंडिया अंडर दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। MSP स्कीम जो है उसमें 75% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट इज डन बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट अलोन। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इस पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि विलेज लेवल पे, हाट बाज़ार लेवल पे वी हैव ऑलमोस्ट 75,000 वुमेन मेंबर्स, 3,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इसको कलेक्शन करती हैं। दैट इज़ अ ह्यूज स्ट्रेंथ जो से हमारा हाट बाज़ार और विलेज लेवल पे उनकी प्रेजेंस होने के कारण से वी हैव बीन एबल टू कलेक्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एंटायर MFP अंडर दिस स्कीम, जो कि लगभग 160 करोड़ का होता है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस 160 करोड़ इज सच कि जो 1200 करोड़ का जो है कि जहाँ पर देयर वाज नो कंपटीशन जो बिचौलियों से, जो ट्रेडर से, उसको हम वी कुड ब्रेक बाय यूजिंग दिस वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रेजेंस इन द विलेज एंड एट द हाट बाज़ार। तो वहाँ पर होने से ये सबका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे वो खरीदते थे, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इम्पैक्ट एक साल में आया। 500 करोड़ का इम्पैक्ट इन दी इंक्रीज इन द रेट। सो इट इज़ नॉट कि हाउ मच वी हैव प्रोक्योर्ड, बट द इम्पैक्ट जो उसमें पड़ता है, दैट इज़ वन वेरी मेजर चीज़ है विच आई वॉज रियली स्किपिंग। आई वॉन्टेड फॉर द अदर स्टेट्स कि इस जो उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है, जो इस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का जो काम है, अगर हम विलेज लेवल में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाते हैं यूजिंग दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें हमें कुछ अलग से कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो हर गांव में जो है, अगर आप यूपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कम से कम 3 या 4 लाख ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगी जो गाँव में होंगी। छत्तीसगढ़ अकेले में 1,15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। हमने उसी में से उस गांव जो फॉरेस्ट से लगे हुए गांव हैं, तो उसमें से 10 में से जो सबसे बेहतर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला काम कर रही थी, जो 5 साल से उसमें काम कर रहे थे, उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया कि उनको कहा कि प्रोक्योरमेंट आपको करना है। तो हमें कोई इसमें अलग से कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वी हैव टू पिक एंड चूज़
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आप ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए. यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फेडरेशन और कॉर्पोरेशन, दे कैन कोऑर्डिनेट, और उन्हीं में से उनको दे देना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग मनी, 75% उनको वो देती है, 25% स्टेट शेयर था, विच दिस ईयर दे आर गोइंग टू चेंज इट टू 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नॉर्मली बहुत सारे प्रोडक्ट में लॉस होता है, उसके लिए फॉर ईच प्रोडक्ट इफ देयर इज अ लॉस, द लॉस इज कंपनसेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से अभी 75% लॉस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट करती है. तो इससे बेहतर स्कीम, मतलब आई हैव नेवर फाउंड अ बेटर स्कीम in any of the department than this minimum supports price scheme. Unfortunately, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका मतलब बजट ही 300 करोड़ रहता था, दे आर नॉट रिलीजिंग इट, दिस 300 करोड़ में से भी इस साल पैसा नहीं दे रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में, मतलब हाउ मच इट कैन बी इम्पैक्ट डाल सकता है. मतलब मैं आपको छत्तीसगढ़ हमारे स्टेट को देखने से आप उसको समझ सकते हैं. एंड दिस इज़ अनटैप्ड, कोई बहुत सारे स्टेट्स में इट इज़ अनटैप्ड, और इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि ये पैसा हमारा जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है. एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर. और ये जो जिस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस तरीके से सक्सेसफुली लास्ट 2-3 ईयर्स से वी हैव बीन डूइंग 75%, 78% ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वी कुड कलेक्ट इट. तो दिस इज़ वन इम्पैक्ट. मैं वैल्यू एडिशन की बात तो बात है. जो फर्स्ट थिंग व्हाट वी मस्ट डू इज़ टू क्रिएट सच अ स्ट्रक्चर जिसमें हम इसको ये काम कर सकें. तो सारे स्टेट्स इसमें कर सकते हैं. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत बताने की भी चीज़ें हैं, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड आई कैन हैव वी कैन हैव आवर 1-to-1 इंटरेक्शन. आजकल वीसी से वी कैन इंटरेक्ट. सो इसमें कोई भी स्टेट में अगर हम करना चाहेंगे तो लेटर ऑन किसी भी समय में वी कैन फिक्स डेट्स, एंड हम 1-2 घंटे 3 घंटे में अपनी पूरी टीम के साथ में, उनकी टीम के साथ में, विदाउट कमिंग एंड गोइंग, वी कैन जस्ट इंटरैक्ट एंड विल एक्सप्लेन द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस इन अ वेरी माइन्यूट वे, सो दैट इफ इट कैन बी ऑफ हेल्प टू अदर स्टेट्स, इट विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट. जैसे मैंने आपको कहा कि एडिशनल 500 करोड़ का इनकम हुआ है, और apart from that, because we were doing good in minor forest produce, you don't have to stop. मैं जहाँ बताएंगे मैं वहीं बंद कर दूंगा. उसमें कुछ दिक्कत नहीं है मुझे. हाँ, I'll stop. So we are also now the chief minister said कि आप कोदो कुटकी रागी, which is basically not a forest produce, उसमें भी आप करें तो we are the first state जहाँ हम उनको भी minimum support price पे ले रहे हैं. रैली, कुकून और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. दिस इज बताइए तो अपनी सेल्फ पेटिंग है कि हाउ वी हैव इंक्रीज्ड तब जो वैल्यू और ये सारा अगले ये लास्ट 2 ईयर्स में ही वी कुड डू इट. मतलब इतना सब करने पे 9 से 65 स्पीसीज, वैल्यू जो है 2.5 करोड़ से 156 करोड़, जो 500 टन लेते थे हमने 63,000 टन लेने लगे, जस्ट बिकॉज हमने स्ट्रक्चर बना दिया था प्रोक्योरमेंट का. दैट इज़ ऑल. उस पर आप अगर देखें तो इस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है. एंड दिस इज़ हाउ द नंबर ऑफ फैमिलीज़, जो 4,000 फैमिलीज़ थी, 17,000 फैमिलीज़ पे इन्वॉल्व हो गई हैं. फिर इसके जो वैल्यू एडेड मैंने जो बात कही थी कि आफ्टर ब्रांडिंग वी कुड, आप देखिए इन जस्ट 2 ईयर्स टाइम 1.37 करोड़ से हम 7 करोड़ पहुँच गए. दिस ईयर वी आर गोइंग टू रीच टू 20 करोड़. विल बी सेलिंग 20 करोड़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड. नॉट थ्रू गवर्नमेंट की सेल इस पे नहीं है कि हमारा जो है पोल या बारबेड वायर या कोई या फर्नीचर कोई सरकार से खरीदे, क्योंकि सरकार की को कंस्ट्रक्शन करना और सरकार को बेचना, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. अगर हम सक्सेसफुल उसको अपने हमारी जो जनता अगर खरीद सकती है, वी आर सेलिंग थ्रू ऑल दी, मतलब आपके अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में आवर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, वहाँ से हम बेच रहे हैं. We have a flagship stores. We have 3,000 outlets in छत्तीसगढ़, जहाँ पर रिटेल outlets हैं जो कि वहाँ से बिक रहे हैं. तो this is how we are trying to increase. यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ, which is very very important, कि जो मार्केटिंग पार्ट है, ये सारे मतलब चाहे आप इसकी बात कर रहे हैं जो हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कर रहे हैं, हमने इसको स्टेट ब्रांड के रूप में डिक्लेयर किया. एंड नाउ यू विल नॉट बिलीव कि जस्ट बिकॉज हमने ब्रांडिंग की है, इट इज़ गोइंग टू नाउ 8 स्टेट्स, 8 कंट्रीज. 2 करोड़ का माल जो है इस अभी हमको जो है 15 दिन पहले वी हैव कि
And this is being done not done by us, by the some private company coming to us कि सब हमको छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड का एक्सक्लूसिव राइट्स दीजिए इन कंट्रीज के लिए, एंड दे हैव डिपॉजिटेड 2 crores फॉर द फर्स्ट ईयर. सो यू कैन सी वंस यू हैव अ ब्रांड, तो आप अगर ब्रांड बनाते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड उस पर हमने नॉट ओनली फॉर आवर प्रोडक्ट, हमने उसको कह दिया छत्तीसगढ़ शासन का अपना ब्रांड. एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप अभी छत्तीसगढ़ में, इवन यूपी में, किसी भी स्टेट्स में देखेंगे, एमपी में, कि इन द कलेक्टर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है. बट बिकॉज ऑफ देयर इज नो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट बीइंग सोल्ड. वो वहीं पर करते हैं, कलेक्टर बिकवाते हैं, फलाना करते हैं, बिकता है, फिर पैसा देते हैं, फिर होता है, फिर पैसा देते हैं. सो हमने जो है इस चीज़ को, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको एक स्टेट में एक ब्रांड होना चाहिए. देन देयर शुड बी आउटलेट. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेरी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड C-Mart, that is a Chhattisgarh Mart. In the Chhattisgarh Mart, not only Chhattisgarh herbal product, but all the products by all the self-help groups, by any of the departments, or even the departments like sericulture और इसके भी जो बनते हैं, उसको एक C-Mart में उन्होंने कह दिया, it's a mart of 7,000, 6,000 square foot, जो कि वहाँ पर, and we are giving it to the private operators to do it, to sell it under commission basis. मतलब क्योंकि वो बेचने का भी काम सरकारी आदमी नहीं कर सकता. अगर आपने सरकारी किसी को बैठा दिया तो वो कभी नहीं बेच पाएगा. देन वी आर गिविंग, और जितने भी हमारी संजीवनी आउटलेट्स हैं सारे हैं, वी हैव आउटसोर्स्ड इट. हमने उसको आउटसोर्स कर दिया है, एंड वी आर गिविंग देम अ कमीशन थ्रू टेंडर बेसिस. कमीशन करने के बाद में वो करें. तो द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इट, कि वी शुड हैव, मतलब जब हम कोई भी हम वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो उसके मार्केटिंग की हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी इसको बनानी चाहिए. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा, बट अदर थिंग्स विच आई डोंट हैव अ टाइम. बट अगर इसमें किसी का भी इंटरेस्ट होगा तो वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, एंड हमको बहुत आगे भी जाना है. बट वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 2-3 years व्हाट वी हैव गेन्ड. I would very much like to share it, because it is a novel thing we have done it, not because कि ये ऐसा कभी हुआ नहीं है. उसको अगर हम करते हैं तो it is not कि state cannot success. Thank you very much. Sanjay ji, just one query. This wonderful attempt by the Chhattisgarh department. ये बताइए, ये पहले जब ये MP किसी आप लोग साथ थे तो कुछ काम हुआ था इस दिशा में कि this all been done after separation of the state? नहीं, देखिए, इवन आफ्टर सेपरेशन ऑफ द स्टेट, जो छत्तीसगढ़ फेडरेशन भी था वो बेसिकली 99.9% काम तेंदुपत्ता का ही करता रहा. वो तेंदुपत्ता वॉज अ फेडरेशन. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहने का था, इट वॉज बेसिकली तेंदुपत्ता फेडरेशन. तो वो, बट लास्ट 15 years से MP में भी काम शुरू हुआ, मतलब अबाउट, बट आफ्टर क्रिएशन MP में भी बहुत सारे काम हुए हैं. वहाँ भी संजीवनी आउटलेट्स हैं. इनफैक्ट इनका प्रेजेंटेशन होगा तो वहाँ भी उन्होंने एक प्रोडक्शन सेंटर बनाया हुआ है. बट गोइंग टू द विलेज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उतना स्ट्रॉन्ग जो है अभी हमने इनफैक्ट लास्ट 3-4 years से बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग किया है. बट वर्क हैज़ बिन डन इन लास्ट 14-15 years. इट इज नॉट इन जस्ट 2 years. शुरू तो था, लेकिन आपने जो अभी इसको एक नया ट्रेंड दिया, ब्रांडिंग इट एंड कनेक्टिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट, दैट हैज गिवन अ लीप टू द बिजनेस. वेरी गुड. थोड़े से ब्रांडिंग एंड उसकी. थैंक यू. We have something to ask, please. बिल्कुल. इनफैक्ट हमने 3 साल पहले जब इसको इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाला तो हमारे पास देयर वाज नो ग्रेडिंग. जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देयर इज़ नो ग्रेडिंग, देयर इज़ ओनली 1 प्राइस. बट सिंस वी हैड एन बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जो है उसमें देयर वाज नो, तो हमने क्या किया, बिकॉज वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वी कैन हैव -10% और +10%. तो वी हैड अ स्कोप ऑफ, हाँ, दैट इज़ अलाउड, मतलब दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट. सो वी हैव यूज दिस 20% का, एंड वी हैव हमारे, अगर आप देखेंगे कि जो हमारी जो प्राइसिंग सिस्टम है उसमें भी ऑलमोस्ट ऑल द केसेस वी हैव 3 prizes इन 3 grades. तो हमने अपना खुद ही इसको ग्रेडिंग कर ली है, जिसमें तो ख़राब ग्रेड है, सो दैट कि वी डोंट रिजेक्ट इट. जो भी आया है तो हम उसको लोएस्ट ग्रेड में रख लेते हैं, या जो एवरेज है और ये बहुत अच्छा है तो उसको अच्छे ग्रेड में कर रहे हैं. इसके बाद देन द सेकेंड इज़ द प्राइमरी प्रोसेसिंग.
ये हम करने के बाद में वी आर डूइंग द प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ द फ्यू ऑफ द आइटम्स, उसको हम वेरी हाई प्राइस पे हम इसको बेच रहे हैं आफ्टर डूइंग दैट, जो कि द विलेज लेवल पे पॉसिबल नहीं होता, वो सेंटर लेवल पे हम इसको कर रहे हैं. बट इवन इन द प्रोक्योरमेंट वी आर हैविंग टू और थ्री प्राइजेज एज पर द ग्रेड्स. Thank you, Mr. Sanjay Shukla Sahab. It was excellent, presentation about the state efforts you have made in Chhattisgarh. Having privilege of very good forest in Chhattisgarh, and kind of this process has evolved so well. You have explained, and definitely all those participants here, we would also try to learn, try to do certain things what Chhattisgarh has done, and new dimensions we also would like to follow as Chhattisgarh has done. Thank you very much. Now I request respected panelist Prakriti Srivastava ma'am. We have been in the academy together from long back in 92, 93, and we have been listening about her, and in our WhatsApp group and other friends we have been talking about. The day she has taken over as MD Kerala, she has done excellent work earlier also, but being MD, she has done so many things. We all would like to share her experiences, and we would love to listen her here. Welcome, ma'am. Please. Thank you, and good evening to everyone. Thank you for inviting me for this conference, and to hear everyone and to be able to share my experience also. So I am not just talking about minor forest produce. I'm basically talking about the corporation as it was in Kerala, and what was, it's about a year and a few months back that I took over, and what was the situation and then and how it has turned up now and how we are progressing. So I'd just like to share it very briefly with you as to how a corporation in a small state is being run. I have been hearing others also, they have large corporations, big land with them. Our situation is a bit different. So let me just go into it. The Kerala Forest Development Corporation was set up in 1975, and it is a partnership between the central and the state government. We have just about 10,000 hectares with us, and most of it is reserve forest. We have taken it on lease from the forest department. We have about 6 divisions coming under the KFDC, and we have a staff strength of permanent staff strength of about 150 people. But more importantly, we have about 600 families, which are the communities which are with KFDC and completely dependent on KFDC activities. And these communities which came to Kerala were basically the Sri Lankan repatriates. If you remember, there was a Shastri Srimavo Accord under which the Sri Lankans repatriated to our country, and these settled in our forest areas, and therefore we have to cater to their needs also. So you can understand that while we have a very small land, we have a huge community depending on us being able to cater to their needs and to be able to ensure that they are financially and socially viable also. And that's a challenge. So let me just tell you that when I joined, our situation was really horrible. We were in a condition where there was no money. Even the salaries of our staff was not paid. From 2013 onwards, we had not paid the retirement benefits of people, the salaries of the revised salaries that were there, nothing was paid, and we had not been able to pay the gratuity, the workers, medical benefits, the bonuses, nothing was paid. And that was the situation that I had joined under, and I myself did not get my salary for 3 months. So that was the condition that the corporation was in. So if you look at it, we slowly started working on it, and
we have turned around the whole corporation. And if I just go back to that, oh, how does it move? Sorry. ये वाला? Okay. ये ऊपर वाला? Okay. Okay. Thank you. This is the back, huh? Sorry. Okay. So I was telling you that was the situation of the KFDC, but from October of 2021, we completely made a changeover and things became very different. But also let me tell you that at the time that I had taken over, we had a loss of about 6.5 crore, and we also had outstanding payments to be made to the tune of 7 crore. And we were in a situation where we were not being able to pay anything. So some of the few things that we did to say, and this is the sort of expenditure revenue statement we had, that every year we were limping actually, literally, that even the profits, that most of it was lost, and even the profits that were there were just in a few lakh rupees. So we were just limping along. So how exactly what we did this year was we made a operational profit of 6.34 crore after making all our expenditure. That's the amount of money we did get as a profit. So we made all our payments. In fact, I'm so happy to announce that we have taken care of all our debts. We have completely removed all our losses, and we are now poised for absolute growth. And we are looking forward to something like 20 to 30 crore profit this year. So what are the existing bottlenecks I'd like to share with you? That we have large plantations of eucalyptus also, but we have something in Kerala called the Selling Price Act. So that determines the exact price at which you can sell eucalyptus. You cannot sell it at a rate lower than that, even if you are a corporation. And that price had been fixed so high that for the past many years, we were not being able to sell our eucalyptus. So one of the first things we did is that we ensured that the Selling Price Act was reduced and we made it a market price. And that was, we got the government orders for it. And that completely opened that bottleneck. It finished off that bottleneck, and we managed to sell a huge amount of our eucalyptus. And that actually was a turning point where we could actually manage that. The other thing is that as I was showing you the previous statement, our financial statement, there was a lot of wasteful expenditure which actually resulted in the fact that we were just struggling. So that is one very important thing that we did. We completely controlled our expenditure and ensured that we had enough money for taking care of our other activities. Again, we have a strange situation where our MFPs that we call are things like cardamom and pepper, etc. And the reason behind it is, as I told you, that when the Sri Lankan repatriates had come back, they were growing cardamom, etc. In the forest areas. And therefore, as per the FC Act, people have been asking me that question, how do you do it? As per the FC Act, the rule position is such that prior to 1980, if an area was being cultivated with cardamom or pepper, etc., we can continue to do it till the lease period is existing, that is till 25 of this coming 2025. And therefore, about 100 hectares of cardamom can be cultivated with cardamom, and that's how we are cultivating cardamom. But what was happening is that very poor yield was there, and it was a lot of pesticides, fertilizers being pumped into it. So that's what we are trying to do, and that is where we try to relate to the minor forest produce. We are trying to improve the quality. So what we are saying is that while the yield may be less, the type of money we get out of it from the quality that we produce is what matters really. So we've made it completely organic, we have made it wildlife friendly, and we are branding it such. As the speaker before me said, that it's very important to make a brand name. So that's what we are trying to do. We are making a brand name and then trying to improve the quality and then sell it. We are also trying to get various other products also. For example, we have sandalwood oil, sandalwood powder, etc. We are trying to get that and market that also. Again, previously we were selling these products only locally or through our small eco shops. Now we are trying to go on the online platform, modernize, and try to find markets through online platforms. And I have been sharing those also, that we're trying to sell these products through Amazon, etc. We've got a very good response.
We are also looking for exports now, and we're hopeful that that will also materialize and will give us good funds. The other thing that we are doing is that the ecotourism, we have about 6 sites which come under ecotourism with us. We are very, and I being from the wildlife background, I am very concerned that it has to be very eco-friendly and very, very pro-conservation, whatever we do. So our footfall is very low, and we ensure that quality is given, and therefore, what we've done is we've done carrying capacities for all these areas so as to ensure that the footfall is actually staggered and spread over the period. We've also done things like on the weekends, we have high rates where we are ensuring that people come, pay hefty amounts. But during the weekdays, we completely lower it, the rates, so that people who can not afford these type of prices are also having the opportunity to come to our areas and to avail the beauty of our natural landscapes. And all this work is done through the communities, as I told you that they are the Sri Lankan repatriates who are doing it. So we do this work through them, and they are the ones who benefit out of it. The same thing about the cash crops also, because they are the ones cultivating. What we do is that we are not making estimates and saying something, a particular work is being done for a particular item. We get our communities to do the whole work, and that amount which is there, we take it and transfer it to the bank account directly. So that is how the whole community is benefiting from it, and that is how we are making it very sustainable, the whole work that we are doing. So again, as I told you that these are some of the things we did, that we ensured that our eucalyptus is being sold at market rates. We are also trying to ensure that all our cash crops are organic, wildlife friendly. We have superior marketing now, we are creating a brand name. We are also having high quality tourism. All our infrastructure, we are upgrading it, again in an eco-friendly manner, so that the quality of services or that is offered is much better. And that's another point I would like to say, that while our ecotourism is flourishing because of our beautiful landscapes, the problem is that we are not trained in the hospitality field. And that is something very important. We don't know how to do good housekeeping, how to keep places neat, how to ensure that our bathrooms are clean. So that is something that I think is very important, and that is something I wanted to share. Probably we should all look into it and ensure that the hospitality sector that we are offering is of top quality, and it is like all the, the best hotels that are going to, even though they are low scale, etc. But these are some things that we should ensure for visitor satisfaction especially. So that's another thing I wanted to share. So again, the revival measures that we've taken, as I said, was expenditures, that we have controlled that very much. We are training our staff, as I said, for this hospitality sector, for example, we are training our staff how to be good with the hospitality sector. We are training them through 5-star hotels. So we are getting people to train what exactly is good housekeeping, what is good service, so that that sort of, experience is given to our visitors. Again, as I said, that doing timely activities, making payments through bank transfers, that is transparency, is something which is very important, and we are taking care of that also. We are trying to ensure that whatever work we do is done with a scientific basis. So we are not doing it just on our own. We have roped in a scientific institute, which is giving us full technical support and giving us certification, so that we say that whatever we are doing is certified and is actually being done in a conservation-friendly manner. As I already said, that we have completely stopped application of all pesticides, inorganic fertilizers, etc. And we have rebranded our product as Vanopahar. And we are now selling it through the Amazon platform. We are also selling it through TriFed outlets. We are selling it through our own eco shops, and we have now tied up with the Kairali Emporia. So all over India, there are many Kairali Emporia. So our products are going to be sold through them also. So this is how we are trying to increase our branding over the country and our visibility also. We are going green. Our complete areas we are converting into green with green technology. We are trying to ensure that only solar energy is used as far as possible. So that is the way we are trying to sell even our ecotourism, that it's responsible, it's green,
And therefore, your visit will, it is not only from a point of money making. We are not so concerned about that. It is because people like to see beautiful places. And if they do it responsibly and they do it in a way that benefits the communities, that's the best way that we can offer a service to them. We have again become very modern. We have opened a new website. We have a Twitter handle. We have a Facebook account as well as Instagram, and we post on it regularly. And as I already said, that we are selling through Amazon, and we are also trying to globally export our sandalwood oil. The other two very important points that we are doing is that we are trying to get cultivated honey in all our areas through the communities. And that is one point I wanted to say, especially in this particular topic about, MFPs. One important point is we do not have any scientific control about the type of or amount of material we are collecting. And we must remember that all the MFPs that are being produced is not just for human consumption. It's only the surplus that we should think about taking. Basically, all MFPs belong to the forest, they belong to the wildlife. And we cannot take away more than that and brown up our forests. So please, all our corporations, we should look into that part, that are we having some sort of a carrying capacity study for even the removal? When are we removing? What are we removing? That's something which is very important. And that is why we are not wanting to remove honey from the forest. Instead, through the communities, we are going to produce honey and market it through our branding that we are having. And one very important point before I finish the thing is that we are actually looking for green funding. So that is one of the new projects that we are reaching the finalization, where there are various companies who are giving us money to keep the area green and make it greener still. So we are going to get money, not for extracting, not for producing anything, but for keeping our areas green. So that is something that is very new and probably the first time that we would be doing it. And it's at the last stages and we will be implementing that. That is something I would like to share that maybe it would be good for everyone to look at, so that we keep to the point that how do we make money while keeping our areas green and ensuring enough funding comes. And the last thing is that all our efforts, most of the money goes towards our the economic needs of our communities, how to better their lifestyle. We have implemented such things like tailoring training for driving, etc., so that people's dependence on forests reduce and they can go out and work in other sectors also. Another point about the morale, which I keep saying, that I saw that our forest staff's morale is very poor. We must look at it. What is it that they require? We should really improve their service conditions, ensure that they get timely promotions, they are happy with their work, and they feel satisfied with the way the management is treating them. So that's a very important part of our work also, and that we keep it as a very high priority in our corporation. So one last point that I have to say is that how do we look at it? Because as I told you that we have very less land, so what do we do? So that is something that we really need to work on as to how we have to expand our land, how we would want to share it with the Kerala Forest Department, how we would like to take more lands from them, and lands that are that we have actually regenerated and we don't want to use it any further, how we give it back to them. That is something that we should really keep looking at and have a dynamic way of exchanging our lands and keeping them in such a way that we keep it green, we keep it for conservation, but take lands which can be utilized for generating funds also. So thank you. I'd like to just say one more point, which may be a bit controversial. We should look into the fact that whether does a corporation need to exist along with the forest department also, because there are a lot of times where there's an overlap of the work that we do. Ecotourism is done by them, done by us too. Extraction of timber is done by them, done by us too. What's the need? And is it very important that we must produce products and goods to be able to sell it to others? Is it really important to do that? Or is it that we just need to take a little bit of the surplus, which is possible to be extracted, and then market it? So these are some things that we should really think about very seriously, and not that we need to have a corporation for its existence alone. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And I think we must have a bigger applaud for her,
the efforts he has made, the journeys he started without salary, and MD working as in corporation without salary for 3 months and making it profitable after 6 months. This is incredible. Thanks a lot, ma'am, for sharing all your experiences, and we are very happy to see you here. Thank you, ma'am. Now, I would request Sri Pushkar Singh, Managing Director, Madhya Pradesh State Minor Forest Produce. And one more request I would make to the panelists to please keep your time limit so that we can. So, okay, please. Thank you very much. It's almost 6 now. So I don't know how much capacity and is left to imbibe things, but I will try to make it quickly, because most of the things have been covered by Mr. Sanjay Shukla, who is MD Chhattisgarh, and Chhattisgarh and Madhya Pradesh, they are as good as brothers still now, like UP, Uttarakhand. So we still have many things common, many procedure, many rules. They are common with Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Our federation, it's MP State Minor Forest Produce Federation, which was established in 1984. We have a very old and well-established organization. संजय कैसे मूव होता है? This is a cooperative structure, which is our federation is a registered cooperative society under the Cooperative Act, Madhya Pradesh Cooperative Act, and we have a 3-tier system. At the top we have federation, and in the district we have district union. In the field, we don't have separate staff or separate this thing. Our DFO is, we have declared him Managing Director of District Union. Like I am MD at the federation level, or DFO is MD at the district level. And Conservator of Forest, we have declared him Regional Manager. And at the ground level, we have primary cooperative societies, which is almost at the block level. And more than 45 lakh people are associated with us. They are member of our societies. You can see more than 15% of them are tribal people. So we are working for the poorest of the poor community through our minor forest produce collection, processing and trading. Main activities, as Sanjay has also told you, that we are known for Tendupatta collection basically. Earlier we are known for mainly for Tendupatta activities. Our federation, we have Tendupatta Act in Madhya Pradesh, similarly in Chhattisgarh also. And under that act, government has made us the agent of the government for Tendupatta collection. So government has created a monopoly for Tendupatta collection, and only government can trade. So we trade on behalf of the government. And we are doing the benefit sharing also. Whatever profit we get, we share it with the public. Then we are a nodal agency for MFP collection on MSP also. That also we do through our primary cooperative societies. And now we are into value addition of MFP through our processing center and self-help groups under the Pradhan Mantri Vandhan Yojana. Besides that, we are also taking up conservation of forest, conservation of minor forest produce species to make the sustainability, to make them sustainably available forever. So we do various forest development activities also.
and we also do village infrastructure development. As far as Tendupatta leaf collection is concerned, annually we are collecting around 18 lakh standard bag, and as you all know, the Tendupatta collection is mainly 1 month activity. ज़्यादातर मई के महीने में ही हमारे यहाँ तेंदुपत्ता आता है, और इसमें हम लोग इस एक महीने में करीब 550 करोड़ रुपए एज कलेक्शन अमाउंट जो हमारे मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट टू देयर अकाउंट। इस फिगर का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि हम सब जानते हैं पिछले 2 सालों में कोरोना की इतनी महामारी थी कि कहीं पे भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन हमारे तेंदुपत्ता कलेक्शन के वजह से 2 साल में 1 महीने में हमने लगभग 400 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता कलेक्शन के थ्रू लोगों को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया, जो अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट और उनको काफ़ी सहारा गांव वालों को इससे मिलता है। इस साल काफ़ी अच्छे रेट्स आए हैं, और इस बार हमें उम्मीद है हमारा रेवेन्यू 1100 करोड़ तेंदुपत्ता से अर्न हो जाएगा। हमारा जो फेडरेशन है, दिस इज़ one of the highest profit making organization in the cooperative sector in Madhya Pradesh, and we have a system of sharing the profit with our primary collectors. So whatever profit we get, 75% of this profit we distribute among the collectors. Collector means MFP collectors. 10% we keep for village infrastructure development, 10% for conservation of forest, for ex situ or in situ conservation to maintain the sustainability, and 5% of the profit we give to the concerning Joint Forest Management Committee. So on an average about 100 to 200, and in 2017 about 6,000 crore rupees we distributed as bonus to our members. And this bonus distribution program is very popular among the villagers as well as the politicians also. लोग इंतजार करते हैं कि कब बोनस बटेगा। हमारे चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हैं, लोकल एमएलएज हैं, सबको इंतजार रहता है कि कब बोनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम भी उसको बड़े फैन फेयर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इन एक्टिविटीज़ से कितना फ़ायदा होता है। अभी इस साल का 22 अप्रैल को माननीय अमित शाह जी से हमने बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू कराया था भोपाल के ग्राउंड में। करीब 1 लाख लोगों को वहाँ पे शुरू में बांटा गया था। अदर देन दैट, जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, हम लोग बहुत सारी वेलफेयर स्कीम रन करते हैं। उनमें एक हमारा इंश्योरेंस स्कीम है, जो हमारे 40-45 लाख मेंबर्स हैं उनको हम इंश्योरेंस देते हैं। नेचुरल डेथ में 10,000, पार्शली हैंडीकैप 20,000, टोटल हैंडीकैप 50,000, एक्सीडेंटल डेथ में हम 2 लाख तक का उनको इंश्योरेंस देते हैं। दिस इंश्योरेंस इज विदाउट एनी प्रीमियम। इसी तरह से हमारी एक लोन स्कीम है, तो जब हमारी प्राइमरी सोसाइटी कुछ प्रोसेसिंग का काम या एमएफपी कलेक्शन का काम करना चाहती है तो उसको हम 4% सिंपल लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। इसके लिए हमारे पास 75 करोड़ की किटी हमने रखी है। अभी तक 20 करोड़ रुपए का लोग हमसे लोन ले भी चुके हैं। अच्छी बात यह है कि वो रीपे भी करते हैं। जो हमारे विलेजर्स हैं, प्राइमरी कलेक्टर्स हैं, उनके बच्चों के लिए हम एजुकेशन स्कीम चलाते हैं। तो उसका नाम हमने एकलव्य एजुकेशन स्कीम रखा था। 2011 में शुरू हुई थी, और जो उस टाइम हमारे श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, उनसे इसका शुरू करवाया था। इसमें जो अच्छे मेधावी छात्र रहते हैं, 60% से ऊपर जिनका परसेंटेज रहता है, तो 9th-10th में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 12,000 रुपीज़, 11th-12th में है तो 20,000 रुपीज़, और टेक्निकल एजुकेशन कोई नॉन टेक्निकल
11th-12th को 15,000 और कोई हायर एजुकेशन में बीए वगैरह कर रहा है तो 20,000 और कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है तो उसको हम 50,000 रुपीज़ तक एजुकेशन में मदद करते हैं। अभी तक हम लोग करीब 12,000 बच्चों को उनकी एजुकेशन में मदद कर चुके हैं। करीब 11 करोड़ रुपए उनको हम लोग इस स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग एक बच्चों के लिए अनुभूति प्रोग्राम चलाते हैं। करीब 1 लाख स्कूल स्टूडेंट्स को हम हर साल जंगल घुमाते हैं। किसी को नेशनल पार्क ले जाते हैं, किसी को सेंचुरी में ले जाते हैं या कोई भी अच्छा फॉरेस्ट वहाँ पे है, बच्चों को घुमाते हैं ताकि एक एनवायरनमेंट एजुकेशन हो, अवेयरनेस बढ़े। तो पिछले 5-6 साल से हम लोग 1 लाख बच्चों को हर साल घुमाते हैं। ये काम हमारा इको टूरिज्म बोर्ड करता है, हम लोग उसकी फंडिंग करते हैं। तो करीब 50% फंडिंग हम फेडरेशन से करते हैं, बाकी पैसा कैंपा से भी। अभी कैंपा वाले बार बार अड़चन करते हैं, भारत सरकार वाले, उनके समझ में आता नहीं है। वो कहते हैं इको टूरिज्म बोर्ड कर रहा है तो इको टूरिज्म ये टूरिज्म एक्टिविटी है, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। साहब चले गए, मैं समझाने वाला था उनको, डीजी साहब को। अभी परसों ही हमारे सीएम साहब कह रहे थे दिल्ली में जाके लोग क्या समझ बदल जाती है क्या? हमने कहा ऐसे ही होता होगा। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि भाई बच्चों को जंगल में घुमाना कोई टूरिज्म एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि इको टूरिज्म बोर्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूरिज्म की एक्टिविटी हो गई है। तो इस बार उन्होंने पैसा नहीं दिया तो फिर हमने उसको फंड कर दिया। 9-10 करोड़ रुपए लगता है, तो हमने कहा मत दो तुम, हम दे देंगे। लेकिन ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, बच्चों में बड़ी खुशी होती है। हम लोग इसको रेंज लेवल पे करते हैं, फिल्मी हीरोइन से लेके और कहाँ चलता है। हाँ, ये तो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, थक गया लगता है। हाँ, काफी पॉपुलर रहता है। हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब भी। हाँ? बंद कर दें? अच्छा, आपने हमको दिन भर इंतजार कराया बोलने के लिए। दिन भर इंतजार कराया तो अब सर प्लीज आइए, आप आगे, अच्छा है। नहीं, आई एम फॉर्चुनेट कि आप आए और अच्छा है आप। ये हम स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम का बता रहे थे। हम जो फेडरेशन से हमारे प्रॉफिट होता है उससे हम 1 लाख बच्चों को जंगल घुमाते हैं, फॉरेस्ट की एजुकेशन देते हैं, उनको नेशनल पार्क ले जाते हैं, सेंचुरी ले जाते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि ये प्रोग्राम मैंने ही शुरू किया था, तब मैं इको टूरिज्म बोर्ड में था। एक दिन हम लोग जा रहे थे कान्हा के गेट पे, कान्हा हमारा सबसे बढ़िया पार्क है। वहाँ मैंने ऐसे बच्चों से पूछा कि क्या है अंदर पार्क के, तो वो बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता ये गेट के अंदर क्या है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि बताइए, यहाँ देश विदेश सब जगह के बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चा वहीं का है ना तो वो अफोर्ड कर सकता है अंदर जाना, ना हम उसको जाने देंगे। तो फिर हमने ये प्रोग्राम चलाया कि कम से कम बच्चों को हम फ्री में घुमाएंगे, दिन भर घुमाते हैं उनको, अच्छी पिकनिक कराते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उस टाइम, वो भी उसमें आते रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज़ भी आती रही हैं। एक हम लोग जो अभी संजय शुक्ला साहब ने बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एमएफपी का परचेज, वो हम लोग भी 32 स्पीशीज़ को उसका एमएसपी डिक्लेयर किए हैं और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने उसके लिए डेवलप कर लिया है। करीब 23-24 करोड़ रुपए लगा के हमने गोदाम और जो कलेक्शन सेंटर है उनको अपनी दुकान का नाम दिया गया है। तो कलेक्शन सेंटर्स सब जगह बना दिए ताकि उनको रखने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। जैसे इसी साल अभी हम लोगों ने करीब 28,000 क्विंटल महुआ एमएसपी पे कलेक्ट किया है और उसका करीब 70% हमने कोल्ड स्टोरेज में भी रखवा दिया है। क्योंकि महुआ का ये होता है कि जब दिवाली के टाइम पे रेट बहुत ऊपर, अभी हमने 35 रुपये में लिया है, दिवाली में वो करीब 60-70 रुपये चला जाता है। तो हमने करीब 12-13 करोड़ का लिया है, होपफुली हम लोग 20 करोड़ तक का बेच देंगे। तो वो जो भी प्रॉफिट होता है वो भी हम फिर उनको वापस शेयर कर देते हैं।
इसी तरह जो प्रोसेसिंग में है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लोग वंदन विकास योजना में काफ़ी प्रोसेसिंग का काम काफ़ी आगे चल गया है। 107 सेंटर हमारे अभी तक सैंक्शन है, जो कि 35 प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा उनका बिकने भी लगा है। पिछले 2 साल में वो इस स्थिति में पहुंच गए कि अब हर जगह जहां भी प्रदेश में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनकी एग्जीबिशन में वंदन केंद्रों की एग्जीबिशन कंपलसरी हो जाती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नवंबर में आए थे, उस टाइम पे भी हमारे वंदन केंद्र से इंटरेक्ट किया। अभी रिसेंटली हमारे प्रोग्राम में अमित शाह जी आए थे, उसमें भी वंदन केंद्र के प्रोडक्ट्स उनको दिखाए और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कई बार उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो वंदन केंद्र एक बहुत अच्छा साधन है प्राइमरी प्रोसेसिंग का, और ट्राइफिड देखते हैं कितना लंबा चला सकता है इसको। नहीं भी चलाएगा तो हम अपनी तरफ से भी उसको काफ़ी फंड करने की स्थिति में है। तरह तरह के प्रोडक्ट हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग से वाकई काफ़ी फ़ायदा है गांव वालों को। वो जो सिर्फ कलेक्शन से उतना नहीं हो पाता, जो कि प्राइमरी प्रोसेसिंग से उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के लिए इस बार हमें स्कॉच अवार्ड भी मिला था लाइवलीहुड जनरेशन के लिए। दूसरा जो हमारा बड़ा प्रोसेसिंग का काम है, तो हमारा अपना विंध्या हर्बल ब्रांड है। वी हैव अ रजिस्टर्ड विंध्या हर्बल ब्रांड। उसी के तहत हम सब जो मार्केटिंग करते हैं, और काफ़ी पहले से है, करीब 2004 के आसपास हम लोगों ने इसको ब्रांड को रजिस्टर करा लिया था। हमारी अपनी फैक्ट्री है, जो फेडरेशन की एक यूनिट है भोपाल में, जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, उससे हम पूरे विंध्य हर्बल की जो हमारी रेंज है, करीब 350 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। और वो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और सारी जितनी भी उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी लाइसेंसेज हैं, सब उसमें ले रखे हैं हम लोगों ने। करीब 850 प्रोडक्ट्स का हमारे पास लाइसेंस है, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं तो एज ऑन टुडे हम 350 प्रोडक्ट बना रहे हैं, और विंध्य हर्बल ब्रांड के थ्रू हम लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं। रिसेंटली ये आयुष 64 जो कोविड में बहुत ही कारगर दवा हुई है, उसका भी हमको लाइसेंस मिला है। वो अभी हमने बनाई है, धनंजय भी आ गए हैं, तो उत्तराखंड में अभी 2.5 करोड़ रुपए का हमने आयुष बना के सप्लाई किया है पिछले महीने। तो उत्तराखंड की जितने भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उनमें हमारी दवाई चलती है। कभी जाके धनंजय देखना वहाँ पे, और वो लगातार हमको काफ़ी ऑर्डर भी देते जा रहे हैं। जो हमारी फैक्ट्री है, काफ़ी अच्छे फ़ायदे में चलती है वो, और एक बार तो हम लोग 48 करोड़ तक का भी उसमें टर्नओवर रहा। पिछले साल हमारा 26 करोड़ का टर्नओवर रहा, और बहुत पॉपुलर ब्रांड है इसके। जो विंध्य हर्बल का जो हमारा हनी है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हनी विंध्य हर्बल का। और अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जितने भी ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सब में हम लोग बिक्री कर रहे हैं। इससे हर साल करीब 30-40 करोड़ का हमारा फैक्ट्री का टर्नओवर है। लेकिन ये सिर्फ टर्नओवर 30-40 करोड़ तक सीमित नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज़ एमएफपी कलेक्ट करती हैं, तो उनके लिए एक रास्ता मिल जाता है, हम उनसे खरीद लेते हैं उसको। ताकि हमने जो गांव वाले ने खरीदा, हमारी सोसाइटी ने खरीदा, तो उनको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं आती, हम लोग खरीद लेते हैं उसको। और हमारे पास प्रोसेसिंग की यूनिट है, तो हम आराम से उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे ये हालत है कि हमारा सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला प्रोडक्ट है हनी है और च्यवनप्राश है। तो च्यवनप्राश के लिए हमें खुद आंवला बाहर से लाना पड़ता है। वहाँ जितना होता है हम मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद भी हमें बाहर से। तो फैक्ट्री से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं किसी के पास बल्क हर्रा खरीद लिया, बहेड़ा खरीद लिया, तो हम उसको ले लेते हैं, तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता हमारे गाँव के लोगों को।
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार हम खूब जम के करते हैं। उसके लिए हम हर साल एक हर्बल फेयर भी भोपाल में लगाते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर रहता है। बहुत ही पॉपुलर इवेंट है, लोगों को इंतजार रहता है इसका कि कब ये हर्बल फेयर होगा। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। इस साल, पिछले साल हमने 21 में किया था। तो 5 दिन के प्रोग्राम में करीब 1.25 लाख लोग वहाँ पे आके उसको घूमते हैं, और हम वहाँ पे एक बायर सेलर मीट भी करते हैं। तो बायर सेलर मीट से लोगों को एक फोरम अवेलेबल करा देते हैं। तो पिछले साल करीब 14 करोड़ के बायर सेलर मीट में MOU हुए थे, और 1.5 करोड़ का लघु वनोपज 5 दिन में ही वहाँ पे बिक गया था। भोपाल में सर इस बार आइएगा, बड़ा अच्छा फेयर हम लोग दिसंबर में लगाते हैं, इंटरनेशनल हर्बल फेयर। ये इतना पॉपुलर फेयर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, गवर्नर साहब उसका क्लोजिंग करते हैं, और 5 दिन खूब हलचल वहाँ बनी रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमारे विंध्य हर्बल ब्रांड के इतना फैन हैं, वो खुद भी काफ़ी यूज़ करते हैं। और खुद मतलब आप जाने ताज्जुब होगा कि खुद ही उनके लोग आके हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। वो जहाँ भी जाते हैं हर जगह विंध्य हर्बल का ब्रांड होना चाहिए, विंध्य हर्बल का शहद, विंध्य हर्बल का ये। तो वो हमारे सब बहुत बड़े प्रचारक हैं। कहाँ अटक गया? इसके लिए भी हमको स्कॉच जो अवार्ड है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर हर्बल प्रोडक्ट पिछले साल मिला था। तो ये सब हम लोग हमारी हर्बल टी भी बड़ी पॉपुलर है, कभी आप लोग यूज़ कीजिएगा। मैं लाने वाला था लेकिन मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, जो लाने वाला आदमी था। आई थॉट कि एक आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई उसकी। फिर भी कभी मौका मिलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग अपने बना के बेच भी रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पुष्कर सिंह साहब। आपने इस ढंग से अभी अपने इस जर्नी के बारे में बताया, और इसको इतने अच्छे तरीके से इवॉल्व किया है। वो न सिर्फ आप के यहाँ जो काम हो रहे हैं वो अपने कॉरपोरेशन के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, बल्कि वो बेनिफिशियल काफ़ी हद तक वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है उसको काफ़ी हद तक उसको मदद मिली है। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आई है, और इस चीज़ को दूसरे जगह भी लोगों को करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्री Sunil Pandey sahab, Vice President, ITC Limited Bangalore, to please come forward and give your speech, please. आप हाँ please. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसा जॉब के लिए ओपन है क्या? नहीं, मतलब आपका मतलब कोई हमें ऑर्डर देगा तो? अभी हम लोगों ने वो उस तरह का काम शुरू नहीं किया है। नहीं, हम अपनी फैक्ट्री में तो अपना ही ब्रांड बनाएंगे। तो अभी वो वैसे एक आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है। हमने भी एक बार ये विचार किया था कि भाई कोई और हमसे बनवाना चाहता है तो हम बना के दे देंगे, वो अपना लेबल लगा लेगा। हाँ, नहीं, हम लोग भी इन हाउस उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में हमने चालू किया है।
छत्तीसगढ़ में भी हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने किया। 3 कंपनीज जो हैं को हम फिनिश प्रोडक्ट्स देते हैं, करीब 33 प्रोडक्ट्स हमसे वो ले रहे हैं, वो अपने ब्रांड में दे आर सेलिंग इट। हाँ, अपने ब्रांड, वो नहीं, वो अपने ब्रांड से अपना हाँ, जैसे मैंने बताया जो 8 कंट्रीज में जा रहा है वो तो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड का जा रहा है, बट 3 कंपनीज ऐसी हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी बात कर रहे हैं, हम उनको फिनिश प्रोडक्ट बना के देते हैं, हम अपने फैक्ट्री में बना के उनको देते हैं, क्वालिटी और सारा मतलब सर्टिफाई करके देते हैं, एंड देन दे आर सेलिंग इन देयर ओन ब्रांड, और वो अपना ब्रांड से दे आर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दे इंडिया में भी काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग इन छत्तीसगढ़। आप अगर इंटरेस्ट है तो हमने ऑलरेडी हमारे 3 कंपनीज को हम देते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ, जैसे मैंने बताया हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है, बनाने की भी सुविधा है, बट चूंकि छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड इतना भी बड़ा ब्रांड नहीं बन पाया है कि हम उसको कर पाए, तो सो वी आर सीइंग दी चैनल्स जिसमें हमारा मतलब प्रोडक्ट्स जाए। तो इन छत्तीसगढ़ इफ यू आर इंटरेस्टेड वी आर डूइंग इट। आई होप नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज। सारी चीज़ें सीजी हर्बल से ही प्रोक्योर होते हैं, सारे रिसोर्ट्स के जो टॉयलेट्स में आपको सीजी हर्बल्स के ही टॉयलेटरीज मिलेंगे, डेंटल किट से लेके कॉम से लेके एवरीथिंग। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आयुष डिपार्टमेंट ने भी वो निकाला है कि जो जितनी भी हमारी डिस्पेंसरी हैं आयुर्वेदिक की, वो सिर्फ हमसे ही लेते हैं, तो हम ही जितनी भी दवाइयाँ आयुर्वेदिक की लगती हैं हम विंध्य हर्बल से ही बना के देते हैं उनको। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को क्लू देता है कि हियर वी कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड, क्योंकि ये चीज़ अभी हम लैक कर रहे हैं यूपी डिपार्टमेंट में, और हमारे पास भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत सारा है अपने विंध्य बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके में, पहले हम लोग कलेक्ट भी करते थे, बट प्रोसेसिंग वी हैव टू कम फॉरवर्ड, और दिस इज़ अ ग्रेट बिजनेस, क्योंकि जैसे यहाँ सीजी हर्बल है, विंड हर्बल है, तो आप लोगों ने काफ़ी समय से इसमें अच्छा काम किया है, नाउ दे हैव कम टू ए पॉइंट, तो आप शुरुआत में हम लोग मदद ले सकते हैं आपसे, फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग अपना भी बना सकते हैं। जैसे भी बात हो रही थी, जैसे आंवला, जी आपके यहाँ आंवला होता है, बहुत होता है हमारा आंवला, आपके यूपी से बुलाना पड़ता है ना, वेरी हाई कॉस्ट, हमारा इवन द रॉ मटेरियल कैन बी ट्रेडेड। ये इधर का आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला, हमारा इतना आंवला होता है, That's true. हमको दीजिए, हम आपके That's true. That's what we were discussing about. We should proceed. That we were discussing about. We should proceed. Now I request again Mr. Surin इसमें Pandey, Vice President. एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी फैक्ट्री है, हमारे पास लैब भी है जो NABL अप्रूव्ड लैब है, तो उस वो लैब मतलब मध्य प्रदेश में शायद 1-2 ही लैब हैं, जो एक तो हमारे पास है, तो हम अपना प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अलावा जो प्राइवेट जो दूसरी फार्मेसी हैं जो बनाते हैं वो हमारे यहाँ टेस्टिंग कराते हैं, हमारे चार्जेज हैं, तो वो हम लोग उनको मदद कर देते हैं, क्योंकि लैब लगाना काफ़ी बड़ा काम होता है, हर प्राइवेट फार्मेसी लगाई तो बहुत पैसा लगता है, तो वो चीज़ हमारे पास है, तो बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं हमसे। नमस्कार, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मेरे प्रेजेंटेशन का एक्चुअली 2 पार्ट है। एक तो हम लोग इंडस्ट्री साइड से क्या करते हैं फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड एक्टिविटीज़, और दूसरा एक इंडस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब कॉरपोरेशंस बने थे, जिन कॉरपोरेशंस को कंट्री के अंदर लैंड दिया हुआ था, करीब 1 मिलियन हेक्टेयर के आसपास लैंड दिया हुआ है, तो एक इंडस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव है, और क्या कोई एक डिफरेंट व्यू लिया जा सकता है जिसमें हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकें, और जिसमें कॉरपोरेशन को भी ज़्यादा फ़ायदा हो और जिसमें इंडस्ट्री को भी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं थोड़ा सा एक इंडस्ट्री का भी एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। ब्रीफली ITC के वैसे तो 13 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, मतलब राइट फ्रॉम सिगरेट टू एग्री बिजनेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अगरबत्ती मैचेस। हमारे 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं जो कि फॉरेस्ट बेस्ड हैं, या अब आप कह सकते हैं जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड हैं। और ये 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक आपने नाम सुना होगा मैचेज अगरबत्ती, हमारा मंगलदीप ब्रांड जो अगरबत्ती का आता है उसमें हम लोग बैम्बू यूज़ करते हैं, और विमको मैचेस स्टिक करके आता है, जो कि
जो ऑलमोस्ट इंडिया में करीब 80% मैच स्टिक आईटीसी सप्लाई करती है। और दूसरा जो बिजनेस वर्टिकल है वो पैकेजिंग, पेपर बोर्ड पैकेजिंग का है। आप जो भी पैकेजिंग इमेजिन कर सकते हैं, मतलब राइट फ्रॉम मोबाइल की पैकेजिंग टू लिकर टू मेडिसिन टू सिगरेट टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो भी पैकेजिंग आप इमेजिन कर सकते हैं वो हम बनाते हैं। हम सिर्फ आईटीसी के लिए ही नहीं बनाते हैं, बल्कि हम बाकी कंपनियों के लिए भी बनाते हैं। और ये दोनों वर्टिकल्स फॉरेस्ट बेस्ड हैं और करीब 7,000 करोड़ के आसपास दोनों वर्टिकल्स का टर्नओवर है। पहले ये दोनों फॉरेस्ट बेस्ड थे, लेकिन ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है जो मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मेनली ये कैसे शुरू हुआ था, हम सबको पता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आया था, जिसके अंदर ये दिया हुआ था कि फॉरेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड और शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। और उसके पहले आईटीसी के जो दोनों बिजनेस वर्टिकल्स थे वो फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया, ये करीब 1990 की बात है, और जिसमें आईटीसी ने काफ़ी R&D डिफरेंट ट्री स्पेसीज पे शुरू किया। और क्लोनल जो आईटीसी क्लोन्स आज हम जानते हैं, ऑलमोस्ट अगर 9 स्टेट में हम लोग काम करते हैं, प्लांटेशन अरेंज करते हैं। जो भी आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में जो आप पॉपुलर प्लांटेशन देखते हैं वो सब विमको और आईटीसी, बेसिकली विमको को आईटीसी ने एक्वायर किया 2005 में। और साउथ इंडिया के अंदर जो भी यूकलिप्टस, कैसुइना और सुवोबुल प्लांटेशंस हैं वो आईटीसी के क्लोन्स के हैं। तो वर्चुअली ये हुआ कैसे था कि ये प्रोग्राम, ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम उसको कहते हैं, क्योंकि उस समय सिचुएशन क्या थी कि अगर यूकलिप्टस सीड से ग्रो होता था और उसकी प्रोडक्टिविटी करीब 4 टन पर हेक्टेयर पर एनम होती थी, और उस प्रोडक्टिविटी पे कोई भी फार्मर अपने ज़मीन में या अपने मेड़ों पे लगाने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। उसको जो भी इनकम दूसरे क्रॉप से मिलता था उसके कंपैरिजन में ये कम थी। ये ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो बेसिकली यूकलिप्टस या बाकी स्पेसीज या पॉपुलर का, इसकी प्रोडक्टिविटी आज की डेट में करीब 10 गुना ज़्यादा है। मतलब आज जो फार्मर को, जो उस समय 1990 में जो 4 टन मिलता था, आज उसको 40 टन मिलता है। और वो मेन कंट्रीब्यूशन है ये साइट स्पेसिफिक डिजीज रेजिस्टेंट जो हाई प्रोडक्टिव आईटीसी क्लोन्स जो डेवलप हुए थे। और उसके साथ में क्या, क्योंकि क्लोन डेवलप करना बेसिकली एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट सुवोबुल के करीब 12 क्लोन हैं, पॉपुलर के 57 हैं, कैसुइना के 15 हैं और यूका के करीब 107 हैं। ये डिफरेंट साइट स्पेसिफिक क्लोन्स हैं। बेसिकली एक क्लोनल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है जो करीब 10 साल का होता है, जिसमें हम करते क्या है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन 10 साल के प्रोसेस में सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद से जब क्लोन इनिशियली डेवलप होता है तो फार्मर्स लैंड में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स में उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उसकी डिजीज रेजिस्टेंट कितनी है, वो एक टेस्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद से फिर आईटीसी क्लोन रिलीज करती है, और उसमें क्लोन रिलीज करना एक पार्ट है। अगर हम फार्मर को ये नहीं बताएंगे कि उस क्लोन को कैसे ग्रो करना है, तो इसलिए हमारा जो दूसरा है कि क्या मॉडल्स ऑफ प्लांटेशन होने चाहिए, और एक्सटेंशन मॉडल्स डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एक्सटेंशन टीम्स हैं। और ये सारे क्लोन्स, क्योंकि उस समय यूकलिप्टस में एक मेजर जो मिथ था या जो एक फैक्ट भी था कि यूकलिप्टस का जो रूट सिस्टम है वो बहुत नीचे तक जाता है और वो ग्राउंड वाटर को इफेक्ट करता है। तो ये रूट ट्रेनर टेक्नोलॉजी पहली बार लाई गई थी। उसमें होता क्या है कि जब हम क्लोन यूकलिप्टस का बनाते हैं तो उसका जो उसका एपिकल रूट होता है वो किल कर दिया जाता है। बेसिकली लेटरल रूट्स ही अलाउ किए जाते हैं। तो जब फार्मर अपने खेत में लगाता है तो उसका रूट सिस्टम 2 से 2.5 मीटर के से नीचे नहीं जाता है, मतलब उसका ग्राउंड वाटर से कुछ लेना देना नहीं है। और जब वो 12 साल बाद, क्योंकि नॉर्मली वो 3 रोटेशन लेता है 4-4 साल का, यूपी वगैरह में 7 साल का रोटेशन होता है, तो जब वो उसको अप्रूट करता है, क्योंकि पहले जब सीड रूट वाले सिस्टम में जब वो अप्रूट करता था तो उसका बहुत पैसा जाता था उसको अप्रूट करने में। ये बहुत इजीली अप्रूट होता है क्योंकि ये 2 मीटर के नीचे इसका रूट सिस्टम नहीं होता है। और ये रूट ट्रेन टेक्नोलॉजी के थ्रू लाया गया था, जिसमें वो पूरा मिथ उसको नलीफाई कर दिया गया था कि यूकलिप्टस को ग्राउंड वाटर से कोई लेना देना नहीं है। जितना एक मैंगो, जितना एक गुआबा, जितना ये स्पेसीज पानी लेती हैं, जिस लेवल से लेती हैं, उसी लेवल से यूकलिप्टस भी लेता है। और करीब हमारे 3-4 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं जहां हम ये सारे क्लोन बनाते हैं। ये साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी है, रामपुर के पास रुद्रपुर में है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जो आईटीसी ने प्लांटेशन मॉडल्स डेवलप करी, क्योंकि हम जिन कैचमेंट्स में काम करते थे या जिन कैचमेंट्स में आज हम कर रहे हैं उसमें
छोटे मझोले बड़े फार्मर्स हैं, तो बेसिकली एक सोशल फॉरेस्ट्री मॉडल था जिसमें हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करते, और एक फार्म फॉरेस्ट्री मॉडल है जिसमें कि लार्ज फार्मर्स हैं जिनको हम सिर्फ सैपलिंग देते हैं, वो भी सेल करते हैं और उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। फिर यूपी के लिए मेनली जो नॉर्थ इंडिया के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, क्योंकि पॉपुलर हमेशा ग्रो होता है वो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में होता है। ये जैसे फोटो आप देख सकते हैं, जो डिफरेंट क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स उसके बीच में लिया जाता है। तीसरा है बंड प्लांटेशन मॉडल जो अब काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है, और चौथा है विमको जिसमें हम इंडस्ट्री और फार्मर्स को कोलैबोरेट करते हैं और जिसमें विमको सेडलिंग काफ़ी आगे है। इसका ये हमारा प्रोग्रेस है, करीब ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की वजह से प्रोडक्टिविटी करीब 10 गुना बढ़ी है। और ये क्लोनल डेवलपमेंट एक पाइपलाइन है, मतलब 2018 में जो आईटीसी ने क्लोन रिलीज़ किए, अब जो 2022 में क्लोन रिलीज हो रहे हैं वो उससे 20%, 15 से 20% ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि 4 सालों के अंदर फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है। तो अगर हम उसको प्रोडक्टिविटी से नलीफाई नहीं करेंगे तो होगा क्या कि या तो वुड के प्राइसेज बढ़ने शुरू होंगे या उसकी नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पाइपलाइन, तो ऑलमोस्ट आज की डेट में करीब 50 से 55 साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं क्लोनल डेवलपमेंट पे, और सब्सिक्वेंट जो रिलीज ऑफ क्लोन्स हैं वो ऑलरेडी एक पाइपलाइन में रहती है। ऑलमोस्ट करीब 9 से 9.5 लाख एकड़ के आसपास एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस हुए हैं। करीब 2.5 लाख फार्मर्स सिर्फ ट्री बेस्ड प्लांटेशंस में कवर्ड हैं। हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं एग्री बिजनेस डिवीजन के जिसमें करीब ऑलमोस्ट 2 मिलियन फार्मर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। आईटीसी आज की डेट में कार्बन क्रेडिट में वी हैव अ पॉजिटिव फुटप्रिंट, मतलब हम जितना सारे बिजनेसेस मिला के जो हम कार्बन एमिट करते हैं साल में, उससे ज़्यादा हम कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं। और ये ऑडिट होता है, ऑडिटेड फिगर लास्ट ईयर का है करीब 58 लाख मैट्रिक टन, मतलब 58 लाख कार्बन क्रेडिट्स। इंडस्ट्रियल वुड आज की डेट में जो आप देखिएगा, जब 1990 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो 90% वुड फॉरेस्ट से आता था और 10% वुड फार्म फॉरेस्ट्री से। आज ये टोटल पिक्चर रिवर्स हो गई है, 90% इंडिया का वुड जो भी इंडिया कंज्यूम करता है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से आता है, वो 10% ही फॉरेस्ट से आता है। हाईली एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बिकॉज ट्री प्लांटेशन इज हाईली मैन पावर इंटेंसिव, और फार्मर इनकम हैज ऑल्सो इंक्रीज। In fact, I will stop my presentation here, और now I will come to what is the industry perspective. इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ये है कि इन दोनों बिजनेसेस में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे आप अगरबत्ती लीजिए, इंडिया को हम कहते हैं कि लार्जेस्ट बैम्बू ग्रोइंग कंट्री है, मतलब चाइना के बाद हमारा नंबर है, बट एरिया में हमारा सबसे लार्जेस्ट है। हम लोग ग्रो करते हैं बैम्बूसा, बैम्बोस और डेंड्रोकल्मस स्टिक्टस, लेकिन हमें अगरबत्ती के लिए चाहिए होता है बैम्बूसा तुल्ला। अब वो क्योंकि हम ग्रो नहीं करते कारपोरेशन लैंड में या फॉरेस्ट लैंड में, हम वही ग्रो कर रहे हैं जो या तो ईज ऑफ ग्रोइंग है, मतलब जो हमारे लिए आसान पड़ रहा है, या जो हम मानते हैं कि 10-15 साल में इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हम कोई ऐसा मैकेनिज्म ला सकते हैं जिसमें इंडस्ट्री या यूजर एजेंसी बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व किया जाए कि आपको क्या चाहिए। मैं मलेशिया में इनफैक्ट 4 साल काम किया हूँ, जो साबा फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, मैं उसको हेड कर रहा था, तो वहाँ पे ये सिस्टम था कि मतलब फॉरेस्ट कारपोरेशन और फॉरेस्ट लैंड में अगर मैं इंडस्ट्री हूँ तो एक जॉइंट मैनेजमेंट प्लान बनता था जिसमें डिसाइड होता था कि इंडस्ट्री को ये रिक्वायरमेंट है, और इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट करती थी। जैसे ग्रो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया और वो ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री उसको ग्रो करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करती थी। फॉरेस्ट कारपोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था कि आप उसको प्रोटेक्ट करिए, और एक थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो मैनेजमेंट प्लान को मॉनिटर करता था कि अगर ये एनुअल एक्शन प्लान है तो इंडस्ट्री ने ये सारे काम किए हैं कि नहीं किए हैं। बहुत ही हाई पेनाल्टी होता था, मतलब हम लोग को करीब $1 मिलियन के आसपास पेनाल्टी होता था, और उस हिसाब से वी आर ग्रोइंग अबाउट 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ अकेशिया प्लांटेशन जो हम उस इंडस्ट्री में यूज करते थे। फॉरेस्ट कारपोरेशन को रॉयल्टी होती थी, जैसे ही ट्रक वहाँ से हार्वेस्ट होके आता था उनको रॉयल्टी मिलती थी। जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट वगैरह सारे खर्चे इंडस्ट्री जो प्रॉफिट कमाती थी उसके हिसाब से होता था, और इंडस्ट्री को वही लकड़ी मिलती थी जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या इंडस्ट्री को वही बैम्बू मिलता है
जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमें बैम्बूसा तुलदा चाहिए तो हमें बैम्बूसा तुलदा मिलता था। तो ये एक मॉडल है जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा क्या है कि जैसे सर आज की डेट में इंडस्ट्री को FSC सर्टिफाइड वुड चाहिए। अब हम उसके लिए पैसा देने को तैयार हैं, मतलब आंध्रा और तेलंगाना फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से मेरी डिस्कशन हुई, हम उसको जो भी पैसा लगेगा खर्चा देने को तैयार हैं, बट वो हो नहीं पा रहा। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस प्रोड्यूस को या तो सर्टिफाई कराएं या उस प्रोड्यूस को उसके हिसाब से ग्रो करें। तीसरा, जैसे आजकल इनफैक्ट काफ़ी इंडस्ट्री को कि CII-ITC सेंटर में ऑलमोस्ट 45 इंडस्ट्रीज मेंबर्स हैं, टाटा स्टील और JSW। इंडस्ट्री चाह रही है कि हम कार्बन क्रेडिट में कंट्रीब्यूट करें, मतलब हम जैसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट है या कोई फॉरेस्ट है जो रीस्टॉक करने की ज़रूरत है, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा आप 50-50% शेयर कर लीजिए, मतलब 50% आपकी वैल्यू हुई, 50% हमारी हुई, इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ, आपके लिए एक बिजनेस मॉडल है और इंडस्ट्री उसमें आना चाहती है। इनफैक्ट 45 इंडस्ट्रीज़ ने इसको MOEF को लिखा भी है कि हम ये मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन को और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो। चौथा पॉइंट था कि जैसे कुछ कॉरपोरेशंस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो यूकलिप्टस ग्रो कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी है 5 टन पर हेक्टेयर पर एनम। उसके बगल में हम जो फार्मर्स के लैंड में यूकलिप्टस प्लांटेशन ग्रो करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी है 30 टन पर हेक्टेयर पर एनम। तो कई बार मैं उनको कहता हूँ कि सर आप हमें दे दीजिए, हम आपको डबल प्रोडक्टिविटी करके दे देते हैं, जो आज आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो मिलेगा और सोसाइटी को या इंडस्ट्री को पूरा फ़ायदा ये हुआ कि 3 गुना लकड़ी उसी एरिया से प्रोड्यूस होकर आ रही है, तो आपकी रॉयल्टी बढ़ी या आपका जो इनकम है वो बढ़ा, हमारी रिक्वायरमेंट वुड की फुलफिल हुई और कोई कुछ लूज़ नहीं किया उसमें, क्योंकि हमारे क्लोन है, हमको पता है कि किस तरह से ग्रो होता है और मैं उसको ग्रो कर सकता हूँ और जो भी आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्या है कि फिर वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और बाकी चीज़ें आएंगी। तो क्या कुछ ऐसा तरीका कॉरपोरेशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ किया जा सकता है जिससे कि हम इसको कोलैबोरेट करके और एक अच्छा मैकेनिज्म बनाएं जिसमें कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी मीट हो, कॉरपोरेशन को ज़्यादा फ़ायदा हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो और कोई लूज़ ना करे उसमें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स सर। मुझे आपसे एक प्रश्न सबसे पहले ये करना है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं यूकलिप्टस के बारे में सर। देयर इज लॉट्स ऑफ इनसर्टिट्यूड एंड एम्बिग्विटी अबाउट यूकलिप्टस। तो मैं चाहूँगा कि जो स्टडी आपने की है वो अगर हम लोग आप आके लखनऊ में बता सकें, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जनरल जो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है उसी पर विश्वास करते हैं। तो इसकी ज़रूरत है कि हम डीमिस्टिफाई करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक डाटा से हम डीमिस्टिफाई करें। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लखनऊ आइए। आपने बहुत सारे नवीन और अभिनव प्रयोग के लिए न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, ज़रूर इस पर मुकेश कुमार जी हम लोग अपना एक बार होमवर्क कर लें इनसाइड एंड देन वी कैन ऑलवेज गो फॉर इट। और जो आप यूपी में कर रहे हैं, जो वेस्टर्न यूपी में खास करके, तो अभी हम लोगों ने टेरी से वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स से हम लोगों ने 5 मंडलों में लिंक कराया है और फार्मर्स के जो स्टॉक है, ग्रोइंग स्टॉक है, उसकी मैपिंग कर रहे हैं और कार्बन क्रेडिट से। तो जब एक्सरसाइज के दौरान हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्रेडिट से सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ मनी कार्बन क्रेडिट से मिल जा रहा है, तो ये भी एक तरीका है कि हम इसको बढ़ा सकें। और थर्ड एंड लास्ट की ये जो आपका वेस्टर्न यूपी लोकेटेड है, क्या आप कुछ
बुंदेलखंड में या ईस्ट में भी कुछ हमारे यूपी में कुछ इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हम लोग वुड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व करके ही आपको वुड उपलब्ध कराएं, तो एक अच्छा डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम काफ़ी इससे आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने अपने डाटा में दिखाया था कि 25,000 से वो 1 लाख रुपया हो गया, और वेस्टर्न यूपी की प्रॉस्पेरिटी का कारण भी मेरे ख्याल से ये रहा है, पॉपुलर रहा है। एंड तो ये एक बहुत अच्छा साइकिल है, कार्बन पॉजिटिव एक्टिविटी है, और इसको बहुत हम लोग जुड़ना चाहेंगे आईटीसी के साथ, सो दैट वी कैन वर्क समथिंग गुड फॉर यूपी। सर इनफैक्ट अगर आप अपना एड्रेस दे दें तो एक पिछले साल एक एनजीओ ने, बैंगलोर के एनजीओ ने एक स्टडी किया है, उसने रिपोर्ट भी दिया है, तो मैं उस पर भेजना चाहूँगा। और जब मुकेश कुमार जी, होता है तो वी विल बी इन टच। I think we'll collaborate with you, and we can come forward with this solution what ACSR has pointed out. सर क्योंकि रिसेंटली सर इनफैक्ट एक स्टडी हमने नहीं की थी, एक थर्ड पार्टी ने की है, आंध्रा तेलंगाना की जिन एरियाज में यूकलिप्टस ग्रो होता है, और पिछले 25 इयर्स का उन्होंने ग्राउंड वाटर रिकॉर्ड वो चेक करके और उसके बेसिस पे ये स्टडी लाई है। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक इसको हम लोग आ करके वहाँ एक्सप्लेन भी करने की पूरी कोशिश करेंगे इसमें। और दूसरा सर आपका जो पॉइंट है इनफैक्ट ये कार्बन क्रेडिट का, ये हम लोग भी काफ़ी एरियाज में अब शुरू कर रहे हैं, वो टेरी के साथ हम लोगों ने भी प्रोग्राम शुरू किया है। और तीसरा सर इनफैक्ट सर जहाँ भी एग्रो फॉरेस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, इनफैक्ट ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया का मैप जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु तक वो करिए, तो जहाँ भी एग्रो फॉरेस्ट्री का ग्रोथ हुआ है वहाँ 2-3 चीज़ें कॉमन रही हैं, और वो चीज़ें कॉमन रही हैं कि सिर्फ उन स्टेट गवर्नमेंट्स में ही ग्रोथ हुआ है जिन्होंने इसको ट्रांजिट और फेलिंग रिस्ट्रिक्शन से अलग किया है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है, उन एरियाज में ही ग्रोथ हुआ है जहाँ पे कि इंडस्ट्री का प्रेजेंस रहा है, जिन एरियाज में इंडस्ट्री, इसलिए सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी के लिए। इनफैक्ट आईटीसी खुद ही स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर हम कोई इंडस्ट्री ईस्टर्न यूपी, मैं खुद ही सर ईस्टर्न यूपी को बिलोंग करता हूँ, और कि क्योंकि उन एरियाज़ में पोटेंशियल बहुत है, मतलब अच्छा खासा रेनफॉल है, सॉइल फर्टाइल है, लेकिन सर ईस्टर्न यूपी और जो बिहार का भी कुछ पोर्शन ले लीजिए तो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है, और वो एक मेजर फैक्टर रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो वही थी, चाहे वो सहारनपुर में स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो बलिया में है। फैक्टर क्या रहा कि सहारनपुर में एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस ग्रो हुए और बलिया में नहीं ग्रो हुए, मेन रीजन उसका यही रहा कि वहाँ पे इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं थी। तीसरा सर जो एक मेन फैक्टर रहा है, जो कि जस्ट मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा इंटरप्राइजिंग थे वहाँ पे इसकी ग्रोथ सबसे फास्ट हुई, और ये सर 3-4 फैक्टर्स रहे हैं। तो आप सर ये बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर आईटीसी या नॉन आईटीसी कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को हम मोटिवेट कर सकें, क्योंकि सर अमेठी सुल्तानपुर तक विनियर पीलिंग यूनिट्स ऑलरेडी चली गई हैं, अगर उस साइड में आ जाती हैं तो आई थिंक सर फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे क्लोन्स हैं जो अब हम लोग ईस्टर्न यूपी में भी, क्योंकि एग्री बिजनेस डिवीजन का सर काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, और ये बड़ा अच्छा सजेशन रहेगा। और सर ये मैं आपको जो रिसर्च स्टडी है मैं आपको भेजना चाहूँगा, जब भी ज़रूरत होगी सर आकर के हम लोग इसको प्रेजेंट भी करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई, ख़ास तौर से जो क्लोन्स और मॉडल प्लांटेशन के बारे में जो बात की। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, जैसे हम अभी आप जिन स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, यूकलिप्टस हैं, पॉपुलर हैं या बैम्बू है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी वो बैम्बू को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने एक्ट से पहले जो रेस्ट्रिक्शंस थे उससे उसको हटा दिया है, तो अब वो जो टिम्बर की जो रेस्ट्रिक्शंस पहले हुआ करती थी दैट इज़ नो मोर नाउ, तो हमारे ख्याल से वो तो काफ़ी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। नहीं देखिए, बैम्बू मिशन को मैंने 4 साल हेड किया है, जी 2004 से 2008 तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी मिशन बना था। मेन प्रॉब्लम जो बैम्बू का है वो ये है कि जो स्पेसी हमें चाहिए, देखिए चाइना और वियतनाम के साथ एडवांटेज क्या था कि उनके पास स्पेसीज की डाइवर्सिटी लिमिटेड थी, उनके पास कुछ ही स्पेसीज थे, तो इंडस्ट्री बेस्ड स्पेसी उन्होंने प्रमोट कर दिया।
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर एक जोन का एक स्पेसिफिक, तो जब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में जब हम लोग मशीन का कटर डेवलप करते हैं, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये बैम्बूसा तुलदा पर तो चल जाएगा, बट ये कटर इस सेक्टर पर नहीं जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जो इंडस्ट्री को बैम्बू चाहिए, जब तक आप वो ग्रो नहीं करते, तब तक इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। मैं आपको स्टिक का क्या बारे में बताऊं, अगर आप बैम्बूसा बैम्बूस जो कांटा बास हम कहते हैं, अगर उससे आप स्टिक बनाएं तो उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब 100 टन बैम्बू से 7 टन स्टिक बनता है। और अगर मैं वही तुलदा से बनाता हूँ तो 100 टन से करीब 14-15 टन स्टिक बनता है। और ये जो 6-7 टन का मार्जिन है वो सफिशियंट है कि आज आईटीसी वियतनाम से 80% स्टिक लेके आके और अगर मंगलदीप में अगरबत्ती में लगा देती है, लेकिन वो कांटाबाज से स्टिक नहीं बनाना चाहिए। वो क्योंकि हर जगह देखिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस में हमें वो ज़्यादा वायबल पड़ता है, क्योंकि ये जो 8 टन का डिफरेंस है, मतलब 3 टन का भी अगर डिफरेंस हो तो हमें इंपोर्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए बैम्बू के बारे में बहुत एक हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इंडस्ट्री से पूछना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट के लिए बैम्बू हम जो ग्रो करते थे पेपर इंडस्ट्री के लिए ग्रो करते थे, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में बैम्बू के मॉइस्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो चिपिंग करते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्लाइसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मॉइस्चर का तो आपके फॉरेस्ट में बैम्बू निकालने में 13 दिन लग जाता है, तब तक उसका मॉइस्चर गायब हो जाता है और वो क्या प्रोसेस करेगा। तो बैम्बू के बारे में बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको जानती है, टैकल कर रही है, लेकिन वो एक सेपरेट डिस्कशन लगेगा, क्योंकि मैं 4 साल मैंने बैम्बू डील किया है तो मुझे उसकी डिटेल्स पता है। इसी से एक छोटा सा सवाल एक और है हमारा, जैसे हमारे यहाँ जो मोस्टली बैम्बू ग्रो कर रहे हैं वो सिम्पोडियल बैम्बू ग्रो कर रहे हैं। अगर यही इसी की जो दूसरी मोनोपोडियल स्पीसीज हैं, अगर उन मोनोपोडियल स्पीसीज की लोकेलिटी अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें जिस जगह पे मोनोपोडियल ग्रो कर सकता है, तो शायद वो जो जैसे बैम्बू की जनरल प्रॉब्लम होती है क्लम्पिंग की, नहीं, मोनोपोडियल स्पेसी टेम्परेट बैम्बू स्पेसी है। हमारे यहाँ सिर्फ अरुणाचल में और लद्दाख में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वो ग्रो हो सकता है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ग्रो करें तो वो नहीं ग्रो हो सकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चाहिए उसके लिए, जैसे आप पॉपुलर ले लीजिए, पॉपुलर सिर्फ अमृतसर से ले करके और यहाँ वेस्टर्न यूपी तक ग्रो होता है। उसको हम उसके बियॉन्ड, मतलब आप ईस्टर्न यूपी भी कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हम साउथ में नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि क्लाइमेट नहीं सूट करता है। मोनोपोडियल स्पेसीज इसीलिए इंडिया के लिए सूट है, लेकिन सिम्पोडियल स्पेसीज में भी स्पेसीज हैं जो आपको अच्छी यील्ड दे सकती हैं, लेकिन रिसोर्स नहीं है। मतलब हमें मान लीजिए अगर एक अगरबत्ती प्लांट के लिए 100 टन डेली का चाहिए और अगर आप सिर्फ मुझे 5 टन देते हैं तो मेरा प्लांट तो वो बैठा रहेगा, मतलब, और उसके नीचे वायबल नहीं है। अगर मैं 100 टन से कम पे प्लांट लगाऊं तो वो मेरे लिए वायबल नहीं है। ये इशू आज आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेशन को भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इवन एग्रो फॉरेस्ट्री आईटीसी भी काम करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा इसमें स्पेसिफिक इंटरवेंशन करने की जरूरत है। जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आपने क्लोन्स की बात की, आईटीसी ने भी काफ़ी क्लोन्स डेवलप किए हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी सर कई लोकल क्लोन्स डेवलप हुए हैं। अभी हो क्या रहा है कि जो हम लोग फॉरेस्ट्री वर्किंग प्लान की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है जो 500 मीटर से 1000 मीटर वाला तराई और भाबर रीजन है, मोस्टली उत्तराखंड में, जैसे हमारा रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून है, तो वहाँ पे जब भी हम प्लांटेशंस कर रहे हैं फॉरेस्ट में, बेसिकली मिसलिनियस प्लांटेशंस कर रहे हैं, मिक्स स्पीशीज़ लगा रहे हैं, प्लांटेशन विद सीडिंग कर रहे हैं, तो वो जनरली फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लेकिन जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री पहले हम लोग करते थे वो धीरे धीरे जो है उसका क्वांटम बहुत कम होता जा रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द की थिंग एक्चुअली विच नाउ द लोकल फार्मर्स हैव टू ग्रो एक्चुअली दिस स्पीशीज़ लाइक यूकेलिप्टस एंड पॉपुलर्स। लेकिन प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की है। तो जैसे आपने बताया कि इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी कर दी, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो मेरा कहना ये है कि उनको फार्मर्स को किस प्रकार से उनको एसओपी देना और उनको इस तरह के क्लोन्स देना और ये उनको बीच बीच में सेंसिटाइज करना या इंश्योर करना कि भाई ये एसओपी है, इस हिसाब से आप ये क्लोन लगाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। और अभी जो नई वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की MOEF&CC की गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि कोई भी वुड बेस्ड इंडस्ट्री अगर स्थापित करनी है तो इट हैज़ टू बी लिंक्ड विद द रॉ मटेरियल अवेलेबल विद दैट।
तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री में, और ये क्लोन्स वाले जो डेवलप क्लोन्स किए गए हैं इन्हीं को हम बढ़ावा दें। नहीं, बट व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन और योर सजेशन ओनली? माई सजेशन इज कि जैसे जो हमने क्लोन्स डेवलप किए हैं, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ एक्चुअली ITC can help the Uttarakhand Forest Department or the corporation in regularly sensitizing the local farmers to grow these clones on their farmlands, and also it can help the department and or the corporation in setting up of some processing centers. नहीं, देखिए उत्तराखंड में रुद्रपुर में ही हमारा विमको सीडलिंग का ऑफिस है और क्लोन्स वहाँ पे टेस्ट हो रही हैं और फार्मर्स को बताया भी जा रहा है। तो जो फार्मर्स उनको फॉलो करते हैं ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। कई बार होता क्या है कि हमने फार्मर को बताया कि गन्ने की खेत में ये स्पेसिंग होनी चाहिए और इस तरह से उसको लगाना है, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। अदरवाइज़ ITC का काफ़ी काम, इनफैक्ट विमको सीडलिंग की जो उत्पत्ति हुई थी वो रुद्रपुर में ही हुई थी, वो ऑलरेडी चल रहा है। अब वो प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि रुद्रपुर से लेके अमृतसर तक ऑलमोस्ट करीब 90 स्टाफ हैं ITC के जो एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। तो अगर कहीं आप बता देते हैं कि इस फार्मर को पता नहीं था तो सर्टेनली वी विल टेक एक्शन, बट वो हमारा काम है, वो हमारा बिजनेस है। क्योंकि एक प्राइवेट नर्सरी जो 15 रुपये का सैपलिंग बेचता है, हमारा सैपलिंग 35 रुपये का बिकता है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी की वजह से बिकता है। तो वो काम हम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फॉरेस्ट में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जैसे फॉरेस्ट में क्या है, जो आपने बताया कि डिफरेंट वॉइस डिसीडुअल फॉरेस्ट है, तो उन फॉरेस्ट में वो क्लोन्स टेस्ट नहीं हुए हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर का हम नहीं बता सकते, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में वो क्लोन्स टेस्ट हुए हैं। और कई बार जो गलती क्या हो जाती है कि जब हम सॉइल टेस्ट करके हम क्लोन देते हैं, अगर फार्मर अपने से खरीद लेता है बिना सॉइल टेस्ट किए हुए, तो कई बार उसको घाटा होता है उसमें। तो वो थोड़ा सेंसिटाइज करने हम लोग भी करते हैं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या कॉरपोरेशन से आप भी सेंसिटाइज करते हैं कि जब भी क्लोन आप सेलेक्ट करें, आप विमको सीडलिंग से पूछ लें या सॉइल टेस्ट होने के बाद ही आप क्लोन सेलेक्ट करें, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब इस लास्ट सेशन के समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज सारे दिन हमारे बीच मुकेश बहादुर सिंह जी हमारे बीच रहे हैं और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं हर चीज़ों में। उनका इस कार्यक्रम को आयोजन कराने में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आएँ और शेयर करें, प्लीज़। धन्यवाद के सिंह साहब। सुबह से बड़े इन्फॉर्मेटिव सेशंस रहे हैं इनॉग्रल से लेकर करके, और ये थर्ड सेशन है। सुनील पांडे साहब ने इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव पे बोला, अक्रॉस स्टेट क्या प्रैक्टिसेस हैं उस पर हम लोगों ने सुना। संजय शुक्ला साहब ने और पुष्कर सिंह साहब ने MP स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट की बात की, और UP स्टेट के भी एक्सपर्टीज़ इस पैनल में है। मैं अपना रोल जो है वो एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पाता हूँ, क्योंकि सुबह से जितनी बातें हमने सुनी, तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, एक कॉरपोरेशन अगर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो चूंकि बिजनेस रूल में आपका काम मार्केटिंग करना या आपका काम सेल्स करना नहीं होता है, वहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हर स्टेट में रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कई इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर्स होते हैं और हर तरह के इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर्स हैं। इवन ITC भी हमारा मेंबर है, इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और बहुत सारे ऐसे जो फार्मर के प्रोड्यूस को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, वैसे हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मेंबर्स होते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आज समय की डिमांड है। कॉरपोरेशन, अगर सारे कॉरपोरेशन अगर डाइवर्सिफिकेशन पे या इनोवेटिव पाथवेज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मूल बिजनेस अभी तक था कॉरपोरेशन का या बिजनेस रूल था, वहाँ से एक नए रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उस प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने में भी मेरी भूमिका थी। मैं उस पूरे उस प्रोग्राम का कन्वीनर था। तो अभी मनोज सिंह सर के निर्देशन में जो ये आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, खुद सर बहुत विजनरी है, उनको पता है कि डिपार्टमेंट को किस तरफ एलिवेट करना है, कैसे एस्केलेट करना है। लेकिन जो रोल हम लोगों का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने संजय शुक्ला सर की बात भी सुनी, ब्रांडिंग पर, मार्केटिंग पर, सेल्स पर, कैसे प्रोड्यूस को कलेक्ट करना है और कैसे मार्केटिंग करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, और वैल्यू चेन पर मतलब बातें हम अभी तक सुन रहे थे।
मार्केटिंग का करने का काम कभी भी गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो काम हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट का है, एक्सपर्टीज़ का है। तो मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में अपनी बात इस तरीके से रखना चाहता हूँ। अभी नाबार्ड के साथ हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, तो यूपी के जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको लेकर करके बहुत सारे उनको टेक्निकल असिस्टेंस के बारे में बताना। तो नाबार्ड ने अभी एक योजना अपने यहाँ चलाई, महाराष्ट्र में उन्होंने किया, उन्होंने एग्री एक्सपोर्ट फेलिसिटेशन सेंटर उन्होंने महाराष्ट्र के साथ में खोला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन को भी एक ऐसा फेलिसिटेशन सेंटर खोलना चाहिए जो शुड बी रन बाय एनी ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मे बी एनी एंटिटी। उसका काम होता है कि लिंक क्रिएट करना बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। उसमें प्रोड्यूसर को, क्योंकि सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो प्रोड्यूसर है उसको लिंकेज मिले, उसका जो प्रोड्यूस है वो उसको सही प्राइस मिले, इसीलिए एमएसपी की बात हो रही है। तो उसको सही प्राइस मिले, यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रीज नहीं कर सके। उसके लिए आपको चाहिए, जो ब्रिज क्रिएट करता है वो हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते हैं। तो बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर एक लिंक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ओडीओपी जब लॉन्च हुआ तो ओडीओपी को भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर लिंकेज क्रिएट किया। लिंकेज जो है वो बहुत सारे फेलिसिटेशन एजेंसीज ने लिंकेज क्रिएट किया। अब जो उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें अभी मुझे लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ब्लैक राइस को भी जोड़ दिया गया है, काला नमक चावल को। और शायद जितनी मेरी जानकारी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एमएफपी में भी शायद ब्लैक राइस को ऐड किया गया, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट शायद ऐड किया गया। तो लिंकेज क्रिएट करने का जो काम है वो एक्सपर्टीज़ को करना चाहिए। और फेलिसिटेशन सेंटर में जो फार्मर्स हैं, जो वन विभाग के जो फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी है, वो इजराइल का उसका प्रमोटर है, बट यहाँ से काला तिल से लेकर के बहुत सारा प्रोड्यूस है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि जो हम लोग जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो लिंक क्रिएट करें, ताकि जो फार्मर है आपका, चाहे योजनाएं कोई भी हो, वंदन योजना हो या और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है, हर स्टेट में अलग अलग योजनाएं, उनको सही प्राइसिंग अगर देना है तो उनको लिंकेज क्रिएट कर करके हम लोगों को देना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं एक ब्रिज की तरीके से बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड इंडस्ट्री। क्योंकि जब तक उसका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट, अभी संजय शुक्ला साहब को हमने सुना कि गवर्नमेंट उनका प्रोड्यूस खरीद रही है और उसको मार्केट कर रही है। गवर्नमेंट कितना भी करेगी, बट आपका सर एक लिमिट है करने का। लेकिन जब इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, मनोज सिंह साहब ने अभी आईटीसी को इनवाइट किया ईस्टर्न यूपी के लिए। ईस्टर्न यूपी में भी इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो आपके वन विभाग से भी जुड़े हुए, आपके प्रोड्यूस को भी लेते हैं। ट्राइबल के भी हम लोग बहुत सारे, मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ट्राइबल की है, लैंग्वेज प्राइमर उनके लिए डेवलप किया है। तो ट्राइबल्स का जो प्रोड्यूस है उसको सही प्रॉपर तरीके से लिंकेज देने का काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। बड़े इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर्स हैं, हम लोग, मनोज सिंह साहब आप इनवाइट करेंगे तो एक ऐसे ग्रुप को लेकर करके आएंगे जो प्रोड्यूस के बारे में उनकी प्रोड्यूस को सही प्राइसिंग के साथ, मे भी हो सकता है एमएसपी से भी ज़्यादा उनको प्राइस मिले, तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, बहुत सारी कंसल्टिंग एजेंसीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो नाबार्ड को भी हम लोगों ने यही प्रपोजल दिया कि उनके प्रोड्यूस को किस तरीके से उनको सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी सर आप भी कह रहे थे और पुष्कर सिंह साहब भी कह रहे थे कि सर्टिफिकेशन की जानकारी उनको कैसे दी जाए। तो ये जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो देने का काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मुकेश बहादुर सिंह साहब, चेयरमैन। अभी आप सुन रहे थे चेयरमैन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ डेस्क के चेयरमैन की। ये जो बातें भी आपने कही, एक ढंग से अब आज की तारीख पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक कनेक्टिंग लिंक बनता चला जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ लेके, पीपल को साथ लेके, ट्राइबल्स को साथ लेके, फार्मर्स को साथ लेके, ये एक बहुत ही रिसेंट और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और आगे आने वाले समय में खासतौर से हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे कि लगातार हमारे पॉपुलेशन हर साल 5 करोड़ 7 करोड़ पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज़ अगर आगे आती है और इन फील्ड में खास तौर से लिमिटेड हमारे रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं, अगर हम रिसोर्स को नहीं बढ़ाते हैं, साथ में जो रिसोर्स जनरेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको अगर दूसरे लोग हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स, दिस काइंड ऑफ थॉट।
Now I would request our chairman of this session, sir, to please. Okay. I'll request co-chairman sir first. Okay, please. I have just intruded because वो चेयरमैन साहब को बोलना था, लेकिन सर इतना अच्छा सेशन था ये, दिस वाज जैसे स्टार्ट किया हम लोगों ने, आफ्टर लास्ट सेशन था तो ये था कि लास्ट में है, शायद इंटरेस्ट ने तो जल्दी जल्दी ख़त्म किया, बट इट वाज बेस्ट सेशन सर आई फील। और जैसा कि इसका टॉपिक था सर, MFP कलेक्शन, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, बहुत चीज़ें हमको टेक अवे मिल रही हैं इस सेशन के बाद। वन निगम का जो एक ऑब्जेक्टिव था इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का कि डाइवर्सिफिकेशन में हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू हैव मैनी थिंग्स टू डू इन कमिंग टाइम। दिस सेशन वाज स्टार्टेड बाय संजय शुक्ला जी फ्रॉम छत्तीसगढ़ सर, और इन्होंने बहुत अच्छा बताया सर कि किस तरह से इन्होंने मार्केटिंग में डेवलप किया और अमेज़ॉन और सबसे कॉन्टैक्ट करके दे मेड द बिजनेस सो प्रॉफिटेबल, लोकल लोगों कम्युनिटी को पैसा मिल रहा है, इनके प्रोडक्ट्स बाहर बेचे जा रहे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगल से ले रहा है, और इन्होंने छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से प्रोडक्ट ब्रांड किया एंड दे हैव गॉन वेरी हाई। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि हाँ हमारा भी स्टेट इसमें आगे बढ़ सकता है। वी हैव गॉट लॉट ऑफ MFP इन बुंदेलखंड एरियाज, विंध एरियाज, इनको कलेक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, दे हैव गॉट प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसमें प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ब्रांड नेम दिया एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जैसा MP के सर पुष्कर सर बता रहे थे कि इनके इको टूरिज्म के एक्साइज को कैंपा फंड करता था, कैंपा फंड करना बंद कर दिया, इन्होंने बोला मत दो कैंपा, हम दे देंगे पैसा। तो दे आर इस लेवल पे आ चुके हैं सर कि दे कैन फंड ऑल द स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम को भी फंड कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं सर। इसके बाद सर प्रकृति श्रीवास्तव जी, इन्होंने सर KFDC में शी जस्ट एक्सप्लेन कि किस तरह से सिक इंडस्ट्री हो गई थी पूरी, इट वॉज इन द लॉस ऑफ 6.5 crores एंड विथ हर डेडिकेशन एंड पैशन शी हैज़ बीन अ ग्रेट वाइल्ड लाइफर सर, और जब जब इन्होंने काम किया तो उसी पैशन के साथ इन्होंने इंडस्ट्री को भी केयर किया एंड सिक इंडस्ट्री केम इनटू ए हेल्दी इंडस्ट्री विद अ प्रॉफिट ऑफ 6.35 crores इन जस्ट 1 year। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट टेकिंग इंडस्ट्री इन द प्रॉफिटेबल साइड। पुष्कर सर ने MP के बारे में बताया, वहाँ भी इसी तरह से काम हुआ है सर। इनका हर्बल, इनका भी विंध हर्बल नाम का ब्रांड रजिस्टर्ड है और ये लोग काफ़ी मार्केटिंग में और दे आर ऑल्सो क्वाइट अर्निंग गुड मनी एंड यूज शेयरिंग विद द पब्लिक ऑल्सो। एक बहुत बड़ा मेला इनका लगता है जिसमें बोनस शेयर करते हैं 75% का, जिसमें भारत सरकार के लोग और मतलब मंत्री और एक VIP प्रोग्राम होता है, बहुत ही अवेटेड प्रोग्राम। तो इससे लोकल कम्युनिटी भी सर जुड़ रही है और इसको हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। दिस ऑल्सो ए टेक अवे फ्रॉम दिस वर्कशॉप एंड अल्टीमेटली सुनील पांडे जी इन्होंने सजेस्ट भी किया कि अगर हम वो चीज़ ग्रो करें जिसका डिमांड है बाजार में, जिसको ये टेकअप कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड सजेशन एंड इन टाइम्स टू कम अगर हम प्लांटेशन कर भी रहे हैं, अगर आपके कोई सजेशन संजीस एरिया में बैम्बू मिशन चल रहा है कई स्टेट्स में, वी ऑल्सो ग्रो बैम्बू, बट इफ़ वी कैन हैव स्पेशल स्पीशी इसी को लगाया जाए तो वी शुड गो देयर और उसका हमको फ़ायदा भी मिल सकता है आगे इसमें। और इन द फाइनल शेप आई शुड थैंक टू मुकेश बहादुर जी दैट ही हैज़ come forward to form a bridge between the department and the forest corporation and the industries. I hope we are going to get benefited from this workshop. Thank you very much, sir. Thank you, Co-Chairperson, sir. Now I request Honorable Chairperson, sir, to please address and take the questions if participants have. Please. थैंक यू कार्तिक। आई थिंक सवेरे हमारा इनॉग्रल सेशन था, हमारे चीफ गेस्ट थे, तो वो तो अपने आप में एक इवेंट होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तीन जो टेक्निकल सेशन है उसमें जो लास्ट सेशन हम लोगों का ये वाला रहा वो मोस्ट डायनेमिक एंड क्वाइट एंटरटेनिंग एज वेल एज टेक अवे। थैंक यू संजय, आपने मेरा काम इस सेशन का तो आपने मुझसे मेरा काम कर ही दिया है, लेकिन
यहीं से मिलेगा। मैं देख रहा था कि सवेरे से हमारा इनॉग्रल सेशन के बाद सेशन 1 काफ़ी अच्छा रहा। हमारे उत्तरांचल के धनंजय मोहन और हमारे गैरोला साहब ने सर्टिफिकेशन, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे और हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम जो पूरे इंडिया से जो अलग अलग स्टेट से हमारे एमडीज़ आए हुए हैं, हमारे एमडीज़ आए हुए हैं और लोग भी आए हुए हैं, वो इससे टेक अवे सबके लिए होगा। सेकंड सेशन इको टूरिज्म का भी काफ़ी डायनेमिक रहा। हम लोगों को जो डिफरेंट आयाम थे वो देखने को मिले, लिमिटेशंस भी देखी। उसके बाद थर्ड सेशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे IMFP काफ़ी बड़ा काम हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने किया, केरला ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद मुझे इसमें इस सेशन में सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि यूपी में एटलीस्ट इंडस्ट्रियल पार्टनर जो हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम लोग का जो एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्लस जो हम लोगों का गोल है क्लाइमेट चेंज में, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉरेस्ट्री का जो हमारा एरिया है वो लिमिटेड है, वी कांट गो मच मोर, बट अगर इंडस्ट्रियल पार्टनर लाइक ITC and Indo-American, all they come out for agroforestry plantations. I mean, outside the forest, in the private areas, they can come out with a economical model so that our requirement of industries will be fulfilled as well as the earning of local farmers will be improved. So we will solve our local problems also and industrial problem also. So मुझे बड़ा खुशी है कि ये इंडस्ट्रीज हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम लोग जल्दी ही इंडस्ट्रीज एज वेल एज यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की मीट को आगे करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़कर बोथ वे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रीज एंड लोकल फार्मर्स. दैट्स आवर intention. Now I'll request our ACS sir, श्री मनोज कुमार जी, मनोज सिंह जी, जो हमें अपने जो एक्सपीरियंस इस कॉन्फ्रेंस से हुए हैं या उनकी जो टेक अवे है हमारे लिए, उनकी जो सोच है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़. So, it has been a long day. The purpose of this one-day conference was how to rejuvenate, re-cherition, reactivate Forest Corporation of Uttar Pradesh, and how to learn what different states are doing, different forest corporations are doing. And at the end of the day, the purpose of the conference, purpose of rather any conference, is congregation of a common interest group. We are all common interest groups on a common concern, and that concern has been fully deliberated. Lots of ideas, exchange of ideas have come. Lots of innovations has been done in different states, and a type of a caring and sharing of things had taken place today, and this is what we wanted to achieve, and it has been achieved in letter and spirit. What we need
to make a roadmap. And there is a term in sociology, it's called artificial stupidity. And this Kitrim Murtha. And this term indicates that we have a capability, we have the capacity to do, but in bureaucracy, we are ignorant about these things. There are lots of low-hanging fruits, and because of not focusing on that, we are indulging into artificial stupidity and not taking a right path. What the conference today has done is shown a right path. It has opened our eyes, and definitely we all will benefit from it. So I express my gratitude, thanks to all the participants. They all are experts in their own field, and lots of new ideas have come. And the bottom line, any conference should end with a theory building. And today's theory building, what I perceive is that पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ लगाना है, किसान को बचाना है तो पेड़ लगाना है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को बचाना है तो पेड़ लगाना है, और सब में एक ही कॉमन फैक्टर है पेड़ लगाना. And how we should go about it was in the last session. Agroforestry is the role model for us, and let us work together, let us make it reality and show that this is the pathway for progress of all the states of India. So thank you very much, and I hope the accommodation and other things were up to the mark. If there was some slippages, please ignore that. We will try to improvise on this, and we also foresee many such conferences coming up on different issues in UP. Thank you. And before we take a moment to express our gratitude to our respected panelists on the stage, ladies and gentlemen, I humbly request Shri Manish Mittal ji, respected RM, UP Forest Corporation, to please join us to do the honor and express our gratitude to our respected panelists. In this league, we present a humble gesture to Shri Mukesh Singh ji, Chairman IACC's Lucknow desk. आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र के हमारे सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करते हुए श्री संजय शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, श्रीमती प्रकृति श्रीवास्तव जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, श्री पुष्कर सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, श्री सुनील पांडे जी, वाइस प्रेसिडेंट ITC लिमिटेड Bangalore. And we'll also take a moment to express our gratitude to our respected co-chairman for the session, Shri Sanjay Srivastav ji, CEO, Campa. Shri Sanjay Srivastav ji, who honored this technical session being the co-chairman. And our respected moderator for this technical session, Shri KK Singh ji,
GM, UP Forest Corporation, Bareilly. And ladies and gentlemen, for capturing this moment with a group photograph, I humbly request our dignitaries to please join us, and we'll spare one moment to capture this moment for posterity in our hearts. इस लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में कैद करने के लिए एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ मैं हमारे सभी सम्मानित दिग्गजों से अनुरोध करती हूं कि वे इस ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बने। तो जैसे कि सभी ने कहा कि ये सबसे मजबूत तकनीकी सत्र रहा है, तो सबसे मजबूत तालियां भी बजा दीजिए। Once again, thank you so much, gentlemen. Thank you so much, ma'am, for doing the honor. Thank you for joining us. And with this, ladies and gentlemen, so I humbly invite Shri Ram Kumar ji, GM, Tendupatta, UP Forest Corporation, to please join us and provide a vote of thanks to this wonderful audience out here. ये कार्यशाला अब अपने अंतिम मुकाम की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यों के विविधीकरण के संबंध में आयोजित आज की इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे माननीय वन मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारा उत्साहवर्धन किया और अपने विचारों से, अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित किया। आज के ये कार्यक्रम में हमारे वन राज्य मंत्री श्री केपी मलिक साहब की गरिमामयी उपस्थिति से हम लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। आज के उद्घाटन सत्र में हम लोगों के बीच उपस्थित रहे महानिदेशक वन श्री सीपी गोयल साहब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया और अपने बहुमूल्य सुझाव हम लोगों को दिए। इसके अलावा उद्घाटन सत्र में पधारे महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। पूरे देश से हमारे बहुत से अनुभवी अधिकारी, बहुत भिज्ञ अधिकारियों ने आज इस कार्यशाला में पैनलिस्ट के रूप में प्रतिभाग किया है। हमारे सामने धनंजय मोहन सर बैठे हुए हैं, गैरोला सर बैठे हुए हैं, संजय शुक्ला साहब बैठे हुए हैं और जितने भी इस तरह के हमारे सभी अतिथियों ने, सभी वक्ताओं ने जो इस कार्यशाला में प्रतिभाग करके उनके यहाँ जो विभिन्न आयाम हैं उत्तर प्रदेश वन निगम के, उससे संबंधित
जो अपने अनुभव हैं, अपने बहुमूल्य अनुभवों को हम लोगों के साथ में उन्होंने साझा किया। आप सब लोगों के लिए के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज एक हम लोगों ने शुरुआत की है, एक अभिनव प्रयास करने का हम लोगों ने आज एक शुभारंभ किया है और आगे आने वाले समय में इसी तरह से आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा। और जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यशाला का हम लोगों ने आयोजन किया, मैं समझता हूँ उस कार्यशाला के आयोजन में हम उस उद्देश्य को पाने में हम लोग सफल होंगे। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में पधारी हमारी हॉब मैडम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे अपर मुख्य सचिव महोदय के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निरंतर हम लोगों को न केवल प्रेरणा दी इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, बल्कि सदैव ही उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे एमडी साहब श्री मुकेश कुमार साहब बहुत कम समय में इस योजना, इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जो चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने तैयारी की, आपने निरंतर ही हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं सर आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में श्री मुकेश सिंह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनकी पूरी टीम के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निरंतर ही उन्होंने पूरा प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम में जो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी थी, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए मेरठ जोन के मुख्य वन संरक्षक श्री एन.के. जानू जी, इनके सभी डीएफओज के प्रति भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज के कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पे शिरकत की, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में हमारी वन निगम की जो कोर टीम, प्रभाकर सर, हमारे एमडी चौधरी सर, मनीष मित्तल, के सिंह साहब, सिन्हा जी, जितने भी अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी में लगे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग जुड़े रहे हैं, मैं उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। With this, thank you so much everyone for joining us today. Have a wonderful evening. Thank you.